सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने की और फुल कोर्ट इजलास ने जो है वो मुतअद्दिद चीज़ों की जो है वो इजाज़त जो है वो दे दी और मुकाती एजेंडे पर जो है फुल कोर्ट इजलास हुआ। अब इजलास जो है वो खत्म हो चुका है रूम में। उसके बाद अब 11:30 बजे जो है वो फुल कोर्ट समाअत होगी और ये समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर होगी और ये कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है फुल कोर्ट समाअत होगी। और इस सवाल से गुज़िश्ता रोज ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो बाकायदा काज लिस्ट जारी कर दी गई थी और तमाम जो अफ्रीकन है उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। और अब ये तवक्को की जा रही है कि अब जब फुल कोर्ट समाअत होगी तो ये फुल कोर्ट फैसला करके ही जो है वो उठेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अमेरिका रवाना हो रहे हैं। आज शाम को अमेरिका चले जाएंगे। उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी जो है वो सिर्फ आज के लिए ही मुयस्सर है, उन्होंने भी अमेरिका जाना है। तो इसी वजह से अब तवक्को यही की जा रही है कि अब जब फुल कोर्ट समाअत होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला करके ही जो है वो उठेगी, क्योंकि कल जो है वो एक मौजूद जज भी अवेलेबल नहीं होंगे और अटॉर्नी जनरल भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसी वजह से इम्कान यही दायर किया जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट जो है वो इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो कर लेगी। जी ठीक है। तैयब बलूच ये भी बताएगा कि इससे कबल ये बताया गया था कि 9:30 बजे समाअत का आगाज़ होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब तकरीबन 11:30 बजे का वक्त दे दिया गया है। तो इस वक्त जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं और ऐसा लगता है कि अब 11:30 बजे एग्जैक्ट केस की समाअत का आगाज़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट में तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और 11:30 बजे के लिए जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी जो इंतजाम है पीटीवी की टेक्निकल टीम की जानिब से वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन 9:30 बजे जो है वो फुल कोर्ट इजलास जो है वो शुरू हुआ था कमेटी रूम नंबर 1 में। 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है वो फुल कोर्ट इजलास की कार्रवाई चलती रही। जो कमेटी रूम नंबर 1 में थी जिसमें मीडिया जो है वो अलाउ नहीं था, वो जजेस चैम्बर के साथ जो कमेटी रूम बना हुआ है वहाँ पे वो इजलास जो है वो चलता रहा। अब उसके बाद जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में 11:30 बजे फुल कोर्ट जो है वो समाअत होगी और उसके हवाले से भी तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी और तैयब बलूच, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अहाते की बात करें तो वहाँ पर क्या गहमा गहमी है इस केस की समाअत के सिलसिले में, कौन कौन पहुँचा है वहाँ पर? जी इस हवाले से चूंकि आज काजी फैज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पहला दिन है तो वकला की भी और इसके साथ साथ दीगर लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है और मीडिया के लोग भी मौजूद है। अब ये खबरें भी मिलना शुरू हो गई हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की फैमिली भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तो अब 11:30 बजे जब समाअत होगी तो फैमिली भी शायद कोर्ट रूम में जो है वो मौजूद होगी ताकि लाइव कार्रवाई को भी देखा जा सके और अपने सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा का चूंकि आज पहला दिन है तो एक आम सी बात है फैमिली के जो मेंबरान हैं वो इस तारीखी लम्हे को जो है वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस की फैमिली जो है वो पहुंच चुकी है 11:30 बजे जब सारे मनाजिर को जो है वो अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो वकला है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है और सहाफियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। चूंकि ये एक आज नई तारीख रकम हो रही है कि जस्टिस काजी फैज ईसा अब चीफ जस्टिस बन के उन्होंने हलफ भी ले लिया और अब वो अपनी जिंदगी का जो पहला केस है बतौर चीफ जस्टिस आज वो उसकी समाअत करेंगे। तो इस चीज को विटनेस करने के लिए लोगों की काफी तादाद जो है वो मौजूद है। ठीक है, तकरीबन 11:30 बजे समाअत का आगाज होगा। तैयब बलूच, इस बारे में मजीद भी आपसे जानते रहेंगे, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज की जाएं ये इस्तदा की गई है। पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं। हुकूमत की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि इन दरखास्तों को खारिज किया जाए। अब से कुछ देर के बाद आगाज़ होगा इस केस का और उससे कबल हम ये देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज की जाएं ये इस्तदा जवाब में की गई है और पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं। ये हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अगर पहले की बात की जाए तो जब इस केस का आगाज़ हुआ था तो को मुअत्तल कर दिया गया था इस कानून को और ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया था और उसके बाद कोई भी समाअत नहीं हुई है।
ताहम आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये जो समाअत है इसका आगाज़ कुछ देर के बाद होगा। और इस समाअत से कबल हम ये देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है और प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज की जाएँ, ये इस्तदा हुकूमत की जानिब से की गई है। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मज़ीद उनसे जानेंगे। जी नीलम, बताइएगा क्या इस्तदा की गई है दरखास्त में? नीलम, आगाह कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो इस्तदा की गई है, दरखास्त जमा कराई गई है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवाया है। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज की जाएँ, ये इस्तदा की गई है। और हुकूमत ने ये भी इस्तदा की है कि पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं, इन्हें खारिज किया जाए। इस्लामाबाद से आपको खबर देंगे, फ़ोन बैंकिंग और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने वजारत दाखिला PTA के तहरीरी जवाब को मुस्तरद कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार दरखास्तों पर समाअत करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, फ़ोन बगिंग और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने वजारत दाखिला PTA के तहरीरी जवाब को मुस्तरद कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार दरखास्त समाअत कर रहे हैं। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन दरखास्तों पर समाअत हुई है। फ़ोन बगिंग और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के हवाले से अदालत ने वजारत दाखिला PTA के तहरीरी जवाब को मुस्तरद कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार दरखास्तों पर समाअत कर रहे हैं। और अभी आपको ये खबर दें कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत का केस है। IG इस्लामाबाद की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। SP इस्लामाबाद को IG को पेश ना करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। मुत्तल्लिका SP को IG को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुपरिटेंडेंट अटक जेल के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। सुपरिटेंडेंट को सेशन अदालत अटक के पास पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि अदालती हुक्म के बावजूद IG इस्लामाबाद अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने IG इस्लामाबाद की जानिब से तहरीरी जवाब को भी मुस्तरद कर दिया है। IG पहले अदालत में पेश हों फिर जवाब देखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क किए गए हैं। अदालत को क्यों कमज़ोर समझा जा रहा है, अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं और अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया है। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस के हवाले से आपको पेशरफ से आगे IG इस्लामाबाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। SP इस्लामाबाद को IG को पेश ना करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। मुत्तल्लिका SP को IG को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है और सुपरिटेंडेंट अटक जेल के काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। सुपरिटेंडेंट को सेशन अदालत अटक के पास पेश होने की हिदायत भी की गई है। अदालती हुक्म के बावजूद IG इस्लामाबाद अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद की गिरफ्तारी। शेख रशीद के वकला ने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर कर दी है। IG पंजाब CPO SSP ऑपरेशंस को फरीक बनाया गया है और शेख रशीद को भतीजे शेख शाकिर शेख इमरान समेत गिरफ्तार किया गया है। ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है। शेख रशीद पर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया था और इस सिलसिले में जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। शेख रशीद के वकला ने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर कर दी है। IG पंजाब CPO SSP ऑपरेशंस को फरीक बनाया गया है। शेख रशीद को शेख शाकिर और शेख इमरान समेत गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद पर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद की गिरफ्तारी अमल में आई थी और आज ये दरख्वास्त दायर की गई है। सानिहा बल्दिया टाउन के मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी का केस है। तलबी के बावजूद सेक्रेटरी दाखिला IG और दीगर पेश ना हुए। पेश होने वाले अफसरान अदालत को मुनासिब मामलत फराम ना कर सके। अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानेंगे। जी बताइएगा क्या कार्रवाई हुई है अब्दुल हसीब? जी देखिए, सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाने के मामला था, जिस पर अदालत की तलबी के बावजूद वफाकी सेक्रेटरी दाखिला IG और सेक्रेटरी दाखिला सिंध अदालत में पेश नहीं हुए।
जो पेश अफसरान हुए उसमें DIG साउथ के सेक्शन अफसर वजारत दाखिला और फोकल पर्सन होम डिपार्टमेंट अदालत में पेश हुए। तहम दौरान समाज जो है वो अदालत की मुआवनत ना करने पर जो है वो अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने सेक्रेटरी के रवैये पर भी बरहमी का इज़हार किया और चीफ सेक्रेटरी सिंध और वफाकी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को आइंदा समाज पर तलब किया है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क किए कि फैक्ट्री में 259 शहरी जहाँ बहक हो गए, किसी को एहसास ही नहीं। वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने बताया कि वजारत दाखिला ने हमाद की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद अलर्ट जारी किए। आखिरी अलर्ट जो है वो 2017 में जारी किया था, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क किए कि इसका मतलब ये है कि जनवरी 2022 में इसकी मुद्दत खत्म हो गई है। वजारत दाखिला की कारकर्दगी बहुत नाकिस बल्कि गलत के मुर्तकिब हुए हैं। इतने अफराद की हलाकत के मामले कर इस मुआयरे के मुताबिक जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, इस बारे में अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कराची से आपको खबर देंगे, सुपरमार्केट पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। वाइट करोला गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 रुकनी गिरफ्तार गैंग में खातून भी शामिल हैं। खुर्रम गुलजार इस बारे में मजीद हमें आगाह करेंगे। जी खुर्रम, बताइएगा। जी, सुपरमार्केट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्हाइट करोला गैंग के 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जमान में खातून भी शामिल है, जबकि पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जमान ने स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों का एतराफ किया है। गिरफ्तार मुल्जमान में अली अहमद और मुल्जिमा सादिया शामिल है। मुल्जमान के कब्जे से असला और मसरूफ का सामान भी बरामद किया गया, जबकि मुल्जमान का एक साथी कासिम जो कि फरार हो गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जमान से मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जमान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में व्हाइट करोला गाड़ी के अंदर राहगीरों से और गलियों में बैठे हुए नौजवानों से लूटमार की वारदातें करते थे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया खुर्रम। समुंदरी थाना सिटी की हुदूद में कार सवार चोर मुतहर्रिक हो गए हैं। चोरों ने कारखाने से लाखों मालियत का घी चोरी कर लिया है। कार सवार मुल्जिमान चंद मिनटों में वारदात करके फरार हो गए। वारदात की फुटेज बोल न्यूज़ को दिखाई भी जाएगी। ये फुटेज आप देख सकते हैं। राव जरगाम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इस बारे में उनसे जानेंगे। जी बताइएगा जरगाम। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना सिटी समुंदरी के से 1 किलोमीटर के फासले पे तकरीबन पेश है, जहाँ पर मेन रजाना रोड के ऊपर 2 कार सवार सुबह नमाज के वक्त आए हैं। उन्होंने ताले तोड़े और लाखों रुपए का घी चुरा कर फरार हो गए हैं। पुलिस को बर वक्त इतला कर दी गई, लेकिन बावजूद इतला के हस्बे मामूल पुलिस 1 घंटा ताखीर से पहुंची। कार सवार चोरों ने समुंदरी के गिरदोनवा में कई बेशतर वारदातें कर चुके हैं, जो पहले भी रिपोर्ट की जा चुकी है। जी ठीक है जरगाम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कसूर में 1825 बिजली चोर पकड़ लिए गए हैं। 15 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया है। लेस्को मुलाजमीन पर तशद्दुद करने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जायद अब भी मफरूर हैं। 900 से जायद अफराद ने डायरेक्ट कुंडे लगा रखे थे। 800 से ज्यादा अफराद ने मीटर में टेम्परिंग करके बिजली चोरी की हुई थी और ये क्रैकडाउन किया गया है कसूर में, जहां 1825 बिजली चोर पकड़ लिए गए हैं, जबकि 15 करोड़ जुर्माना भी आयद किया गया है। लेस्को मुलाजमीन पर जिन अफराद ने तशद्दुद किया उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 15 अफराद हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा अब भी मफरूर हैं और उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अब्दुर्रहमान। ये बिजली चोरों के खिलाफ जो क्रैकडाउन पिछले 2 हफ्ते से जारी है, इसमें से मुतवातर बिजली चोरों का पीछा किया जाए और देहातों में भी अब बिजली चोरी का ऑपरेशन जो जारी है। एससी वापदा और एक्शन सिटी स्कूल के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जब तक एक भी बिजली चोर है उनका पीछा करें और बिजली चोरी खत्म करके इस मुल्क को जो बिजली का खसारा आ रहा है उसको पूरा करेंगे। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। हेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वाजिबात की अदम अदायगी पर 122 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए हैं। अब तक 8 करोड़ 70 लाख 80 हज़ार रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। हेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ 296 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 29 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान हेस्को की जानिब से ये बताया गया है। हेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और वाजिबात की अदम अदायगी पर 122 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए हैं, जबकि एक भारी आयद किया गया है जो कि 8 करोड़ 70 लाख और 80 हज़ार रुपए का है। हेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ 296 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि तर्जुमान हेस्को का ये बताना है कि 29 बिजली चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है। हेस्को रीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और मुल्क भर में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वाजिबात की अदम अदायगी पर हेस्को रीजन में 122 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए हैं।
और एक बार फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस के हवाले से, जिसका कुछ ही देर के बाद समाअत का आगाज होगा और ये केस बराह रास्त नशर किया जाएगा। फुल कोर्ट इजलास में केस की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दी गई थी। PTV अमले ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कुछ देर के बाद केस की समाअत करेगा और इसे लाइव नशर किया जाएगा, जिस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। और PTV की जो टेक्निकल टीम है वो वहाँ पर मौजूद हैं, सहाफ़ी हजरात वहाँ पर मौजूद हैं। नीलम अरशद हमारे साथ है। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, नीलम अरशद से जानेंगे। जी नीलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और इससे कबल आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम जो तारीखी जो हियरिंग्स होती रही हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो लिंक का जो इंतजाम है वो ज़रूर किया जाता रहा है, लेकिन लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो फर्स्ट टाइम होगी। और इसमें आपको बताएं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से हिदायत दी गई थी और आज देखा गया कि सुबह से ही जो इंतजामात हैं उनको मुकम्मल हतमी जो शक्ल है वो दी जा रही थी। टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर आया और बाकायदा तौर पर अभी कमरा अदालत नंबर 1 जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत है, वहाँ से अगर आपको खबर दें तो तकरीबन 5 कैमराज जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें 4 कैमराज जो हैं वो गैलरी में नस्ब किए गए हैं, जबकि एक कैमरा जो है वो नीचे डाइस पर लगाया गया है। और तमाम की तमाम जो हियरिंग है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जो कि सरकारी TV जो है उसको बराह रास्त नशर करेगा। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि जब बेंच का अनाउंस किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो साथ ही साथ उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इस पे जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो होगी और कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कार्रवाई है अवामुल नास बराह रास्त देख सके। तहम आपको बताएं कि 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है अब, और फुल कोर्ट इससे कब इजलास चल रहा था जो कि काफ़ी तवालत इख्तियार कर गया, जिस वजह से 9:30 बजे का जो वक्त था इस केस से मुतालिक उसको तब्दील करके 11:30 बजे रख दिया गया। और अब थोड़ी देर बाद अब समाज जो है वो दोबारा हो जाएगी। और आपको ये भी बताते चले कि लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक जो कमरा अदालत नंबर 1 है उसमें तमाम सारे इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। फुल कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद पाकिस्तान टेलीविजन ने कोर्ट रूम नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम मुकम्मल किए हैं, कैमरे लगा दिए गए हैं, केबल्स बिछा दी गई हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि तमाम जो इंतजाम हैं उसको हतमी शक्ल दे दी गई और अब से थोड़ी देर बाद जो समाअत है वो शुरू हो जाएगी। इससे कबल आपको बताएं कि जो टेस्टिंग का प्रोसीजर था ऑडियो वीडियो का वो भी मुकम्मल कर दिया गया है, तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। अब कमरा अदालत में टेक्निकल स्टाफ के साथ दीगर जो सहाफ़ी और वकला है अब जजिस के आने का इंतजार कर रहे हैं और 11:30 बजे के करीब जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक ये समाअत है आपको बताते चलें कि गुज़श्ता जो समाअतें हुई साबिक चीफ जस्टिस के दौर में उसमें इस मामले पर हुक्म इम्तना जो था वो जारी किया गया था। तहम अब इस मामले पर 15 रुकनी जो फुल कोर्ट है वो बनाया गया है और इतलात है कि इस बेंच के जो एक जज हैं वो आज रात अमेरिका जो है वो रवाना हो जाएंगे। इसलिए कोशिश की जाएगी कि आज इस मामले पर कोई अहम जो फैसला है वो जारी हो सकता है। कभी इम्कान जो है वो जाहिर हो रहा है कि इस मामले पर कोई अहम फैसला जो है वो भी जारी हो सकता है। आपको बताते चलें कि इस मामले पर जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनकी तरफ से हुक्म इम्तना जो था वो जारी किया गया था और आज ऐसा लग रहा है कि हुक्म इम्तना का जो फैसला था उसको खत्म कर दिया जा सकता है, कालादम करार दिया जा सकता है। इस मामले पर एक बार फिर जो समाअत है उसका सिलसिला शुरू हो सकता है। अहम फैसला मुतवक्किल है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से 184/3 का मामला है, उसमें ये जो चीज़ है उसको मद्देनजर रखना होता है कि मामला किस तरह से अवामी मफाद का है या पब्लिक इंटरेस्ट इन लार्ज पर मबनी होगा। तमाम इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा चहमकुइयाँ और इब्हाम पाया जा रहा था आईनी तौर पर। उस आईनी खुला को दूर करने के हवाले से इस मामले पर दोबारा से एक तरह से समाज जो है उसका सिलसिला शुरू होगा। अब 15 रुकनी जो बेंच होगा फुल कोर्ट बेंच जो है उस मामले पर समाज करेगा। हुक्म इम्तना जो था वो खत्म होने का इम्कान है कभी, और इस पर आपको बताते चलें कि इस बेंच का जो एक रुकन जज है वो ज़राए के मुताबिक आज शाम अमेरिका रवाना हो जाएंगे। तमाम इस वजह से कि ऐसा लग रहा है कि इस मामले पर जो अहम फैसला है वो मुश्किल है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो बराह रास्त स्ट्रीमिंग इंतजाम हैं उनको मुकम्मल कर दिया गया है और अब से थोड़ी देर बाद समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज देने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर तारीख में देखा जाए कि अहम केसेस पर इस तरह के इंतजाम होते हैं या नहीं, तो इससे कबल हमने ये देखा कि जो ऑडियो स्ट्रीमिंग होती है उसके इंतजाम तो कर लिए जाते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग पहली दफ़ा होगी जो कि बराह रास्त सरकारी पर नशर की जाएगी। अहम अवामी अमूल का मामला है और इस पर जो 9 मुंतखब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से ये फैसला किया गया था कि इस समाअत को बराह रास्त अवामुल नास देखे, लिहाजा इस फैसले को अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं
और अब से थोड़ी ही देर बाद समाअत शुरू हो जाएगी। अब से थोड़ी देर के बाद समाअत शुरू होगी और पहली बार ऐसा होगा कि कोई समाअत है जिसे लाइव दिखाया जाएगा और तमाम ही लोग घर बैठे इस कार्रवाई को देख सकेंगे। नीलम, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक तहरीरी जवाब भी जमा कराया दरखास्तें खारिज करने के हवाले से, तो उसे भी देखा जाएगा समाअत से पहले? देखिए, इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है वो इस मामले को डेफिनेटली टेकअप करेगी, लेकिन इसे कब देखना ये होगा कि इस दरख्वास्त का जो मतन है वो उस हवाले से भी देखा जाएगा, जो सजाएं हैं उनको देखा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि इस मामले पर अगर वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराना था तो उसको पहले भी जमा करवाया जा सकता था। ताहम जो एक ज़ुबानी कलामी जो जवाब होता है या तहरीरी जवाब होता है उसके नोटिस करने के लिए भी उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो थोड़ा वक्त ज़रूर लेती है। ताहम आज ऐसा लग रहा है कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी एक मीटिंग हुई है अभी, और उस मीटिंग में जो फैसले किए गए हैं या एक कलामियाँ है वो भी जारी हो सकते हैं, तो उसमें वो चीज़ ज़्यादा वाज़ेह तौर पे जो पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो हो सकती है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या स्टांस लेती है। ताहम एक अहम अवामी अमूल का मामला है ये, और इस पर अभी ऐसा रहा है कि एक अहम जो फैसला है वो मुतवक्के है, और गुज़श्ता जो समातें हुई हैं उसमें अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है अगर उसकी रूह से देखा जाए तो सिर्फ ठीक है नीलम, आपसे दोबारा राब्ता कायम करते हैं। शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़ केस के हवाले से नीलम हमें आगाह कर रही थी। कुछ ही देर के बाद कार्रवाई का आगाज़ होगा, और जैसा कि इससे पहले भी ये बताया गया कि ये जो केस है ये बराह रास्त नशर किया जाएगा, और तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई केस जिसकी कार्रवाई लाइव नशर की जाएगी और आवाम घर बैठे इस कार्रवाई को लाइव अपने TV स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। फुल कोर्ट इजलास में केस की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दी गई थी, और गुज़िश्ता रोज़ से हम ये सुन रहे थे कि हो सकता है कि इस केस को लाइव दिखाया जाए, और अब इस चीज़ का हतमी फ़ैसला किया गया, जिसके बाद PTV की जो टेक्निकल टीम है वो वहाँ पर मौजूद थी और तमाम दिस हाफ आवरली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय वो आज ही सादिर कर दिए जाएं। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कुछ ही देर के बाद इस केस की समाअत करेगा। 11:30 बजे का वक्त है और 11:30 बज चुके हैं, और कुछ देर के बाद इस केस की समाअत का आगाज़ होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो फैमिली है वो भी कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद होगी, और ये जो कार्रवाई है इसको बराह रास्त विटनेस करेगी और इस कार्रवाई को लाइव दिखाया जाएगा। इससे कबल चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 निकाती एजेंडा पर फुल कोर्ट इजलास हुआ, और जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये बात सामने आई कि कार्रवाई तकरीबन 11:30 बजे शुरू होगी और कार्रवाई को लाइव दिखाया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। और हम ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाने के बाद मुख्तलिफ ऐसे फ़ैसले किए हैं जो कि तारीख़ में पहली बार देखने में आए हैं। हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया गया, और आज जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया, तालियां बजाई गई, उनका इस्तकबाल किया गया, उन्हें खुश आमदीद कहा गया, और इस मौके पर उन्होंने खुशी का इजहार भी किया। लेकिन उनका ये कहना था कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। साथ साथ उन्होंने कुछ अहम बातें भी की, और उन्होंने ये कहा कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो खुशी से नहीं आते, जो साइलीन हैं वो अपना सवाल लेकर यहाँ पर आते हैं, उन्हें मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाए। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आज सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फुल कोर्ट इजलास बुलाया, और फुल कोर्ट इजलास का 4 नुकाती एजेंडा था, लेकिन उसमें मेन जो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात की जो कार्रवाई है उसको लाइव दिखाया जाए। तो इस हवाले से आज कमेटी रूम नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के में मौजूद 15 जजेस ने जो है वो शिरकत की। और इसके साथ साथ इस एजेंडे के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मुकदमात की लाइव कवरेज जो है वो किस तरीके से दिखाई जा सकती है, क्योंकि इस सवाल से पहले फैसला
तैयब बलोच से रब्ता दोबारा कायम करने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस पर समाअत करेगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वकील हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ चीफ जस्टिस की फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है। केस की जो समाअत है, केस की जो कार्रवाई है वो लाइव दिखाई जाएगी और PTV पर ये कार्रवाई लाइव दिखाई जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अवाम अपने घर बैठे इस कार्रवाई को देख सकेंगे और इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी तैयब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग के एजेंडे पर जो है वो गौर वफोज किया गया। तो फुल कोर्ट इजलास ने जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे दी है। तो जिसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन की टेक्निकल टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में कैमरे भी इंस्टॉल कर दिए और केबल्स भी बिछा दी गई, जबकि लाइव सोर्स भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो पहुंचा दिए गए। तो अब 11:30 बजे जब फुल कोर्ट समाअत होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुकदमा जो है वो जेर समाअत होगा, तो उसकी लाइव कवरेज जो है वो अब तमाम अवाम नास को जो है अपनी टीवी स्क्रीनों पर मुयस्सर हो सकेगी। लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला जो है वो काफी अर्सा पहले किया गया था, ताहम उसकी जो है वो बाकायदा इजाजत या मंजूरी जो है वो नहीं दी गई थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना ओहदा संभालने के बाद सबसे पहले काम ये किया कि उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुलाया। तो आज फुल कोर्ट इजलास जो है सुबह 9:30 बजे कमेटी रूम नंबर 1 में मुनक्किद हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस ने शिरकत की। तो ये 4 नुकाती एजेंडे पर इजलास हुआ था। उसमें मेन चीज यही थी कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को जो है वो अवाम नास को लाइव किस तरीके से दिखाया जाए। तो फुल कोर्ट इजलास ने जब उसकी मंजूरी दी तो उसके बाद अब तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब 11:30 बजे ठीक है। तैयब बलोच कुछ देर के बाद समाप्त होगा, इस बारे में आपसे मजीद भी जानेंगे। शुक्रिया आपका और कार्रवाई के हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. दिन भर चेहरे की नमी कम होती है और चेहरा मुरझा जाता है, इसलिए ग्लो एंड लवली की नई हाइड्रा ग्लो। इसमें है रोज सीरम जो चिल्ड को अंदर से नमी दे ताकि चेहरे को मिले खिला खिला ग्लो। जब नमी मिले ग्लो खिले। ग्लो एंड लवली हाइड्रा ग्लो। सेफगार्ड करें हम, जर्म से दूर रहे हम। याद रखना, सिर्फ सेफगार्ड से शप। सेफगार्ड से जो नहाए घंटों जर्म से बचता जाए। शप चलता जाए। सेफगार्ड से नहाना, जर्म दूर भगाना। करेला ऑफ। दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट नया सर्फ एक्सेल। खर्चे कम कैसे करें? बाबा खेले। चलो आ जाओ। बीमार पड़ गई तो टेस्ट, दवाइयाँ, हजारों का खर्चा। हजारों का खर्चा बचा सकता है लाइफ बॉय। बीमारी की असल वजह है जरासीम, जिनसे लाइफ बॉय दे 100% यकीनी हिफाजत। बड़ी हिफाजत, बड़ी बचत। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पोर, इजी टू कुक। हम माँ की बराबरी तो नहीं कर सकते, पर उसके एफर्ट्स को स्टैंडिंग ओवेशन तो दे ही सकते हैं। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मदर्स। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से। अ प्रोजेक्ट ऑफ अलकबीर डेवलपर्स। जब यूफोन 4G देगा सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB डेटा, 450 ऑफ नेट मिनट्स, तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ग्रैंड।
Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. Breathe out now. Open your eyes. इस शर्मिंदा कर देने वाली खारिश की वजह हो सकती है डैंड्रफ। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स नीम, जो डैंड्रफ से लड़े और सर की खारिश कम करे, कंधे से बोझ हटा दे। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। सबरोसो दे आपको पैक प्रोटेक्टेड क्वालिटी और हाइजीनिक चिकन प्रोडक्ट्स जिनकी ग़िज़ाइयत और फ्रेशनेस को किया जाता है लॉक इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी के साथ और केयरफुली पैक करके पहुंचाया जाता है आप तक, ताकि आपको मिले द बेस्ट एंड मोस्ट न्यूट्रिशियस चिकन हर बार। सबरोसो, व्हेन इट्स लव्ड इट्स पैक्ड। ओह नो, कजिन का फर्स्ट फंक्शन ऑन माय फर्स्ट डे, अगर स्टेन लग गया तो उन दिनों में एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ट्राई द न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग, जो दे आर्म पैड के मुकाबले 1, 2, 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन। अब एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा। अभी आपको अपडेट करेंगे इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस की समाअत का आगाज हो चुका है। तमाम जजेस इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इस केस की समाअत का आगाज हो चुका है। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फुल कोर्ट समाअत जो है वो शुरू हो गई है। तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी बेंच जो है, जिसे हम फुल कोर्ट भी कहते हैं, वो उसने बाकायदा कार्रवाई का आगाज जो है वो शुरू कर दिया है। और इस हवाले से जो ये आपको बताता चलूं कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, उन्होंने 8 रुकनी बेंच बनाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के लिए भी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा था कि वो बेंचेस किस तरीके से, बेंचेस की तश्कील किस तरीके से होगी, आया वो नए कानून के 9 petitions. And may I know who the counsel for the 9 petitioners are? One is yourself. In 6, 7 and 12. 6, 7 and 12. It's myself and Imtiaz Siddiqui sahab. 6, 7 and 12. And 12 it is yourself. You will argue. And Mr. Imtiaz Siddiqui sahab, sir ji. No, who will argue? Sir, I am going to give a brief outlay. Okay. Achha, and then Imtiaz Siddiqui will take over. The rest of the petitioners, who are they? I think नाम बताते रहे। Khan Wardig, petitioner in person from Lahore, registry. Zaman Khan Wardig, Constitution petition 10, my lord. 10. My lord. You are petitioner or counsel? I'm petitioner, my lord, in person. Okay, petitioner in person. ठीक है। The other petitions? Mr. Hussain, can you please is the come to the mic, please? जी मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब लाहौर से वो नहीं आ सके, उन्होंने आना था। मैं AOR हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। तो मैं भाई आ नहीं सके का मतलब क्या है? क्यों नहीं आ सके? उन्होंने आना था, मुझे नहीं पता, मैं तो फिर यहाँ पर अटेंड कर रही हूँ। तो मैडम ने कहा कि आप CP नंबर 8। I think then Mr. Irfan. आप बहस करेंगी या नहीं करेंगी या अडॉप्ट करेंगी आर्गुमेंट्स? जी अडॉप्ट करूँगी। अच्छा चलें। और कोई पिटीशन रह गए? I think Mr. Irfan, Hassan Irfan has He's filed. from Lahore. I think he's Lahore. appearing from Lahore. 19 में नहीं है कोई? अच्छा CP 19 में, ठीक है। ख्वाहिश साहब, we don't want to cut you short, but if you can be more precise, just appreciate that some of us have heard this matter and some of us are going to hear it for the first time. There was a question, because since the bench no longer, one member of the bench has retired, to reconstitute it. The question had also arisen whether I should be part of the bench. Then the related question would arise, should the other 2 members be part of the bench, because one way or the other our interests, maybe said our interests are affected
then the related question arose whether all those who, inshallah, become Chief Justice, should they be part of the bench? Should their 2 senior judges be part of the bench? So I think the best way to resolve it was to constitute a full court, if you agree. And there are also requests in, I think, 3 CMAs for full court. So that is the reason why the full court has, all the judges have convened. Frankly speaking, let me be very clear. Why did I file this petition? No. We will come to your petition. We are with you, sir. The full court should be there. Achha, so, since there are CMA number 4207 has been filed by Pakistan Bar Council, who represents Pakistan Bar Council? So they had sought full court, and there are 2 more CMAs, CMA 3166 and 3199. They had also sought full court. So these contentions. The rest of you can take a seat. Qazi Saab will first address, and then the others can address. I'll hand it over to Mr. Imtiaz Siddiqui, sir, because he's, to be very honest, sir, at the time of the, when this was first heard by 8 judges, Mr. Imtiaz Siddiqui led the arguments. He's fully prepared, but I would like to say a few words. Let's forget the past. Today is the first date of hearing. I'll say a few words, and then I'll leave the floor to Mr. Imtiaz Siddiqui. I want to make it one thing very clear. When this Supreme Court Practice and Procedure Act came into force, or became in the form of a bill and later became an act, I read clauses 1 and 2 thereof. Your lords have this act in front of you? I think one of the petitioners has filed it. It's CMA 5104. I don't know who is 5104. It's attached with it. Ji, please read it. Argue as you please. By the end of your lordship, which is the petition that you? I will be starting from 6, sir, because 6 is the one when the orders have been passed. But may I also say? No, you started with the Practice and Procedure Act. You wanted to read it. I'll read it. Before I do that, there is an order dated 2nd of May. Ajay Saab, we'll forget about the past. Because we are not, don't do this. Okay, so I'll say, let's bury the past. Don't bury it, it's past. You can't bury the past. All right, for the time being, argue as if you are arguing for the first time. For the first time. Thank you. Well, I do say here. I may ask a question. Khwaja Saab, idhar dekhen. Ji, sir. You have endorsed the sitting of the full court, which is fine, but I'm just wondering what will happen to Section 5 in the event if the law is upheld. There is a right of appeal that is provided under this law. In that case, then how do you visualize that right being exercised? I was going to come to that. I'm very thankful to leadership, because if the full court is going to hear it, then I have no right of appeal. But in the event, since we are hearing the vagaries of this law, what will happen to this right if a full court is now going to proceed with the matter? In fact, when I go through the law, there are so many things. वो अपनी जगह है ना जी. Let's just assume बहस हो जाएगी. Section 5 को फिर क्या होगा? Will Section 5 not be exercised by one party? It says that an appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution. Faiz, if I may interject, you please proceed as you want to. Let's read the Act together. Whatever you want to comment about the Act, and please also address the query that has been addressed to you in your own manner as you wish. So let's start with the Act at least. I would like to answer that when I'm going through this, because this is a... So let's start reading the Act. Do you want to read the Act or you don't want to read the Act? I will read the Act now. I'll start with Section 1. But first of all, let me say this one. I would
just state this thing, that by the end of your honest tenure, if I'm still alive, I would have completed 50 years of practice in this honorable court. Can you please read? No, let's not do that. Let me say. This is public time. When I saw this act, let's read it. When you saw it, we're not interested. Well, see the section 2 thereof. Please read the whole act. I read it, sir. Whereas Article 191, I'm reading the preamble, 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. Now, at present, there are the 1980 rules which govern the procedure here in the Supreme Court. Before that, there were the 1956 rules. The 1980 rules were on account of a judgment which came in 1979. Ajay Saab, please focus. Okay, I'm focusing myself. We know all the 1980 rules. Background. No, please don't. We don't. The country expects 57,000 cases to be decided. We would love to hear you, but let's focus on your petition. Now you have started reading, you started giving the history of 1980 rules. We know that. If you'll ask a question, please answer that, but proceed with your arguments. I have said about this 1980 rules for the simple reason that if I read now section 2, it says... Please continue, don't jump to section 2. All right. And whereas Article 10A is of the Constitution, mandated right to fair trial and due process. Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law. Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence, and Islam guarantees right of appeal. Therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, this law is being enacted. The court will see that there is no mention of item 55 of the federal legislative list as far as this preamble is concerned. It is silent. Because that is the basic, what can the parliament do? Parliament is not omnipotent. It has to go according to certain constitutional limitations. That principle of old principle that the parliament is supreme means that they are omnipotent, led by Dicey and influenced by Blackstone and Co. So we all agree that Parliament has limitations. This law doesn't say that. Don't insert words which are not written there. Law doesn't say Parliament is omnipotent. Just restrict yourself to the act which you have challenged. When I say this thing, that this very preamble does not mention. It's noted. Read it on. Okay. And whereas it is expedient to make a law providing for certain practice and procedures of the Supreme Court, it is hereby enacted as follows. This act shall be called the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, and it shall come into force at once. Constitution of benches, that the crucial question which arose. Every cause, appeal or matter before the Supreme Court shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee comprising the Chief Justice of Pakistan and two next most senior judges in order of seniority. Now, the 1980 rules, Order 11, read in this manner. Because if you have to correlate, it may be important to do that. पहले अगर इस एक्ट को पढ़ लें हम ताकि हम सबको पता लग जाए कि इसमें क्या है क्या नहीं है. Sir, which rule were you referring to? If we want to continue like this, we'll go ahead. But my viewpoint is this, that this frame of these rules
under Article 191 is the prerogative of the Supreme Court, sitting as the full court. When they framed the 1980 rules, the entire court sat together and in their wisdom, together they framed the rules. This abdication or this intrusion by the Parliament into the affairs of the Supreme Court prompted me to come forward and file this petition. Because I feel that every institution must remain within its own domain. Khwaja Sahab, I'm here on this side. It's right here. I'm here on this side. If you could kindly formulate your exact legal proposition. What you are suggesting is that you do not have any objection to the untrammeled, unaccountable powers in one office. Is that your question? My contention is this. Are you supporting what has happened in the past? I am supporting what happened in 1980, and I'm supporting... So what is your legal proposition? My legal proposition is this, that this power of forming the benches, etc., is the domain of the Supreme Court itself. If this is your proposition... I think you should read the law first, Khwaja Sahab, and then formulate the points. Let us first formulate... Act पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर एक-एक को देखें. It is only 2 pages act. It is only... Let me follow the Chief Justice. Let me read the law and then make my submission. If I may make your job easier, undoubtedly it's sometimes very difficult and disconcerting if questions... I know, it's very difficult to answer questions. If you are receiving a lot of questions from different sides, you don't even know who is asking the questions. If one of your associates jots the questions down, please don't respond to it. We let you argue it as you want to. Let me just finish. You read the act. You just point out, either you say this entire act is ultra vires, a constitution, that's one contention. If there are certain particular portions of the act which you think are ultra vires, a constitution, please, as you're arguing, point that, formulate the contention and move ahead. You don't need to respond to every query immediately. It will make your life very difficult because you won't even know where the question is coming from. One of your associates can take, and when you're done with your arguments, you can absorb the questions and respond. We will give you time to respond to the queries. Okay? So please continue with the act. Just can you take down the points and so that you can answer them. Second part of this section 2. Soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure, including the holding meetings and constitution of benches, provided that till such time the procedure is determined under this subsection, the meeting of the committee for the purposes of subsection 1 shall be convened by the Chief Justice or other 2 members of the committee as the case may be. The decisions of the committee shall be by majority. Now this is what the Parliament has enacted. And the provision which they have used is Article 191. At this stage, I would simply say this thing, that when myself and Imtiaz will be answering your question and promulgating, we would certainly refer to item 55 of the Federal Legislative List, which spells out whether the Parliament can make enactments relating to Supreme Court. If I may read 55 at this stage, it may be... Argue as you want. Well, all right. I'm just saying that your Lordship should note item 55 of the Federal Legislative List. Let's read it together. You wanted to read it. Let's read it. We'll read it together. Before going, I'm here, left side, your right side. Before going to this entry, if you want, you may read Article 191 of the Constitution. What it says? 191 also. In fact, I can start with Article 70, go on to 142, and then read 191 and go up to 55. Article 70,
gives the power of legislation, and it is to the effect legislative procedure. And what it says is, a bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate. I will skip that. I'll go straight on to subclause 4 of Article 70. In this article and the succeeding provisions of the Constitution, federal legislative list means the federal legislative list in the 4th schedule, sir. Then there is Article 141. Subject to the Constitution, Majlis and Shura Parliament may make laws, including the laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and the Provincial Assembly may make laws for the province or any part thereof. 142, subject to the Constitution, Majlis and Shura shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Then I take your lordship to 191, which is to the effect subject to the Constitution, again, subject to the Constitution and law. It is the Supreme Court. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. The crucial words here are that the power has been given to the Supreme Court to regulate its practice and procedure. These powers are under the Constitution, your right side. These powers are under the Constitution and the law. Constitution and the law. I'll say also, I'll come to that also. Because when I read 55, then it will be clearer. Faiz, if I may request my learned brother, I know it's very disconcerting, so many judges asking questions. So we will let you argue in your own way, and we will ask you questions. You don't respond, you just note it. And because then I know your chain of thought will... Point is noted. Chain of thought we don't want to break. Constitution and law. Point is noted. Constitution and law. Point is noted of my lord that what will be my proposition, and also what Justice Mansoor Ali Shah has said, that how will I go and make my propositions, and to say how this law is not obtainable. But may I read 55 as it states? Please do. Because your lord may ask questions on that. 55 of the federal legislative list. It says jurisdiction and powers of all courts can be subject to the power of the Parliament under 142 and 74. Faiz, just read it as is. Don't interpret it. Then you can interpret it. Okay, I'll go along with that. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list, and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस इस वक्त शामिल हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस की समाअत कर रहे हैं और 15 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है जो कि समाअत कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट ये समाअत की जा रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुकदमा ताखीर का शिकार है, इस पर माजरत खा हूँ। जजेस फुल कोर्ट मीटिंग की वजह से ताखीर हुई। उन्होंने कहा कि आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। वकील ख्वाजा तारिक रहीम की जानिब से ये कहा गया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का पहला पायलट टेलीकास्ट शुरू किया है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया लाइव टेलीकास्ट मामले पर कमेटी बना दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतालिका कमेटी इस मामले को फाइनल करेगी। मुनासिब होगा कि पहले बैकग्राउंड बता दूं। ख्वाजा तारिक रहीम की जानिब से
ये कहा गया दलाइल में। Yes, point noted. Jurisdiction and power. Jurisdiction and power. Well, I'll answer that. आप नोट कर लें सवाल। सवाल आपका मैंने सुन लिया जी। Please note this down that we have to have jurisdiction and powers both. We'll explain both. We'll explain both. This is what the Constitution says. Now, this is regarding the benches, Section 2. In one word, I would say this, that this power of 191 gives the power to the Supreme Court itself to regulate its procedure, as has been done in the past, as has been held in a number of cases which we bring before your lordships. Those cases are well known. Now I just ask a question. You can note it. Are you suggesting that that even the rules of 1980 are ultra vires the Constitution? Please let me finish. Because the power vests in the Supreme Court as all the judges of the Supreme Court. That could be one reading of your argument. So you are saying that Section 2 is ultra vires of the Constitution, which gave power to 3 persons. Order 11 of the rules is ultra vires because it gave power to 1 person. Is that your proposition? No, madam. My proposition is very straightforward. As far as the 1980 rules were concerned, they were made by a full court, which was at that time. The entire historical perspective has been given. My proposition is slightly different. These, under 191, it is the function of the Supreme Court itself to regulate its thing. Okay. See, 184.3 is not the only part. Baja Sahab, you can later answer my question. So what you are saying is that the expression subject to the Constitution and law, this becomes redundant? That is the question. That is what you are interpreting it. I'll answer that. We'll answer that. We noted, we answer this thing. But my basic question, why I came before your lordship, is that the functions which are there with the Supreme Court, there should not have been there with the Parliament. Because that institution that has its own. Today they say that how you are going to have the benches. Tomorrow they will say that such and such bench will hear this case, such and such bench will hear that case. No, please let's not go into what they may or may not do. Why I'm saying is this, that if I give them unbridled power, then anything can happen. It pertains to your attack on a particular piece of legislation. I'll say this thing. No. What Parliament decides to do future, you can bring another petition, we can look at it then. Restrict yourself to your case. Please proceed. I will say this in the manner that this clause 2 is beyond the powers of the Parliament. Three, and when I'm arguing, my lord, my associate will explain that 184.3 is not the only thing which is regulated by the Supreme Court rules. If your lordship would have the 1980 Supreme Court rules in front of you, there are the different types of jurisdiction which are available to you. Shall we finish with the Act quickly? Okay, I'll finish with the Act, my lord. Exercise of original jurisdiction of the Supreme Court. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Section 1 of Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. I will simply say on this thing that this is... Sir, on your right side, but not as much right as previously. Yes, my lord. Over here. Question, so your associates can note this.
this power that Section 3 purports to confer on the committee with regard to examine the question and therefore act as a gateway perhaps, is this a power, or is this a judicial power, or is this an administrative / statutory power? Because 183 is ultimately a judicial power, because then it seems to me that the latter part of this section says it shall constitute a bench. That seems to imply that the power exercised by the committee is not a judicial power but an administrative power. So can Parliament whittle down? This is a question, please note. Yes, it's judicial, and in fact that will be exactly my proposition. Please hear his lordship. Sawal to sun le. Can the Parliament whittle down the judicial power under 184(3) by providing that this committee will act as a gateway and block out in exercise of administrative power anything that the committee feels, 3 judges, not the whole of the Supreme Court, but 3 judges, senior most respectable judges, but in the end just 3 judges, block out any case that they, in exercise of administrative power, they will deprive the Supreme Court from exercising judicial power. So you kindly note the question and you address it at an appropriate. And I will go even further than that. And also a supplementary question connected to this. Earlier, the Justice solely had this power. So there was a likelihood that the outcome of the cases could also have been influenced by the constitution of the bench. So that eroded the independence of judiciary. If this argument is accepted, then the earlier traditional model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of the cases by constitution of benches, and this probably was the mischief that the Parliament wanted to address. If I may add, there is a judgment of this court and the judicial pronouncement on that as to what procedure would be followed by the Chief Justice to invoke jurisdiction of this court under Article 183. And it says where a bench, 3-member bench, 2-member bench, but a bench comes to the conclusion that there is a matter of public importance affecting fundamental rights, they may recommend to the Honorable Chief Justice that a bench be constituted. And the Honorable Chief Justice, after seeing the reasons that the bench has assigned for recommending, he may or may not, but at least he would recall reasons why he thinks he disagrees with the recommendations, or thereafter he can proceed. And so there is a judicial pronouncement on that already in place. In fact, I'm sorry, since may I say, Honorable Chief Justice has said that we can only ask questions and not for you to respond immediately. So let me, with all due respect, ask a supplemental to what the supplemental put to you by my learned brother, colleague Justice Atar Minallah. It seems to me that the power to constitute a bench, which is the subject matter of Section 2, constituting a bench does not block the exercise of judicial power. It simply determines which is the bench that is to exercise judicial power. Yeah. But my question to you is that Section 3 seems to go beyond that. Section 3 is separate from Section 2. It actually blocks, it confers on the 3-member committee exercising administrative powers to actually block the exercise of judicial powers. It's not a question of constitution of benches. They can say, sorry, out, nothing further, matter ends. The question is this, so this is not a question of composition of benches, that is power
universally on them in terms of Section 2. The question here, it seems to me, is the very blocking of the judicial power itself. Can Parliament do that? Question is maybe noted. And you don't have to answer. No, I'm not answering. Carry on. I'm not answering. The Honourable Chief Justice said you carry on with your submissions. Just note the question. This thing, I may add one thing to it. It also deprives me of my right, which they have said that they are passing this thing under Article 10A of the Constitution. Here, if Section 3 is there, I'm being condemned. I'm not being heard. Who is the party is not being heard. Who is when you're using the word I? Who is the I here? Litigant. The litigant. Because the litigant. That leads me to another question. Are your petitioners, do they have an interest in the matter, or they've come purely as a matter of public interest? I am looking at Section 3. No, I'm not talking that. I'm not asking a question of the petitioners. Do they have an interest in any case why they brought this challenge, or they brought it in the public interest? What is the answer? Answer to that is that it's a public interest. You have no personal interest in the matter, you or your client. I have no personal interest. You meaning your client. But let me say this thing. No, I just want to know an answer to that. Myself and Mr. Siddiqui, we are doing this as pro bono. We are doing it because we want to know, I don't know who you're speaking for. Are you speaking for counsel? Are you speaking for petitioners? I'm speaking for the petitioner, and I'm saying this thing that we brought this petition in the interest. You got the answer. Now please proceed. I've got the answer. In the interest that the law should take its course. The Constitution must be upheld. And I'm also saying that I'm sure with such preliminaries sitting there, the whole object is that, first of all, the independence of the judiciary should not be in any manner smeared by any other institution. And secondly, Khwaja Sahab, please. We are not going to platitudes. I will not make a political speech. Khwaja Sahab, I'll refrain from that. Just proceed with that. Yes, sir. Khwaja Sahab, just a confusion which you can answer later. So what you are saying is that the untrammeled, unaccountable powers of the Chief Justice exclusively to decide constitution of benches, you were satisfied with that, and that fulfilled the conditions of Article 10A. But if it is done by the Chief Justice and 2 senior judges, you have an objection to that. That's your proposition. I think your Lordship is possibly not. I've not been able to explain. Section 2 stands on its own footing, and I have objection on that. Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. It does not. Instead of Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. It does not. Instead of Is it your argument? Let us clarify. Is it your argument that Section 3 affects the judicial powers of this court? Yes, sir. Curtails judicial powers of this court, because this court means the Chief Justice and all judges. So it confines that power to 3 judges and not to the judges of the Supreme Court. That's not fine. 2 and 3 have to be read independently and separate. Now, please. There are 2 in exercise of administrative powers. Yes, sir. I'm trying to make your life easy, but if you don't want it to be made easy, that's fine by me. Please don't interrupt. I've requested you, please keep noting the queries. Naturally, you have a chain of thought, you have submissions. We don't want you to get, I can appreciate your position. So many judges, so many questions, which one do you answer? And then your argument is lost sight of and you go somewhere else. So please persevere with your thing, keep noting the questions and you can address them. So I'm trying to make your life easy, unless you don't want it to be made easy. So proceed with your case. Note the question, respond to it later. To be very honest, I welcome this interruption. Can I ask you a question? Can I ask? Far right. Please.
What about the office of the Chief Justice after passing of this act? Don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? Because he would be left with no powers then. We noted this down, and in fact, I will say that the Chief Justice powers will be whittled down. As if this law goes through, the powers will be whittled down, but we will explain it in something. And this has been held in many places, that the Chief Justice has the power to form the benches, is the rooster, and I can go back years and years when a chain of judgments have come in, and the latest one is, of course, 2000. ऐसा फिर आप आंसर करने बैठ गए. I will continue. आप नोट कर लें, बाद में कर लें. Let me continue. Mr. Khwaja, I will add it. Then is a question. Mr. Khwaja. Yes, sir. Right side. Right side. Okay. I will add to it. Whether the power of the Supreme Court has been curtailed or the power of the Chief Justice. I think that's the moot question. The answer to that is that it's noted, sir. It's noted, and I will only say this thing, that Supreme Court, what is Supreme Court? Supreme Court is Chief Justice and so many other judges. Faiz will be sitting here till 12 o'clock. I know that, sir. So आप जरा अपना argument करें. अभी तो हम section 3 पे पहुंचे. Let me, on section 3, I will only say this thing, that this certainly is the Parliament has taken away the power not only from the Supreme Court and the judges, but also it has condemned me unheard and violated the provisions of Article 10A, which provides for a fair trial. Because I will file a petition. I've not even heard, and 3 judges or about 2 judges, they will decide on an administrative side, and I'll be out. So the question of 184(3) will become totally redundant. This is my point. Therefore, to that extent, section 3 is present. Now, next is 4. Interpretation of the Constitution. In the matters where interpretation of the constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court. Well, I will. Do you object for say I object to this provision, or you endorse it? I will say this thing, sir, that in the matters of interpretation of the Constitution, when you are, all the judges are competent to interpret the Constitution. By limiting it to 5 or limiting it to 3 or why not 7, why not 6? Please. I object to this thing, that this is a limitation. No, it's not a limitation. It says not less than. It could be a full court like the present court. So are you just safe? Is this ultra vires the Constitution, section 4? Say something, we should note it. On this, I will only say this thing, that putting a clause that the bench should be not less than 5, that possibly is expressing, shall I say, not confidence in less than 5 judges. Because this is very strange, because all judges are equal. Your Lordship is the first amongst the equal, but every other judge of the Supreme Court has the same powers and the same acumen. So by saying this thing, not less than 5, then there's a question of appeal, and which is a very relevant point. Ajay Saab, as I understand your earlier proposition, you are satisfied that the Chief Justice in the previous model, being the master of the roster, had untrammeled power to constitute a bench of 3 members, and you were satisfied with that. I have noted this thing. Yes. Your Lordship did not, sir, I would not be able to explain. It's my shortcoming. Explain later. On the question of benches, I have stated with this thing that this power should be exercised by the full court, not by the Parliament. About how the benches are to be formed. I will dwell on that. In a nutshell, you are suggesting that the powers as master of the roster in the Chief Justice were also unconstitutional. No, sir. This is your suggestion. No, sir. I'm saying this thing that under the 1980 rules, that power had been given. If all of you
sitting together feel that under 191 that this should be changed, then it is your functions. It is not the function of the parliament. Okay, now let's proceed. We'll ask. I'll argue on that. That is the point which needs consideration. 5 is appeal. Yes, Marisa. On section 4. On 4. If memory serves me right, section 4, what is the equivalent of section 4, is part of the Indian Constitution as an article of that Constitution. It was a part of the 1956 Constitution as an article of that Constitution. Now, question is that when the framers of the present Constitution had before them this model where this very power was conferred on the Supreme Court in the way that what in India they are called constitution benches, the question is this: that model, that aspect was not accepted by the framers of the present Constitution because they had a model both from India and from Pakistan itself. So the question is this: if that was not accepted, does this not require constitutional amendment? Can Parliament do something which the framers of the Constitution deliberately seem to have left out, despite the earlier models? Can Parliament then, in exercise of sub-constitutional jurisdiction, namely legislative competence, do something that was earlier part of the Constitution? This is the question. Please note. Yeah, it's noted, sir, and I may add on to this. साहब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी। जी। मैं इधर हूँ जी। जी सर। भाई बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर। सुन लीजिए, सवाल तो सुन लें। जी जी। कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसे नहीं है। आपने यही कहा, आपने कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर ऐसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट नहीं सर ऐसे नहीं है। चलिए बस नोट कर मैं नोट कर लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में जवाब दे, ठीक है? अदरवाइज तो आपकी मुश्किल काम हो जाएगा। मैं आई एम क्वाइट आई हैव वेरी नहीं आगे बढ़ते हैं। I have worked with all of you, sir. आगे बढ़िए। I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कोई problem नहीं है. I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, ma'am. If I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you. Surely, the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative competence under Article 191, trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect the independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Yes. Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution, the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? Not through ordinary legislation. आप नोट कर लें, जवाब ना दें. Not through ordinary legislation. If I will really request my colleagues that they are making, including myself, are making your life impossible. No, please, no, you are very fine. I'm learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us.
Now, please, we're not even reading the act and we are getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section. We are not even making progress. Please continue in your way. आगे बढ़ते हैं. Let me say this. Mr. Khwaja, Khwaja sahab, section 5 से आगे पढ़ लीजिए. Another question with regard to appeal. आप देखें, हमारे पास already एक dictator का ordinance था, Law Reform Ordinance 1972. उसके तहत Article 199 के लिए appeal provide की गई before 2-member benches. We are following it. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? बहुत अपील का राइट दिया, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199 है, आर्टिकल 183 तो ये क्या दोनों में Sir, it is गलत है तो फिर वो भी गलत है. It is noted with also this thing that what Parliament can do and what Parliament can do many things. Why my Lord has said so, but there is a procedure provided. Will answer that. भाई साहब अभी जवाब की जरूरत नहीं है. आप प्लीज I will not answer it. पहले एक्ट को खत्म कर Section 5 से आप आगे बढ़ लीजिए. ख्वाजा साहब, you have collected 100 questions. Just here. The Law Reform Ordinance of 1972, this is the question to you, regulated right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clause on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clog is there only in respect of the Supreme Court. Law Reforms Ordinance didn't do anything with the Supreme Court. It only affected intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent list, which is now no longer there, and also the clog was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the Law Reforms Ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clog. Mr. Noted, sir. And appreciate it. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person of this Act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. What you have to do, you're saying I'm not going to do it. You have challenged the law, you have to do, you have to challenge it. Appeal shall lie within 30 days. We've read the English of it. What's wrong with it? Tell us that. As far as Section 5 is concerned, is it good, is it bad? First tell us that. Well, it says that appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184.3, then why is this not they included in Clause 2, whereby my 184.3 application will be disposed of? The way I was taught law was not the council asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes, I am. No, I am not. These are my reasons. My lord, I have a reservation on this. You may have reservations. Tell us unconstitutional about it. But then let me explain it to them, because if I start explaining it at this stage, it will take your time. But I will say this thing, that this Section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in Section 2.
Should is different from ultra vires a constitution. It ought to have been given. What then? You go and move a bill in Parliament. We are saying, are you opposed to Section 5? Give us legal reasonings, or you say it's okay. अब उनसे आप पूछेंगे. You have done this. नहीं ये नहीं आप जवाब दीजिए ना. आपने petition लाए. This is not fair. इसमें to make it more simple, you don't want your client to have a right of appeal. No, sir, you first say it's unconstitutional, it's constitutional. You're not saying anything. You just. यहाँ कोई discussion होता है. Sorry, not on. This is your job in office. My Lord, may I say this thing that we divided the. Please answer the question: is this constitutional or unconstitutional? It is unconstitutional. I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना. वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है. Unconstitutional. Well, it's my personal opinion is this that this Section 5 goes beyond the powers which were there with. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right. There has to be a constitutional amendment to provide an appeal under Section 184(3). Okay. That, and this appeal, this act, an ordinary law, cannot provide. I can't seem to reconcile your, which appear to me to be contradictory submissions. Please let me finish. Yes, ma'am. On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here, the Parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing. That it's a good thing that the appeal be given, but the manner in which it has been given is wrong. Please take it. I'm saying this thing, that this one right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the Constitution. It is unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184(3) is a substantive provision of the Constitution. If you are happy with no appeal. Well, Lord, if a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. I just have a question to you with regard to Section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution. Kindly stop. So this order, the question to you has two parts. So the first part is this question, this order which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191 in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because if I may, and this is the, I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is recently, meaning in the hearing of the case, that anything that this law, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it, because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You don't have to give an answer. If the right of appeal had to be given through an amendment. Yes, next is right to appoint. आप चाहें तो आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्गुमेंट चलाते रहें, जी आगे बढ़ते हैं। शिक को पढ़िए, शिक है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I don't object. I personally don't object. Personally की बात कोई नहीं है। I'm not objecting to this, because I feel that
Okay, it's okay. Chali, let's get on with it. Section 6 is okay. Okay. Application for fixation of urgent matters, application pleading urgency or seeking entire filed in a cause, appeal or matter shall be fixed for it. My objection on this is again that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires, the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on section. Now, section 7 really relates to what has been as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, say, in a civil court, into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. The question, therefore, is this. The legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? This was my very first point which I said, that the functions of the Supreme Court have virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of power? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I say 7 is ultra-vires. Isme Khwaja Sahab. Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at aspect of independence of judiciary, that is, freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. That will certainly answer your lordship. Please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? Sahab, if I may have a supplemental on what my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? Would that not violate separation of powers? Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and, for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution?
that you say, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, with due respect, my lord. Qazi साहब ये एक बात सुनिएगा, एक क्वेश्चन आप इसको खत्म कर लेना सेक्शन को। आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लो। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं पढ़ लेगा, अभी पढ़ लेता हूँ सर। ये सवाल बड़े पर्टिनेंट, आप हर चीज आप नोट कर लेना। नोट कर भी लिया मैंने सर। करिएगा ना, मैंने शुरू में ये कहा था। आप शुरू में क्या कह रहे हैं? आप आखिरी सेक्शन पढ़ लें। मैंने शुरू में यही कहा था, आपने शरीफ इस्लाम और जो ये आप कह रहे हैं, तो इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किसी और नहीं होना चाहिए। ये अगर ये दखल अंदाजी होगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा, आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर रीडिंग सेक्शन 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. No, when the law is totally ultra virus, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra virus and right of review intra virus. No, what I'm saying is, according to your own arguments, the question is that you cannot provide a right of appeal, but you can provide the right of review under 184(3). If 184(3) right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far ख्वाहिश साहब फिर आप अपने लिए आप जरा सुन तो लीजिए ना। आप ये सवाल जो है जरा आप सुन तो लीजिए ना। ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर और फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछिए, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट, हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूँ कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर देना है कि ये इश्क, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर है, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूँगा आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाला देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े हो, राय आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये
184(3) का जो हम जो पावर आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये हम अपेलेट पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है जो हम बैठे हुए हैं एज ऑफ राइट अपील सुन रहे हैं या पिटिशन फॉर लीव टू अपील सुन रहे हैं। हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में बैठ गए, उसकी बहुत महदूद चीज़ें, मुझे बहुत सी चीज़ें कानून में शायद ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बराए करम आपने एक सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी। जरा आप प्लीज और हर बात को आप नोट कीजिए, अगर आप तो बस आप हर चीज को जवाब देने लगते हैं बगैर सोचिए। हर बात की बहुत अहमियत होती है। मेरे कोलीग्स की जो सवाल हैं वो बड़े अच्छे सवाल हैं, जरा गौर और फिक्र चाहते हैं और फिर जवाब देते हैं। अगर आप जल्दी से करेंगे फिर आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, फिर कहेंगे अब मुझे अच्छा जवाब आ गया। अब आप प्लीज 184(3) के तकाजे भी पूरे कर लें। आपके बिल्कुल 184(3) के तकाजे इंशाल्लाह मेरा एक सवाल भी नोट कीजिए, केपी ऑन द बॉर्डर प्लीज। आप क्या सोचते हैं दिस एक्ट हैज बीन पास्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट? क्योंकि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, क्योंकि commencement उनकी कर दी है और उसमें कोई limitation भी नहीं है, तो ये public interest में पास हुए या personal interest में हुए? Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please एक और note कर लें. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution, which relates to High Court. Same अल्फाज है, माँ सिवाय वहाँ पे Supreme Court, यहाँ पे High Court. Subject to the Constitution and law. Law तो बनाती है Parliament. तो आपके आर्गुमेंट्स हम ये समझे हैं कि पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी, खुद करेगी। सर मैं इसका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और जो लॉ आएगा वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखना पड़ेगा। ये भी कि क्या लॉ के तहत क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ये इसका जवाब देंगे जी आपको। इसीलिए तो another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in the exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Addition through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. आपके व्यूज को छोड़ दीजिए ना, आईनी तकाजे पूरे कर लेना। Number 7 is application for fixation of urgent matters. ये तो हो गया। Application pleading urgency or seeking interim relief. अच्छा, मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ। आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ, मेरी मर्जी। सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी। मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूँ इस बात से, मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस। एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी, मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा। इस पे सवाल का जवाब दीजिए, मैं नहीं लगाता हूँ। आपका ये केस फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको। आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ पैर कटे हुए हैं। इन्होंने हम पे भी मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की, मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूँ, और वो है, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था, वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी।
आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है। इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ, ये भी है। मैं अकाउंटेबल हूँ, ये भी एक सवाल है। आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है। और हम सब everyone to exercise powers as a sacred trust। आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे। तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूं तो वो तो मैं बिल्कुल मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप ये पिटिशन लाते, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते कभी। 10 साल पड़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे, आप खुश थे उस बात से। तो बराए करम आप ये जो बार बार बात कहते हैं ना, मेरी जाय मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूं, तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूँ, बेहतर कर सकेंगे। बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम। अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है इस पर। शुक्रिया। मैंने तो 3 चार्ज है जहाँ पे 184(3) में आप अपील का राइट दे रहे हैं थ्रू दिस ऑर्डिनरी लॉ, ये हो नहीं सकता, बिकॉज दिस कैन ओनली बी डन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लफ्ज लिखा है अग्रीव पर्सन, ठीक है। अब देखिए, अब एक मफहूम तो ये निकलता है 184(3) का कि आप ऐसे मामलों में ना उलझाएं अपने आप को जो इनफरादी नौयत के हों। अग्रीड सर, जरा अग्रीड आपसे अग्री करें या ना करें, मैं जरा बात कर लूं इनफरादी नौयत की। अगर हम इनफरादी नौयत के केसेस फैसला करने लगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, रेकोडिक का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूं। रेकोडिक का आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। अगर ये हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूँ फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना आए। जी, मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए, मैं अब वजाहत कर दूं। अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें। मैं ये मेरा मकसद ही नहीं है। आप anyway, मैं ये आंसर कर दूंगा। ये बिल्कुल 184(3) के जो कंडीशंस हैं वो भी मैं आपके सामने पूरी कर दूंगा, और वो 2 कंडीशंस हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स में जी राइटली साइड से। अगर we can go back, independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is you have read the law now. इसके ऊपर आप बता दें कि और इसमें इसी के साथ एक सवाल ख्वाहिश साहब, इधर मुझे जरा 5 मिनट लगते हैं आप मुझे देखते नहीं सर, आप उसमें मैं आपसे सिर्फ इसी सवाल चलते हैं कि इस 4 में लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस का बेंच बना सकते हैं ना, तो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं ना 4 में। तो फिर 4 को 5 को इकट्ठा पढ़े तो अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। बस आप इसका भी जवाब दीजिए। बल्कि इसमें ऐड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे, जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे? डज दैट अगेन नॉट अमाउंट टू अ पावर being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ। फाइज साहब, टू योर राइट, हम ये भी देखेंगे थ्रू दिस पिटिशन देयर इज एन ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट
the act has been suspended. Whether in presence of that order, the full court can be constituted or not. ये भी जरा देखें. आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट काउंसिल, फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए. ठीक है, मैंने प्रोपोजिशन कर दी. ठीक है, आप आइए. कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा, आप अपना किस पिटीशन में जरा बता दें. तीनों में ख्वाजा साहब के साथ. जी, तीनों में ख्वाजा साहब के साथ. To write of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 में and 6 हम बैठे हैं. एक में आप 7 में मेरी हाजिरी हो गई. जी चलिए बताइए. Well, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the Parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are a number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court, at various point of time, has that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes. मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है. ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास. ठीक है, हम क्यों जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की? ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है. ठीक, मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं. मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया, दूसरे वाले में तो बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट. पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे. आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिसडिक्शन में आते, हमारे हाथ बहुत खुले होते. अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184(3) का इंतखाब किया है. My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. जजमेंट्स हावी नहीं होते हैं आइन पे. अच्छा, 189 पढ़ लें जरा. ये आप लोगों के जरा गलत फहमी क्यों है? 189, एक सेकंड 189 पढ़ लेते हैं साथ में. जरा पढ़िए 189. जी. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides a question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. लफ्ज है all other courts, not the Supreme Court. Yes. तो ये हमें हमारे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट्स ना साइड कीजिए. अब आपसे आईनी सवाल पूछा जा रहा है on all other courts, which means high courts and. Unless your lordship allows me to make a submission. Other courts की बात कर रहा हूँ. No, I will not be able. ठीक है. आपको सवाल दे दिया, आप जवाब दीजिए जैसे भी आप करना चाहें. Please, Lordship. If I may ask you, sir. Mr. Siddiqui, if I may ask you a question. Please, Lordship. It seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? That would be a fallacy. It will not be correct. So if a three-member bench, a five-member bench gives a judgment, can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us?
Surely horizontal stare decisis does apply. It's a well settled. What would you say to that? But I would make a humble submission that the judgments of the superior courts, particularly of the Supreme Court, are a binding precedent on the subsequent courts constituted as a benches or a full court. And unless your lordship, in your lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value. And it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your lordship are not bound by the previous judgment would, with respect. मेरे ख्याल में आप मेरा सवाल समझिए नहीं सही। मैं आपको आ रही हूँ सर, मैं उधर आ रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए। यकीनन 5 मेंबर बेंच का जजमेंट 3 मेंबर बेंच पे बाइंडिंग है, यकीनन। अब हम आर्टिकल 189 की बुनियादी बात कर रहे हैं, अदर कोर्ट्स। अगर ये बात है तो ये अब फुल कोर्ट, इससे बड़ी तो फुल कोर्ट नहीं हो सकती है ना। हमारे ऊपर प्रेसिडेंट लागू नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। अगर यही इशू किसी लार्जर बेंच ने फैसला कर लिया होता वो हम पे होगा, मगर एज अ रूल अदरवाइज जजेस डिसेंट भी नहीं कर सकेंगे ना, वो तो बाइंडिंग है, डिसेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आप जरा वजाहत में ये कर रहा हूँ, ये नहीं है कि 4 मेंबर बेंच डिसरिगार्ड, 2 मेंबर बेंच डिसरिगार्ड कर देगा 5 मेंबर बेंच के फैसलों को। बिल्कुल ये मेरी, आप इसका मतलब वो बात समझ नहीं पाए अदर कोर्ट्स। मगर अभी तो वो मफरूजों में हम नहीं जाना चाहते हैं, ये जो मौका है इस पे पूरा कोर्ट बैठा है, तो ये कोई प्रेसिडेंट जब आप साइड करने निकलेंगे तो वो प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करेगा जब तक आप आर्टिकल 184(3) का दरवाजा नहीं खोल पाए। ये इम्तियाज साहब, इसको मैं जरा सिंप्लीफाई कर दूं एज आई हैव अंडरस्टूड। ये पूरा लॉ पढ़ लिया गया है, इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं। एक, पहले चीफ जस्टिस के पास कुली इख्तियार था कि डिस्क्रिशनरी चॉइसेस करे, ठीक है ना, उसको पार्लियामेंट ने डाइल्यूट कर दिया, रेगुलेट कर दिया। दैट्स ऑल दैट द पार्लियामेंट हैज डन, कि उन्होंने 3 जजेस को इकट्ठा कर दिया, कोई बाहर का कोई भी नहीं आया। इट्स स्टिल द चीफ जस्टिस एंड द 2 सीनियर मोस्ट जजेस। इसमें तो किसी का भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि जो इंटरनल या इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस है वो मजबूत हो रही है। सेकेंडली, एक राइट ऑफ अपील उसको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके पास पहले कोई राइट नहीं था। नाउ इस 2 चीजों के अलावा इस पूरे कानून में कुछ नहीं है, तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स आप पिटिशनर का वायलेट हुआ है जिस पे आप 184(3) में आए हैं? ये तो अगर योर लॉर्डशिप्स हैव हेल्ड, सुन ले, अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म किया है, ये तो आपको सराहना चाहिए। ये तो आपके बल्कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करेगा। हाउ डज दिस respond to this? May I respond? और सदीकी साहब, इसी में मैं ऐड कर दूं, सवाल ये है कि अगर आपके मुताबिक चीफ जस्टिस की अनलिमिटेड पावर्स ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर जिस तरह माय लर्नेड कॉलीग इज जस्ट मेंशन्ड कि अगर वो विटल डाउन कर रहे हैं पावर चीफ जस्टिस की, एक की जगह 3 लोग 4 लोग मुशावरत के साथ चलेंगे, तो एकदम इसलिए कि चीफ जस्टिस की पावर कम, इंडिपेंडेंस जुडिशरी एट स्टेक हो गई है। ये नहीं देख रहे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो बढ़ गई है, कि एक कंसेंसस से आगे चलने का इंतज़ाम हो गया है कि आप लोग सोचें कि आगे कैसे चलना है, कोलिजियल तरीके से चलना है। सारी दुनिया में बहरहाल ये हो रहा है, कहीं दुनिया में चीफ जस्टिस नहीं मास्टर ऑफ द रोस्टर है, क्योंकि अब सब जगह कहीं जाएं तो बैलेट होता है साल के शुरू में, कहीं सारी फुल कोर्ट बैठता है तो फिर चलता है, कोई चीफ जस्टिस के बाद मुंजमद नहीं है ये पावर्स चलाने की। तो ये हो रहा है, तो इंडिपेंडेंस तो इससे बढ़ रही है जुडिशरी की। एक चीज़ तो इस चीज़ को ज़रा देखिए कि इंडिपेंडेंस बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिए चीफ जस्टिस की ओमनीपोटेंट पावर्स के साथ, कि जैसी चीफ जस्टिस की पावर को हम छेड़ते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, इसका भी जवाब जरा दीजिए। फंडामेंटल क्वेश्चन हियर इज हु कैन डू दिस? Who can do this? That's what I'm saying. I mean, is it a function of the
granted by the Constitution. Is it the function of this, the Supreme Court? It is a function, or is it the function of the Parliament? And if the Parliament exercises a function of the Supreme Court, then it is an intrusion in the independence of the judiciary. As I have understood, is your argument? I am saying. सिद्दीकी साहब एक इसमें जरा मैं ऐड कर दूं 191 आप पढ़ते हैं ना तो 191 में लिखा है सब्जेक्ट टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर बना सकते हैं तो 191 तो ये इन्विजिज करता है कि कानून हो सकता है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रेगुलेट करे पार्लियामेंट का तो नहीं हो सकता सुन लीजिए नहीं और कहाँ से कानून लाते हैं आप हम पार्लियामेंट से लाते हैं पाकिस्तान में कानून जजमेंट लॉ अच्छा नहीं लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ कन्वेंशन सुन लीजिए टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से लॉ एक एग्जिस्ट कर सकता है आइन मानता है कि ऐसा कानून हो सकता है जो कोर्ट के प्रोसीजर को रेगुलेट करे अब सवाल आता है वो कॉम्पिटेंस कहाँ से आएगी पार्लियामेंट तो आप हम एंट्री 55 में चले जाते हैं कि ऐसी पावर वो दे सकता है कि नहीं अब इसको ज़रा ओवरऑल स्कीम में देखिए कि हमारे पास ये जो सेक्शन 7 पढ़ा जा रहा था ये वगैरह हमारे पास अर्जेंट लगते हैं कितने लगते ही नहीं केसेस ये आम रोज़ाना की एक शिकायत है कि अर्जेंट केस सुप्रीम कोर्ट में लगता ही नहीं है चीफ जस्टिस साहब नहीं लगाते कोई केस चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक बेंच बना के कोई केस कर देते हैं अच्छा फुल कोर्ट नहीं बैठता अवाम के केसेस हैं अवाम का एक पूरा फोरम है पार्लियामेंट वो अवाम कह रही है और वो पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई अपने सिस्टम को ठीक करें और आपका सिस्टम 14 दिन में एक अर्जेंट लगाए ये बात गलत हो गई हमें करना है हम सो जाएं हम ना बनाएं केस हम कोई केस ना लगाएं हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं ये ठीक है पार्लियामेंट जो उसी अवाम के जिनके मुकदमे सुनने हम बैठे हैं वो कहता है कि ये सिस्टम बना दिया है प्रोसीजर 14 दिन में अर्जेंट केस लगाओ तो हमारी पावर पे और इंडिपेंडेंस पे कतगन आ गया है इसलिए कि हम 17 अनइलेक्टेड आदमी जिस तरह मर्जी अवाम के केसेस फैसला करें लेकिन अवाम जो पार्लियामेंट के थ्रू हमें बताए वो हमारे रास्ते में रास्ता आ गया 55 एंट्री सारा सवाल एंट्री 55 का है एंट्री 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकते उसमें बताइए कि क्या गलती है सिर्फ इतना सा सवाल है If your lordship allow me a breather सदीकी साहब एक सवाल I will answer all these चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए सदीकी साहब सांस my lord I would answer all these questions सांस लेने से पहले एक सवाल और नोट कर लें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा खड़ी ना जाए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट nowhere it is mentioned that the supremacy or independence of the chief justice I would answer this question. सर मुझे लगता है सारे मेरे कोलीग मेरे खिलाफ हो गए क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जबकि रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को पावर दिया चेंज कर दे सर एक रूल को चेंज कीजिए सुन लेना सर रूल के तहत अब रूल क्या होंगे अगर आप 191 पढ़ेंगे आप वो रूल बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के कि रूल स्ट्रगल सर ये हो रही है माय लॉर्ड कि कह ये रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ है पिछले अदवार में अच्छा इसकी I don't want to comment on that. इसकी it is not my stature it is not my function इसकी कहीं और मुमालिक में बात सुने प्लीज इसकी कहीं मिसालें मौजूद हैं किसी और मुल्क में कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं मैं उस तरफ आऊंगा अगर आप मुझे दें What the theme appears to be. मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इजाजत दे दें और आगाज कीजिए The theme appears. I just a sentence. Just one. One question. आप सिर्फ इतना बता दीजिए. Why 184(3? Why not 199 before the High Court? कौन सा फंडामेंटल राइट जो है your lordships in a number of judgment have held. जजमेंट तो बिल्कुल सही होती है सर देखिए आपको बताता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. Which? You can't just say it is. You tell us which one, we'll note it. ये आप मानते हैं बिकॉज ऑफ जो पीछे पास में 2 डेकेड्स में हुआ है इस तरह की रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी 100%. 100. I am a victim of it. एक सेकंड ना अब ये अब लेट अस जस्ट इसको छोटा कर देते अब आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था हम अनइलेक्टेड
इलेक्टेड जजेस जो है 15, हम बैठ के यही चीज कर ले तो ठीक होगा। तो फिर तो आप सिंपली आर्टिकल 191 के लैंग्वेज पे आ जाएं, सिर्फ उसी की इंटरप्रिटेशन आपको दरकार है। इससे मायने ये हुआ देयर इज नो फंडामेंटल राइट। आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा है, आप खुद अफेक्टी हैं, यही चीजें होनी चाहिए थी तो हम खुद कर देते। सिद्दीकी साहब ये सवाल लिख कर रहे हैं आप? पता नहीं हम तो बोल ही जा रहे हैं, आप हाँ करी जा रहे हैं। साथी खड़े ये कोई काम नहीं करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आर्टिकल 10A आर्टिकल 4 ऐसे नहीं किया, ये पढ़िए, एक पढ़िए और बताइए। I will first read article 4. I will first read article 4. For your starter, actually it is for your starter. आप ये whole of the act को ultra vires कहते हैं या there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ठीक है चलें। Mr. Siddiqui. His lordship, article 4. Mr. Siddiqui. Article 4. Please, your lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes, and that has been held by your lordships. It is not it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. सवाल तो हमारे सामने ये कि ये जो कानून है ये तो और ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं हमारे सिस्टम को और आम आदमी की जिंदगी आसान कर रहे हैं। सर देखिए मैं एक आपको मैं और वजाहत कर दूं, हम बहुत जजमेंट ओरिएंटेड बन गए। मैंने जो हल्फ उठाया है ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया, सर सुन तो लीजिए ना प्लीज कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं। आप इस मुखातिब हो जाए ना, I'm with you कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूं। मैंने हल्फ उठाया मैं आइन और कानून के ताबे हूं। प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूं, ठीक है। आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहूंगा आइन पढ़िए, अगर आइन के वो इन अकॉर्डेंस विद है, यहाँ तो ये चीजें ना करें। रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम लोग बैठ के लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो अगर एक बेहतरी पार्लियामेंट समझती है, एक बेहतरी लाई है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पे। वो ख्वाजा साहब चले गए, उन्होंने एक फंडामेंटल राइट का तस्करा नहीं किया। आपसे हम पूछ रहे हैं कि 184(3) पे आ जाइए, फिर 191 पे आ जाइए, फिर आर्ग्यूमेंट्स करिए। बहुत बुरा कानून है, मगर उसके दायरे में लाइए। I proceed? जी प्लीज। Article 4. I read, my lord. फरमाइए। To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the... Not go on to do, develop an argument. Well, allow me. No, why have you read Article 4? Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My Lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your Lordships. क्या साहब जरा प्लीज एक चीज क्लियर कर दें। आप मानते हैं कि ये बेहतरीन कानून यही होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था 191 में, यही प्रोपोजिशन। अब इसको जिस तरह माय लॉर्ड कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें। 191 पढ़ ले, उसमें अगर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है और सुप्रीम कोर्ट में है, शेल नहीं है,
It is not the right of the Supreme Court. अब इतना बता दें कि जो सब्जेक्ट लॉ है, क्या वो रूल्स, उनका स्टेटस उस पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से हायर है या लोअर है? That's the only. Thank you, my lord. I am indebted to my lord. This is the proposition. एक आर्टिकल 4 आप कह रहे हैं, दूसरा कौन सा आर्टिकल है वो पढ़ लीजिए ना सारे आर्टिकल इसके ऊपर आ जाए ना फिर आप। आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10 पढ़िए। आर्टिकल 10, सॉरी माय लॉर्ड, 9 ऐसे नहीं नंबर्स ना दें, बताएं ना। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आपकी कौन सी लाइफ लिबर्टी ले ली इस लॉ ने? सर हमारे चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप कर रहे हैं। वो मैं जानूं और यही आपका क्या ताल्लुक है? No sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to, I'm going to persuade your lordship this is not constitutional. तो बहुत ही नॉवल आर्गुमेंट है। जबरदस्त बहस की कि हमारे चीफ जस्टिस की पावर ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आर्टिकल 9 इफेक्ट हो गया है। Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the Supreme Court. मैं वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने आपको अपना वकील नहीं किया था। शुक्रिया। लोग ये ना समझ बैठे कि आप मेरी वकालत कर रहे हैं। I have to assist you the way the law in this country is developed. चलते आगे ना। सदीकी साहब, एक चीफ जस्टिस आपके नहीं है, इस कौम के हैं और कौम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को ऐसे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे होना चाहिए। आपने बताया आइन को भी देख लेना पहले। आइन तो कहते आइन के देखे बगैर, आइन तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा सब कुछ। सर दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप तो कहते हैं चीफ जस्टिस। नो आई से आप अभी तक ये डिफरेंस नहीं क्लियर। नो आई एम, अब या आप अलाउ करेंगे प्रोसीड करने तो करो। सब enforcement of rights of person कौन सी enforcement करना है? 9 के बाद 10 में क्या है? 10 में कौन सा है? नो ये तो अरेस्ट पर्सन who is arrested shall be detained। इस बात से हमारी सर मुझे आप प्लीज नहीं ये नहीं आपके, मैं सुबह से शिक 1 से शिक 260 तक पढ़ूंगा नहीं, सॉरी ये जो हमारा टाइम है ना इट्स पब्लिक मनी, ठीक है? आप ये नहीं कहेंगे मैं जो मर्जी आर्ग्यू करूं, आप उसकी हमें रेलेवेंस, सॉरी ऐसे नहीं आर्गुमेंट्स होंगे। क्या साहब, जब आप मान गए हैं कि ये बेहतरीन कानून है, चीफ जस्टिस के इख्तियार जो कुल्ली थे वो नहीं होने चाहिए थे, देवर उनका इस्तेमाल सही नहीं हुआ, अब उसके बियॉन्ड आप जाए, आप सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था, वो बता दीजिएगा। मैं नहीं मान रहा कि ये बहुत अच्छा कानून है, मैं क्या ये इसका ख्याल बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं कानून आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास कुल्ली इख्तियार हो। मैं नहीं चाहता, आपने दिया रूल्स के अंदर। नहीं ओहो, आप उसको छोड़ दीजिएगा ना। हमने छोड़ दी सर, आपने रूल क्या आपके नजदीक एक शख्स के पास अनफेटेड, अनब्रिडल्ड, अनअकाउंटेबल, अनट्रेमल्ड पावर होनी चाहिए? बहुत यहाँ पे the power has been given to the chief justice and two senior most judges। बहुत अच्छी बात है सर जो आप कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस साहब को बहुत पावर दे रहा है। लेट अस हैव अ लुक एट आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 तो देख लीजिए सर। एक सेकंड जरा इसका फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं बहस का। सिर्फ हमें पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि 184 पहले फंडामेंटल राइट्स वाजे कर दें, कौन सा वायलेट हो? योर लॉर्डशिप held that when a law is made or election is taken which violates the constitutional scheme, it is a violation of fundamental right. तो स्कीम में कौन सी प्रोविजन बताएं ना? सर मैं आपको, आप मुझे अलाउ करेंगे तो इजाजत बताइए। The law, the constitution requires under the constitution, and I will read the relevant article to some breather by your lordships, that in the context of the trichotomy of powers, the parliament will make its own rules, the executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. This आपने हमने जो आपसे शुरू किया था हकूक की बात, अब वो आपने तर्क कर दी। सर मैं तो आपको जवाब दूं। नहीं, जवाब ना दीजिए प्लीज, आप आर्ग्यू कीजिए, हम आपकी आसानी पैदा कर रहे हैं, बाद में जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि आप देखिए मैं भी वकील रह चुका हूँ, जब 6-7 सवाल आते हैं बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब आपने पहले जवाब दे दिया था, बिल्कुल कानून सही है,
मगर जब माय लॉर्ड ने सवाल दोबारा पूछा, अब आपने ठहर जाइए ना, जैसे विटनेस कहता है ना अगेन सेज, जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सुन लीजिए, आर्ग्यू आप कीजिए, आपका केस है, मगर बताएं बुनियादी हकूक कौन सा सलब हो गया ये बता दें बस। अगर आप ये अगर को एप्लीकेबल करने के लिए पहले हमें बता दें कि कौन से फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना चाहते हैं जो इन्फ्रिंज हुए हैं, पहले इस पे आइए, ताकि वाई नॉट 199 यही पावर हाई कोर्ट के पास है, वहां क्यों नहीं गए? सर मैं आपको नोट आप I am asking your lordship to recognize my fundamental right given in Article 9, 10, 10A. सर मैंने पढ़ा आपके सामने। चलिए बस यही आर्गुमेंट है आपका। नो सर मैं पढ़ रहा हूँ आगे। नहीं आप बता ही नहीं रहे, कोई प्रोपोजिशन ही नहीं डेवलप कर रहे हैं आप। My proposition मुझे आप my proposition is that the legislature is bound by the scheme of the constitution, and the constitution requires that जब हमने फैसला किया आपसे सवाल नहीं करेंगे। The constitution requires that the legislature will make its own rules. The constitution requires petition, ये आपने अभी बात की, मैंने नोट कर लिया। 3 different organs of the state हैं, they will function independent of one another. One will not make encroachment on the other. और यहाँ तक पहुँचने में हमने बुनियादी बातें तो पता है ना, आगे बढ़िए ना। It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament. ठीक समझ गए, अगला पॉइंट। And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the constitution, and if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. और जजमेंट है, आप नोट कर लें। मैं सर जजमेंट पढ़ने में नहीं चाहूंगा, दिस सो फंडामेंटल क्वेश्चन, ये देयर आर न्यूमरस जजमेंट्स। ये इस बात का तयन करना जी आपके पास इख्तियार है, जैसे मंसूर शाह साहब ने जिक्र किया, ये इख्तियार एक्सप्रेस होता है, या तो हम रेफरेंडम करा लें जहाँ हर मार्शल लॉ डिक्टेटर को 98.6% वोट हमेशा मिलते हैं। अच्छा 98 सुन लीजिए ना जरा प्लीज, तसल्ली रख लें। जी सर नहीं सुन, या हमें क्या पता लोगों को क्या चाहिए, उसकी अक्कासी उनके नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे करते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट करें उनकी मर्जी है, वो उसकी अक्कासी करते हैं। हम यहाँ तो कोई पोल अगर हम इधर खड़ कर मैं पूछ लूँ सबसे कौन से इन फेवर ऑफ दिस लॉ है, आपको कौन हक देता है ये करने का? आपको ये देता है कि फंडामेंटल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने बस 8, 9, 10 बस कोई आर्गुमेंट डेवलप कीजिए। हजूर ऐसे नहीं हुआ आर्गुमेंट। योर लॉर्डशिप इम्तियाज साहब एक दफा फिर एक चीज क्लियर कर दें, अगर ये कानून सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियार को डाइल्यूट करता है, आप समझते हैं कि ये अच्छी चीज है? ऑब्जेक्टिव अच्छा है, प्रोसीजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक सेकंड, इसका मतलब है इससे आपके और पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर राइट ऑफ अपील दिया जा रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, उससे वायलेट नहीं हो रहा है, उससे इन्फोर्स हो रहा है। तो अब आइन को मद्देनजर रखेंगे कि नहीं? सुन तो लेना। अब आपका सिर्फ क्वेश्चन ये रह गया है कि जी ये बहुत अच्छी चीजें हैं, आप अनइलेक्टेड जजेस कर ले, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती थी, भले आप रिफ्यूज भी करें वो फिर भी बेबस है। चले हम आपकी ये भी बात नहीं, बेबस नहीं है। एक सेकंड, अब आप बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली 191 पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब है नो फंडामेंटल राइट। मुझे अभी तक आपने ना आर्टिकल्स दिए हैं ना मुझे सबमिशन करने दिए। बताइए प्लीज बताइए। आर्टिकल 4, 9, 10, 10A फंडामेंटल राइट जो है उसको हम इन्फोर्स करना चाहते हैं। सर वो पढ़िए प्लीज। सर मैंने आपको कहा है कि when due process is not followed in making a legislation by the parliament, forget about the objective, and if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then
the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. अब समझ आई आपकी बात। वो ये कि कानून का ऑब्जेक्टिव तो शायद आम आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर जो अडॉप्ट हुआ है ये हमें बनाना चाहिए था, पार्लियामेंट ने क्यों बना दिया, ये सवाल है। अब ऑब्जेक्ट is not access to justice fundamental right now recognized as such? Yes, it is. Is not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed, it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset in the entire constitutional scheme? It would be unfortunate unless it is done with valid reasons. In a system based on the common law UK tradition, is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US constitutional law is not written in the US Constitution. As sitting as a full court, each time a full court is constituted, is that like a tabula rasa, a blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution. That independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of, speaking for myself, but putting it as a question to you, of whether it is the Chief Justice or the 3-member committee. Who is Parliament to say it's a 3-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? Why shouldn't it be a 7-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. That is, they are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say, no, 5 judges is okay with us? 5 judges is too much. 1 judge is too little. These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today, Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section Section 4. Tomorrow, Parliament says, "Ji, ek law bana deti hai ji. I don't know. Family matters are to be heard by a bench of 9 and 7 judges." Is that part of access to justice? Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना वो बना हुआ है, वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं लिखा था, वो राइट दे दिया, पेनम्बरा में आ गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखिए उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है, वरना नहीं लिखा, और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है। Is this the state of the law in Pakistan? It is not. Is this the state of the law in terms of even full court judgments? But as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution, the question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? Indeed, my lord. With respect, अगर देखें सिद्दीकी साहब, I have not, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ। आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें। आप सवाल नोट कर लीजिए, आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाहते। फिर आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके। आप चलें थोड़ा बढ़ा लें आगे बात को। With great respect to my brother,
independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. So, ओहो, एक सेकंड, अच्छा लॉ है. इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके टू अचीव सर्टन आउटकम्स इन केसेस and by constituting benches, that is a complete erosion of independent judiciary. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, dunya bhar mein, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं, चीफ जस्टिस नहीं बनाता. और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है तो वो शायद इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं. या बैलेट होता है या रेफरल. कंट्रीज लाइक नेपाल, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर पहले बैलेट होता है कि बेंचेस कैसे होंगी. चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं कि केस आज आया है और कल मैं अपनी मर्जी का एक बेंच बना दूं इस केस को सुनने का, जिसको मर्जी मैं बिठा दूं. ये चीजें तो ये सारा कानून जो है ये वाजे कर रहे हैं इन चीजों को, इंडिपेंडेंस को तो बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है. आपने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स की बात की जा रही है. आपकी जजमेंट अपनी है. जवाब दे रहे हैं, आप दलाइल नहीं देना चाहते हैं, आप जवाब ना दें, दलाइल दे दें. आप इस तरह कीजिए कि आप अपने दलाइल एस्पेक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें. वर्ड आर्टिकल 191 में लॉ लिखा है, whereas for example in relation to the review jurisdiction उसमें act of parliament लिखा है. It seems to me that even now if you go literal text of the constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judgment or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is Constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, is the question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal because both are incorporated in law. So the question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law, co-equal, can Parliament make, in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. Seems to me that even if we literally look at Article 191, perhaps it is unconstitutional. जैसा फिर अगर आपको कोई दलाइल नहीं देना है, और नहीं सुन लीजिए ना, आप तो के जवाब ही दे रहे हैं, तो आप अपनी पिटीशन तो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है. आप कोई दलाइल, आप दलाइल देके खत्म कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे, आखिर में हमारे जहनों में होंगे, ठीक है, या हम अपने जजमेंट्स में लिख देंगे, हर जज अपनी राय लिख देगा अपनी मर्जी से. आप प्लीज अपने दलाइल दीजिए. May I proceed? जी प्लीज. Sirf, I'll only make one observation. It is settled law by law that the Parliament has the power to make our judgments ineffective. And this is a precedent which is embedded in our constitution. If they are lawfully empowered, if the Parliament is lawfully empowered, not otherwise. फिर आप बहस करने लगे. But surely that आप सुन तो लीजिए ना बात को, फिर आप नोट कर लें भाई, आप आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप जज नहीं हैं, आप हर चीज का मैसेज जवाब दे रहे हैं. May I proceed? Please do so. आपको इसके एक जरा supplemental. आप चलें, शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए. My learned brother asked you, surely that rule
that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the Constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled. Yes. So देखिए साहब जरा एक क्वेश्चन आपका कहना ये है कि 3 members अगर बैठ के benches बनाएंगे as per this law तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर के खिलाफ है। तो क्या हम 17 जजेस बैठकर जब रूल बनाएंगे हम कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेके एक शख्स के हवाले कर दे या ऐसा रूल बनाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सर कर तो सकते हैं। आपने अगर एक बंदे को अनलिमिटेड पावर्स है माय लॉर्ड। जस्ट 1 minute, may I request my brothers, इनको बहस तो करने दीजिए, हम सब सवाल बाद में कर लेंगे। आप प्लीज अपने हिसाब से अपने आर्गू कीजिए। Mr. Siddiqui, if I may just add, it is not a question of ये law गलत है या ये law बुरा है या अच्छा है. The fundamental question here is of competence. Yes. Who is competent to make whatever it may be called the rules of the law? If ये तो आपने आर्ग्यू ही नहीं किया अभी तक। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, आप हमें रोकें, आप कहें मुझे आर्गुमेंट सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट। आप बताएं ना, हमें शिक दें कायन की। डायरेक्ट उसी पे आ जाए मेरे ख्याल में। इसी पे आ जाए, यही सवाल है। देखिए मैं आप देखें, आप हमसे ज्यादा समझते हैं, वकील हैं, यकीन हम लोगों की अपनी अपनी राय हैं, ठीक है। मुझे आप जरा सुन लीजिए ना 2 मिनट जी। वो हम अपने, अगर हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे, अलग अलग राय लिख देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है कि हम सवाल के तौर पे अपनी राय आपको दें और फिर कोई हम दूसरा जवाब दें। हम सिर्फ सवाल पूछ रहेंगे आपसे, आखिर में आप अपने दलाइल दे दीजिए, हम उसको नोट कर लेते हैं। हमें पसंद नहीं आए तो फिर हम सवाल, इतने पसंद आए शायद सवाल ही ना पूछें, नहीं पसंद आए 2-4 सवाल पूछ लेंगे। अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए जी। Lord, the concept of trichotomy of power is a concept well known to your lordships. The Constitution, what are those provisions which relate to the trichotomy of power? And let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. जी। Article 176. जी पढ़िए। Lord, Article 176 says the Supreme Court shall consist of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan, and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, Parliament, or until so determined as may be fixed by the President. What this article says is that one of the first steps in the appointment of the Chief Justice is the centrifugal force, is the linchpin, and once he's appointed and the rest of these members are not appointed, the Supreme Court will be there. And then the judges will be appointed. Please chaliye na, don't state the obvious, it's written there. This is really, no, sorry to say, आपको पता है अवाम कितनी पैसे खर्च कर रही है। सर मैं ऐसी बातें तो ना करें हजूर। सर आप मुझे आर्ग्यू, तो आप एक तरफ कहते हैं आर्ग्यू करें, दूसरी तरफ आप मुझे आप कह रहे हैं ये आपने पढ़ लिया। I am interpreting, I am just giving your interpretation of the obvious. Supreme Court comprises of Chief Justice and Judges of the Supreme Court. Obvious. No, it is not. It's not. It is not. I am giving you, your lordship, a circumstance that let us assume, to understand the dynamic of Article 176, that assume there's a Chief Justice and there's no other judge. The question is, will the Supreme Court come into existence? The answer is yes. I will not answer your question. We are not here. We are not here in a theoretical realm. Please don't. No, now this is not fair. We are not here in a theoretical realm to discuss what may or may not happen. We are faced with a particular law. You challenge that law. Argue that case.
Let us proceed further. Let us go to Article 87. Article 87 relates to the Parliament and the Senate. Each house shall have a separate secretariat. It is provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both the houses. Sub-Article 2, Majlis Shura Parliament may by law regulate the recruitment and condition of service of person appointed to the secretarial staff of either house. Until provision 3, until provision is made by Majlis Shura under clause 2, the Speaker or, as the case may be, the Chairman may, with the approval of the President, make rules regulating the recruitment and conditions of service of person appointed to the secretarial staff of the National Assembly or Senate. So this is the rule-making power. Let's go to Article 67. I will not allow it, and I might even start imposing costs. Let's go here, let's go there. What's the relevance of Article 187? Don't do this. Sorry, please don't do this. Please don't do this. It shows that the Parliament as a separate organ of the state profound as the power to make rules for its internal working. And this is the theme which is contained in Article 67. No. ये रूल्स सिर्फ बनाएंगे किसके लिए? सेक्रेटेरिएट हमने तो नहीं बनाए लिए। अपॉइंटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए और उसके लिए तीन चीजें लिखी हुई हैं साहब। सर, मैं आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का अलग सेट ऑफ रूल्स है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, और ये रूल्स जो हैं आप सुप्रीम कोर्ट वाले पे आ जाइए ना। हम पार्लियामेंट के रूल्स जब वो चैलेंज करेंगे ना आप कि उन्होंने गलत बनाए वो देख लेंगे। अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 191, उसकी तशरीह कर दें, खत्म। Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now, the law is a word which is different from the act of the Parliament. It may... Law is different from act of Parliament? Yes, it is. Law is this is something I've never heard before. Yes, sir. Let me allow me to assist you. Law encompasses a lot of other things than the act of the Parliament. Law includes with it itself usage having the force of law. Refer to Article 8. In the same sentence, the Parliament Ain has used Constitution, law, and rules. Please, I'm not going to expect this kind of argument for the Supreme Court. Sorry, this is not on. I'm giving your Lordship extraordinarily good argument. If your Lordship is inclined to ridicule me like that, I will not. I will withdraw from the case. I don't allow this. Please, that's your choice. Your Lordship has constantly thwarted my arguments again and again. Have a patience to hear my arguments. ये बताइए जो बेचारे लोग जेल में पड़े हुए हैं ना, छोड़ेंगे नहीं हम। मैं बचा रहा हूँ, मैं से हूँ। हाँ नहीं, मैं भी नीचे से कौन फैसला करेगा? एक चीज होती है अमेरिकन आइन में, वो लोग करते हैं क्या होता है, फिलिबस्टरिंग, कि जी चलते रहो। अगर आप समझ ही रहे हैं कि इस तरह से मैं ऐसा कर ही नहीं रहा। अभी आपने मुझे आपको हम सुनते हैं मगर आप हमारी बात को सुनना पसंद नहीं फरमाते हैं। तो ये बात आधे घंटे से सुन रहा हूँ। चलें। If I've got you correctly, if I've got you correctly, you saying that law is not only the act of the Parliament, because there are rules of 1980. If there were no rules, fine, they could have enacted that law. Because they have the rules of 1980, so that's why they were not empowered to pass any law which was contrary to it. I would not go to that extent. Assume there are no rules. The question is whether the Parliament can frame this law or not is a question which probably is not free from doubt. I would still say the Parliament can't do it. Rules are imperative. If your Lordship would look at Article 8, if your Lordship would look at Article 8. इम्तियाज साहब, Sir.
ये सिंपल हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन लॉ जो इस्तेमाल हुआ है, this excludes an enactment of the parliament. No, my lord, I'm not saying this at all. I say law has a larger composition than the act of the parliament. We are, at this moment, we are only concerned with an act of the parliament. Your lordship has asked me a question, what is the scope of the word law? Yes, and I'm trying to assist your lordships. In this case, it's not relevant because the law has already come. My lord, I am saying that this law, your lordship's assumption is that since the word law has been used in Article 191, therefore the Parliament can make this law. I am trying to show to your lordship it is not the case. I'll take you back to my original question, Please, lordship. where under a constitutional power, this court has framed rules. Do they stand on a higher footing than ordinary legislation? Yes, my lord, there are judgments to that effect rendered by your lordships. Can I ask a question as well? When the Constitution makes a distinction in different articles using the Act of Parliament and using the word law, so how do you see that distinction? So for example, in 191, they could have said subject to the Constitution and Act of Parliament, but instead of saying that, they've used the word subject to the Constitution and the law. There are other provisions of the Constitution which don't use the word law, but use the word Act of Parliament. So there is a clear difference between an Act of Parliament and the word law. So what do you understand by the word law? Because this provision of making rules is subject to the Constitution and the law. The framers of the Constitution were conscious of the distinction between an act of the Parliament and the law. While they envisaged that law includes judge-made law and other variations of the law, Act of Parliament was specifically used in a particular sense. And they can't be used interchangeably. And whether this enactment, Act of Parliament, cannot be considered as law? My lord, not a law? In ordinary parlance, there may be impression. No, I'm talking specifically but about this. Within the context of Article 199, this is not law. It is the Constitution and law. It would mean law in a broader context. And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Usage or customary practice having the force of law in terms of Article 8, and judge-made law, the judicial precedents which your lordships have given time to time to the people of Pakistan to show to them what law is. I got your point. You say that every usage, custom can be considered as law, but cannot be considered as Act of the Parliament. Yes. Whereas Act of the can be considered as Act of the Parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the context in which the word law has been used in the phraseology of Article 191 manifests that this is not an ordinary act of Parliament. It means the law which has been rendered from time to time in the form of judgments of the Superior Court. Do you think or are you arguing that it is the exclusive power of this court under Article 191 to make rules? Absolutely. And those rules, once that power has been exercised, whether by specifically making rules or through law that is judge-made law, ordinary legislation cannot override that because there is no legislative competence to do that in terms of item 51. It is precisely my argument. I will go a step further. Vicky, before you do that, that's very interesting. I was just recalling the equivalent provision in the Indian Constitution is Article 145 relating to the rules of the Supreme Court. Now this has very interesting language. It is subject to the provisions of any law made by Parliament. Yes. The Supreme Court may from time to time with the approval of the President make rules, etc. So here, in relation to law, they are clarifying it is statute law.
or made by Parliament. Whereas in our case, it is just law. So the rules, the law includes any decision of the court which sets out the practice and procedure of the court. And to that extent, statute law cannot override it, cannot supplant it, cannot whittle it down until the court itself revisits that law on the judicial side. It cannot even be done by the full court sitting on the administrative side. We go back because there is a certain equivalence between what the court can do on the administrative side to make its rules and what Parliament can do maybe in terms of statute law. But it seems to me that use of, speaking for myself, the use of the word law includes case law or judge-made law. Even the full court on the administrative side cannot overrule that. So this rule, which is supposedly overruled by sections 2 and 3, master of the roster, that is judge-made law. And therefore, even the full court sitting on the administrative side can't do it unless the court revisits that principle on the judicial side. Imtiaz Sahab, how will we read into this provision 191? It's a constitutional provision. We'll have to read into it that the law only means judgment law. फिर अगर आपका आर्ग्यूमेंट ले लिया जाए तो इस law expression say enactment is excluded, but even a usage or a custom override a rule made by all of us. My Lord, my submission is as follows. Allow me just follow your Lordship's consumption. My Lord, the Constitution as I read it, and I make submission with respect to your Lordships, the Supreme Court of Pakistan has held that notwithstanding the rules and the rules which are framed under the constitutional scheme, they are on a higher pedestal than ordinary law. Even conventions which have been judicially recognized by the superior courts are constitution by themselves, and the Parliament cannot encroach upon them. This is next point. इम्तियाज साहब पहले इस fundamental उसको clear कर दें. Do we have to read into the expression law that is it is only confined to the judgments of this court and the precedent? Your Lordship will appreciate the contours of the word law, which has been used with reference to the Constitution in terms of Article 181 and the scope of that word. And if your Lordships come to the conclusion that this includes the case law rendered by the superior courts have said that even conventions, if they are proven before the court in the constitutional domain, they are the Constitution themselves and violation cannot take place. ये जो law है आपके ख्याल में ये 191 में नहीं आता ये किस कैटेगरी का law है ये category sir unconstitutional law है ये आते ही नहीं है. In which category you will fall this law because you this is Act of the Parliament 191. The definition of law is something else which you are trying to. This is an Act of the Parliament. It comes out of the scheme of the word law, and there are other sources How of it law. is out of the word scheme of law? What is your argument on this point? My argument is that to isolate the word law with reference to Act of Parliament alone. What about Article 140 and 141, where is also the word law has been used? Yes, what I'm saying this is that Article 141 and 142 article of the Constitution in which the laws are made by the Parliament. But under Article 141, the law is mentioned. If it is not the law, then what is the category of this law? Because Article we are going to develop a new jurisprudence in this case. The third category of law. Article 141 has to be read with the fourth schedule, and it cannot be read in isolation. What it means is that these are the laws which will be enacted through Act of Parliament.
No. If you will read Article 142, if you will read Article 142, सिद्दीकी साहब अगर कॉम्पिटेंस की बात है ना, कॉम्पिटेंस की अगर बात जो बार बार सवाल हो रहा है, तो एंट्री 55 और 59 को पढ़ लें, उसमें तो पावर है ना कि पावर्स पर लॉ आ सकता है। सर लॉ एनलार्जमेंट के लिए फॉर एग्जांपल पढ़े ना, सप्लीमेंटल पावर्स भी दे सकता है। सर ये सप्लीमेंटल पावर नहीं है, ये बहस आप ये इंटरनल वर्किंग को इंटरफियर किए जा रहे हैं। तो आप ये बहस करें ना कि ये सप्लीमेंटल पावर्स के अंदर है या नहीं है, या एंसिलरी पावर्स के अंदर है कि नहीं। आप तो कह रहे हैं लॉ ही नहीं बना। सर मैं बताता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये लॉ ये हो कि आपको फॉर एग्जांपल इलेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट अपील दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, या सर्विस मैटर्स में दी जा रही है, तो वो इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन होती है, लेकिन आपकी इंटरनल वर्किंग के अंदर लॉ फ्रेम नहीं हो सकता। देखिए ना, एक सेकेंड, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर हम फोकस कर लें तो बड़ी जल्दी मामला हल हो सकता है। एक तो ये है कि लॉ इन्विजिज किया 191 ने, तो कानून आइन रिडंडेंट नहीं होता, कुछ चीज़ कानून ऐसा हो सकता है। उसी आइन के अंदर लिखा है कि 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकता है, 59 में लिखा है और एंसिलरी मैटर्स भी देख सकता है। अब आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई बना सकती है 55, 59 और भी शायद एक आध प्रोविजन एंट्री के तहत जो रेगुलेट कर ले अफेयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर क्योंकि 191 इन्विजिज करता है कि ऐसा कानून हो सकता है, तो सुन लीजिए, तो वो कानून रिडंडेंट तो लफ्ज नहीं हो सकता ना 191 में। एक कानून ऐसा हो सकता है कोई जो रेगुलेट करे प्रोसीजर को, उसकी पावर 55 और 59 में दी हुई है। आपका ये बहस हो सकती है कि सर इसमें वो पावर नहीं निकलती फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल लेजिस्लेचर की, वो आप बता दें हमें बस सीधा। सर दिस item 55 first makes a prohibition। वो हमने पढ़ लिया, मैं आखिरी लाइन सर की बात आपने पढ़ लिया है, मैं भी सारी जिंदगी I've been rubbing shoulders with lordship। This creates an impediment on the word jurisdiction and power। इसके ऊपर तो फुल स्टॉप है। इसको पूरा पढ़िए ना मिला के, बिट्स एंड पीसेस सर मैं दोबारा पढ़ूंगा तो वो कहेंगे कि दोबारा पढ़ रहे हैं आप। नहीं, इसमें आगे जाके jurisdiction and power of all courts except the supreme court। ये jurisdiction and power पे नहीं आप लॉ बना सकते। आगे चलें। With respect to any matter in the list and to such extent as is expressly authorized by the constitution, the enlargement of jurisdiction of the supreme court। ये बना सकते हैं ना, enlargement हो सकती है आगे बस। Enlargement के लिए भी there has to be a specific, ये जो language used है, specific authorization। Yes। Now where is the specific authorization? आगे पढ़े, अगर आपसे आगे पढ़े enlargement and the conferring thereon of supplemental powers। सप्लीमेंटल पावर्स पार्लियामेंट लगा सकता है, दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को। सप्लीमेंटल पावर्स ये है कि आपको वो कह सकता है कि आप फाइनेंस से ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या आप ये लिटिगेंट को कोई अपील आई है तो उस पर ये टिकट लगा के पैसा सुप्रीम कोर्ट में डिपॉजिट हो सकता है। ये सप्लीमेंटल पावर्स हैं। वो ये नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस साहब अकेले फैसला नहीं करेंगे, हम नहीं मानते इस बात को। पावर दे रहे हैं कि चार और, वो ये नहीं कह रहे, वो रेगुलेट कर रहे हैं पावर ऑफ द चीफ जस्टिस। इम्तियाज साहब रिलेटिंग टू जुरिसडिक्शन एंड पावर्स। दो पीस में पढ़े ना आप प्लीज, देखिए इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसका ये वाला इंटरप्रिटेशन है इसका, एज सच एक्सटेंट as is expressly authorized by or under the constitution the enlargement of the jurisdiction of the supreme court। एक and के बाद जो है ना वो conferring thereon of supplemental power। अगर इसको 1 के साथ आप मिला के पढ़ते हैं तो subject to constitution and law, तो ये वाली जो बात दो हिस्सों में है, इसको आप सप्लीमेंटल पावर को आप थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दें तो वो एंड है, वो और नहीं है। ये कह ये रहा है, ये आर्टिकल 191, अगर आप आर्टिकल 191 को along with article 141 और 142 और आइटम, आई एम जस्ट आस्किंग आर्टिकल 191 जो मेन इशू है आर्टिकल 191 का आ रहा है ना, कि वो लॉ ये वो नहीं है, ये कोई और लॉ है, बट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। Whenever this loves use subject to, what is the interpretation of subject to? सर सब्जेक्ट टू का मतलब है कि जो लॉ में है वो रहेगा, इसके अलावा आपने कोई चीज बनानी है तो आपने रूल और भी आप बना सकते हैं। वो कह ये रहा है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अलावा अनऑक्युपाइड डोमेन है तो फिर आप इसके अंदर
कर सकते हैं कोई फ्रेमिंग ऑफ लॉ, और वो ये है कि आपकी आपने बात का जवाब है ना, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। चले कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट नहीं हुई, एंड लॉ, तो जो लॉ उन्होंने बनाया है whatever it may be जो आप अंडर चैलेंज है, yes, उस लॉ के मुताबिक आर्टिकल 191 में वो लॉ बन सकता है या नहीं बन सकता है? सर वो एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन के रेफरेंस से बन सकता है। एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन बन सकता है, बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने चीफ एक्ट के तहत उन्होंने राइट ऑफ अपील दे दिया आपको जो नहीं थी, रिव्यू को स्ट्रॉन्ग कर दिया, कमेटी बना दी, तो अब इसमें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन किधर है? ये है बुनियादी चीज आर्टिकल 184(3) में जो आपसे पूछ रहे हैं ना। दिस इज नॉट अ वायरीज अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट, वेयर इफ यू कैन चैलेंज द वायरीज ऑफ द लॉ, बट हियर इट इज आर्टिकल 184(3). दिस इज द enforcement of fundamental right. Right of appeal is against the fundamental right, then okay. इम्तियाज साहब एक और चीज को गालिबन कंफ्यूज कर रहे हैं। There's a difference between इख्तियार of the Chief Justice and the jurisdiction and power of the Supreme Court. इस पूरे लॉ ने सुप्रीम कोर्ट के किसी इख्तियार को नहीं छेड़ा। छेड़ दिया सर। It's only the Chief Justice, and the Chief Justice is Supreme Court. सर इस लॉ ने आर्टिकल रूल 9 को ऑब्लिटरेट कर दिया है, और आपने इंडिविजुअल लेवल पे जजमेंट दिए हैं जहाँ पे रूल। एक सेकंड इम्तियाज साहब, सर आप मुझे एक सेकंड ना कीजिए, मुझे सुनने मेरी बात। सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार डाइल्यूट हुआ है ना सर। आपने चीफ जस्टिस साहब ने खुद अपनी जजमेंट में कहा है कि रूल 9 जो है उसके तहत रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती जब तक चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं, और ये जजमेंट आने के बाद ये फील्ड अनऑक्युपाइड नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द अदर जजेस? नो। तो फिर कैसे रूल में सुप्रीम कोर्ट को अलग करके इख्तियार दिया गया? सर आपने सरेंडर किया है, इख्तियार देना है कलेक्टिव। आपने मुख्तार बनाया चीफ जस्टिस को कि हम चीफ जस्टिस की इस बात को हम ऑथराइज करते हैं। क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया? सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया है। 180 में आप फॉलो करते रहे हैं जो जजमेंट आपने जजमेंट दी है कि चीफ जस्टिस साहब बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। जजमेंट की बात कर रहा हूँ, जो जजमेंट्स आई थी वो इस एक्ट से पहले थी, और वो दैट वाज बेस्ड अपॉन द रूल्स। अब एक्ट ज्यादा बड़ा है और बड़े। सर आप जजमेंट तो पढ़ ले, आपने कहा है कि ये रूल्स जो हैं ये हायर पेडिस्टल पे हैं, पर वो ये आपकी जजमेंट है। साहब आप फुल कोर्ट के सामने बहस कर रहे हैं, जजमेंट कितने मेंबर्स की है? सर जजमेंट कितने मेंबर्स की है? 10 मेंबर्स। 10 हम कितने हैं? 14। अच्छा इम्तियाज साहब ओवररूल करना पड़ेगा सर, रीजन देके। इम्तियाज साहब नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बट रीजन। इम्तियाज साहब ठीक है, not that easy. इम्तियाज साहब, I wish things were as easy as your lordship has put it. It is not. Sir, अल शमरेज केस के बाद पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की एक स्टैट्यूट में। अल शमरेज केस का इफेक्ट खत्म हो गया ना, जजमेंट को नहीं हाथ लगाया। ओहो, उसका that law finished to an end, and that is the authority of the parliament. सर आप कोई और बात कर रहे हैं, वो बात कानून की है सर। allow me to assist your lordship. You see, if this court interprets the law in a certain way, an ordinary law, and the parliament changes that law, nobody has stopped them from doing that. With retrospective. Yes, the distinction here is that here the rules which have been framed in 1980 in exercise of powers under 191, Article 191 of the Constitution, they are not interpreting any ordinary law which can be changed by ordinary legislation. This is what my submission is, the same issue. That is the... This power has been exercised under the Constitution, and it says so specifically in exercise of powers under Article 191 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court makes the following rules. So it's not
that there is one ordinary legislation which is interpreted by the Supreme Court, and the Parliament says, well, we want to change the law, they can change the law. Because they had made the law, they can change it. Likewise, if the Supreme Court has made the rules and the Supreme Court decides to change them, so be it. That's the precise submission I'm trying to make. With the doctrine of separation of powers and trichotomy of powers. It's as simple as that. My Lord, an event arose when my Lord the Chief Justice the benches were reshuffled. And a judgment... argue kariye apna case. And aap apna case argue kariye. My case has been... allow me to give your Lordship a judgment on the issue. Ab kitna waqt aur lenge? बस 15 मिनट और दे दूंगा अगर क्वेश्चंस ना हो तो Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161. Malak Asad Ali case. PLD? Malak Asad Ali Federation of Pakistan. This is page? This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. Lord, the question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan. And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your Lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established has the same binding effect as a constitution. I don't want to read the rest of the paragraph. Your Lordship has already said. So, now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made, because there's a convention, the Chief Justice upon the don't interrupt till I finish the question. Upon retirement of the Chief Justice, have I understood you correctly? No, my Lord. Your Lordship is not. Then your Lordship will have to read the judgment. That judgment says that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a past practice. And elaborate arguments have been given. And it is... Convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justice. So it becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the... बात हो रही ना असूल की बात हो रही ना असूलों की बात हो रही है असूल वो है जो मेरे लिए जो जजमेंट में है आप खुद बता ओके आगे आप बता देंगे जो असूल उसके मुताबिक चलेंगे आगे बताएं जी सर आगे बढ़िए Similarly, your Lordship held that these rules of the Supreme Court are on a higher pedestal than the ordinary law. And the judgment है my Lord, 2010, my Lord. And why the rules are at higher pedestal? Why? Because these rules they have been made by a constitutional body and subject to law. This is part of subject to law की बात citation तो दे देना 2010 2010 सर मैं भी दे रहा हूँ इम्तियाज साहब सर दे दे मैं तक पढ़ लेता हूँ आप बता This is a constitutional body and the Parliament Majlis-e-Shura, that is not 2010 which has the exclusive power to make laws. PLD 2010 SC 483 विंटर का केस इस जजमेंट में आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें सर इस जजमेंट में कहा है
ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं, कहाँ किस पेज पे, किस पैराग्राफ में? the relevant page is page 535 and it goes on to page, नहीं हमें रेलेवेंट पढ़ दीजिए। 535 कहाँ लिखा है ये? it goes on to page 536. The Supreme Court rules, देखना पसंद करेंगे सर किताब? The Supreme Court rules. पेज क्या होता है? पेज क्या है? Page Supreme Court rules are on higher pedestrian promulgated on the basis of mandate given by the Constitution and not by the government. हाँ, so how does it say it's higher than a law? वो कहाँ लिखा है? The Supreme Court rules on a higher pedestal and promulgated on the basis of mandate by the Constitution and not by the government. Objective thereof is to power of review as conferred by the Supreme Court rules under Supreme Court under Article 180 of the Constitution. अच्छा, इसमें दो बुनियादी बातें हैं जो आप कह रहे थे उसके बरक्स है, और दूसरी बात है whereof was to enhance the power of review. सर, तो ये तो enhance कर दिया था power of review ने। सर ये क्या है? ये लॉ का तो नहीं इसमें जिक्र, शायद कहीं और हो, मुझे नहीं पता। सर इसी जजमेंट को पढ़ें अगर आप डिटेल में, कहने मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इसमें नहीं, ये काम नहीं होता है वकील का। वकील का काम होता है निशानदेही करे फलां सफ़े पे इस पैराग्राफ में, ये नहीं कि मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हमें डराए नहीं, आप सिर्फ वजाहत कर दें। मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पेज बता दीजिए प्लीज। सिर्फ पेज बता दें, हम पढ़ लेंगे खुद। वहाँ इस पे ये बात नहीं लिखी है जो आप कह रहे हैं इस पे। 536। हाँ, ये मैंने पढ़ ली। चलें अगला बताइए केस। अगली जजमेंट लीजिए। PLD 1997 Supreme Court 426. अच्छा इस केस में लॉर्ड। PLD 1997 Supreme Court 426. Relevant 5 and 9. 1997 PLD Supreme Court. जी। सफा 5 and 9. 511 page 511 511. 511 page 511 511. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be that Article A will apply to all laws made by the Majlis-e-Shura Parliament, be it or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with the proposition and still dismiss your petition. No, I'm just saying, so I don't know there is anything clincher here in your favor. It says these are inbuilt limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. इससे पहले बात है कि separation of executive is undermined. यहाँ तो parliamentary बात है ना, legislation. में look at PLD 1979 Supreme Court 49. एक सेकंड, दूसरा बता रहे हैं PLD? PLD 1979 Supreme Court 1979 Supreme Court. PLD 1973 Supreme Court 49. Diabrahman's case. 73, 79. 73. My lord, PLD 1973 Supreme Court 49. Relevant page? Relevant page is 68. 68. Then it is from 68 to 70, my lord. To 70. ठीक. And see proposition पे. Please lordship. Parliament, no law can be made compromising power of judiciary. ठीक. Paragraph page 70 पे मैं जरा पढ़ना चाहूँगा सर अगर इजाज़त दे. ठीक. Married, married. ये आपने कहा यही proposition है. जी सर. तो हम पढ़ लेंगे, आप पढ़ना चाहते पढ़ लें.
पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए प्लीज। My Lord, page 70. Exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. Yes. It is an enabling provision. How it is applicable here? My Lord, और कोई केस? it says, और केस? PLD 1998 Supreme Court 161 में sir, independence judiciary is a fundamental right. Page क्या बता दे? Supreme Court. Page 161. 161. 98 Supreme Court. His Lordship. Relevant. Relevant is page 189. G. 247. यही बात है अलग? Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus standi, page 191. Constitutional convention as good as constitution. Any deviation amounts to deviation from the Constitution. 321, page 331. Certain questions have been asked and I wish to respond to them. अगर मैं आपके लिए आसान करूं, अगर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, आपके सवाल हम सुनेंगे वापस, ठीक है? तो वो उनकी तरफ से कुछ एंग्जाइटी थी कि शायद उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो वक्त बचाने के लिए आप उनके भी बात को साथ साथ कवर कर लीजिएगा, भी कवर कर लीजिएगा। अगर आप ये माकूल तरीक़ेकार समझते हैं, वो फिर चले जाएंगे। फिर आपकी एक जजमेंट पढ़ना चाह रहा था। नहीं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर अभी क्योंकि कहा हुआ है कि बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। नहीं, ठीक है, आपने कहा भाई, डिपेंडिंग ऑन भाई हो सकता है गलत कहा हो, गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, वो बात अलग है। मगर हम जरा अटॉर्नी जनरल को अगर आप लोग अग्री करें शॉर्ट ब्रेक करने के बाद, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आपको कहीं जाना है, एक सेकंड, इनके भी हम आपको फिर देंगे हियरिंग, ये नहीं समझें कि आपको हम बंद सर। आई एम डन माय एक आपको कहीं जाना है? My lord, there is a hearing scheduled in Vienna on Indus Waters Treaty for 3 days starting tomorrow, so I have to fly out tonight. Tomorrow. How long will you take? My lord, today, sir, my submissions will be precise. I have already filed my written brief. It will take 30 minutes, and then whatever questions towards the end my lords may have, I will respond to them and might furnish a response in writing as well. So I have already filed my written brief. I'll take 30 minutes by the clock. There's vese bhi right of audiences with the Attorney General. Have you raised any primary legal objections to maintainability or not? Yes, my lord, I have a. ठीक है, तो I think we'll take a short break. My lord. आप ठीक है, आप अग्री करते हैं? नहीं, ये आप इनकी भी बातें सुन लीजिए। Do I have a choice? I don't have a choice. No, I don't have a choice. You have a choice. You're most kind. If you agree with me, I'll be obliged. It's a rare. We will hear you. My lord, it's a rare moment during these proceedings that I agree with your lordship. नहीं, आपने बड़े Otherwise, from morning I have not been agreeing with your lordship. तो आप हम अभी will let's say we'll come back at 3 or 10 to 3 कर लेते हैं। 10 to 3. ठीक है? Grateful. चलिए 3 o'clock कर लेते हैं, ठीक है? आप अभी जरा पॉइंट्स भी नोट करते जाएं, सवालों के जवाब। अगर फिर आपको सुनेंगे, ये ना समझेंगे। I have just one request. मगर नहीं, तो your lordship will give him as similar tough time as your lordship has given me. No, I will try not to interrupt him because he's. देखिए, I'll tell you why. He's representing Pakistan. Interest of the country is
amount. The Indus Water Treaty is a very sensitive thing. So we don't want to create a situation where he can't go. I will request my colleagues, and I will also restrain myself, if we have queries, like he said, do you have some additional or someone here? Mr. Amir Rahman is there. Amir Rahman is a competent additional Advocate General. So he will make note of the questions, and he will either respond himself, or the Attorney General can even call him from, I don't know, wherever he is. ठीक है, तो इनको जरा हम फारिग कर दें, फिर हम जरा तसल्ली हो जाएगी, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। आपको बताएं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत जारी है। लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। 15 जजेस पर मुश्तमिल बेंच, फुल कोर्ट बेंच है, जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं, सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और इस दरख्वास्त गुजार ख्वाजा तारिक रहीम। उन्होंने दलाइल पेश की और उनके जो साथी हैं, उनके जो कॉलीग हैं, उनके असिस्टेंट हैं इम्तियाज़ सिद्दीकी, वो दलाइल पेश कर रहे थे। अटर्नी जनरल अभी आए रोस्ट्रम पर और अभी वक्फा कर दिया गया है समाअत में। और आपको ये बताएं कि जो समाअत में हुआ उससे मुतालिक आपसे शेयर कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून भी हो सकता है, मगर आर्टिकल 184(3) के तहत देखेंगे। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आर्टिकल 184(3) तो अवामी मफाद की बात करता है। आप बताएं इस आर्टिकल के तहत ये दरख्वास्त कैसे बनती है। पार्लियामेंट ने सिर्फ ये कहा कि चीफ जस्टिस का इख्तियार 2 सीनियर जजेस के साथ बांट दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इस बात से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हो, और पार्लियामेंट का ये इकदाम तो अदलिया की आज़ादी को मजबूत बनाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जानिब से भी रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि बाहर से तो कोई आया नहीं, चीफ जस्टिस ने तो 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करनी है। चीफ जस्टिस के इख्तियार को छेड़ने से अदलिया की आज़ादी ख़तरे में पड़ने वाली कोई बात नहीं है। मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन इस बात को तस्लीम करता है कि एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए हो सकता है, और इस पर इम्तियाज़ सिद्दीकी जो कि वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये कानून पार्लियामेंट से नहीं हो सकता, फुल कोर्ट कर सकता है। कानून पार्लियामेंट से ही आता है और कहाँ से आना है। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि हम सोए रहें, अरेंजमेंट केस भी मुकर्रर ही ना करें तो वो ठीक है। अवाम पार्लियामेंट के ज़रिए हमें कहीं कहे कि वो केस 14 दिन में मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा। जस्टिस मंसूर शाह के भी रिमार्क सामने आए। आपसे रिमार्क्स शेयर करें समाअत के। मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया। नीलम अरशद हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस समाअत के हवाले से बात करते हैं। नीलम, आज के केस में जो हम अभी समाअत देख भी रहे हैं, कौन कौन से अहम नुक्ते उठाए गए जजेस की जानिब से और किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया गया? बिल्कुल आमना, आपको बताएं कि भी इस वक्त समाअत में वक्फा लिया गया है। तमाम सुबह 11:30 बजे से लेकर अब तक एक तवील जो समाअत है वो जारी रही। समाअत के आगाज से हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। कई मौकों पर उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो मर्जी का बेंच बनाने से मुतालिक एक तासुर है उसको वो जाहिर करना चाहते हैं। ये भी कहा गया है कई मौकों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये भी हो सकता है कि जो मुख्तलिफ दलाइल दिए जा रहे हैं उनसे मैं दरख्वास्त मुस्तरद भी कर दूँ। तमाम नजरसानी अपील ने तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को बढ़ा दिया है। इस अपील से मुतालिक मुख्तलिफ जजेस की मुख्तलिफ राय सामने आई है। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2 अहम बातें जो है उन पर निशानदेही की गई है। कहा गया है कि 2 बुनियादी बातें हैं इस फैसले में जो लिखा है कि आपकी दलील की नफी कर रहा हूँ, हमें डराए मत, सिर्फ दलाइल दें। वकील का काम है कि बताए गए फैसलों के फलां सफ़े पर ये लिखा है। सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है? ऐसा कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जबकि ये 15 रुकनी जो बेंच है इसमें मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। आमना, उनकी तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट है जिसका काम आइन का दिफा करना है, हर बनाया जाने वाला कानून काबिल अमल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा है या पार्लियामेंट नहीं है, ये कहा गया है जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से। जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से बड़े अहम सवालात भी उठाए गए हैं और अहम नुकात की तरफ निशानदेही भी की गई है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को उनके और 2 सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया है। बाहर से कोई आकर मुदाखलत कर रहा हो तो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई, ये कहा गया है। और एक मौके पर उनकी तरफ से ये सवाल भी उठाया गया है कि अगर पार्लियामेंट चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो इसने क्या गलत किया है। दूसरा, अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। मुख्तलिफ जजेस की मुख्तलिफ राय सामने आई है। तमाम जो वकील थे इम्तियाज सिद्दीकी, उनकी तरफ से
दलाइल में ये भी कहा गया है कि अगर इस कानून की तौसीक हुई तो ये तारीख से बदतरीन कानून साजी होगी, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या 5 रुकनी बेंच बैठकर कह सकता है कि फुल कोर्ट का फैसला गलत था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर ये रिमार्क किए कि अगर 3 रुकनी बेंच पर 5 रुकनी बेंच का फैसला लागू होता तो जजेस कभी इख्तलाफी फैसला ना दे सकते। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस मौके पर यह कहा कि पूरा कानून पढ़ लें, इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं। चीफ जस्टिस के जवाबदेही इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट ने तकसीम किया है। अहम समाअत हुई है और आपको बताएं कि इस मामले पर सुबह से 11:30 बजे से समाअत शुरू। अच्छा नीलम, ये कहेगा अभी कितनी देर का वक्फा लिया गया और वक्फे के बाद क्या अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अपने दलाल का आगाज करेंगे? देखिए, हम ना एक वक्फा जो है वो लिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितनी देर के बाद दोबारा समाअत होगी। लेकिन यूजुअली 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे का जो वक्फा है वो होता है अदालती प्रोसीडिंग्स के दौरान। ताहम लग ऐसा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के बाद दोबारा से अदालत लगेगी। और इस मामले पर जैसा आप वफाकी हुकूमत से मुतालिक बात कर रही हैं, तो आज सुबह में जो दरख्वास्तें आई इनको मुस्तरद करने के हवाले से, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस मौके पर अभी इन दरख्वास्तों को सुनने के हवाले से अहम जो पेशरफ्त है वो नहीं हो सकती, क्योंकि आज के दिन के मौके पर सिर्फ और सिर्फ इस मामले को देखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जबकि इन जो आज जवाब जमा करवाया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के हवाले से, तो इस पर अगर मुस्तरद करने से मुतालिक अदालत ने कोई फैसला करना होता तो अदालत इतनी तवील जो समाअत थी वो इस मामले पर ना करती और पहले वफाकी हुकूमत के जवाब पर अदालत जो है वो समाअत करती। ताहम जो वक्फा है वो यकीनी तौर पर 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे का हो सकता है। उसके बाद अदालत जो है वो दोबारा लग सकती है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ हमने आपको कि अदालत जो है इस मामले को फौरी तौर पर हल करना चाहती है। एक आईनी बहरान जो है इस मामले की वजह से काफी ज्यादा इल्तवा का शिकार हो रहा था, जिसकी वजह से अदालत ने आज भी आपको बताया कि दौरान समाअत कई मौकों पर मुख्तलिफ जो ज़ेर इल्तवा केसेस उनका जिक्र किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मुख्तलिफ जो वकला अपने दलाइल दे रहे थे। ठीक है नीलम, आप हमारे साथ रहिएगा। तैयब बलोच भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी आज की समाअत के हवाले से बात कर लेते हैं। तैयब, ये कहिएगा, अभी आप भी देख रहे हैं समाअत, हम लोग भी देख रहे हैं, क्या क्या बुनियादी नुक्ते वहाँ पर उठाए गए आज की समाअत में? आपने किस तरह से समाअत को देखा? और साथ ही साथ ये भी कहिएगा, इम्तियाज सिद्दीकी साहब हमें निस्बतन ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगे, जिस तरह से हम देख रहे थे ख्वाजा तारिक रहीम पहले थोड़े नर्वस दिखाई दे रहे थे, उस तरह से क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। समाज में जो है वो 3 बजे तक के लिए वक्फा कर दिया गया है। और दरअसल ये मामला कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से मुतल्लिक जो है वो नए चीफ जस्टिस काजी फैज ने इसका फुल कोर्ट बेंच बनाया। और आज जब समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा तारिक रहीम ने दलाइल दिए, फिर उसके बाद आप इम्तियाज सिद्दीकी दे रहे हैं। लेकिन ख्वाजा तारिक रहीम जो है वो तो कोई बात नहीं कर सके, यानी कि आइन और कानून से मुतल्लिक कोई सुप्रीम कोर्ट को किसी भी नुक्ते पे कायल नहीं कर सके। लेकिन जो इम्तियाज सिद्दीकी हैं उनकी जानिब से जो है वो बेसिरा कोशिश की जा रही है कि वो अदालत में ये साबित कर सकें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है ये से किस तरीके से अदलिया की आजादी जो है वो मुतासर हुई है। ताहम इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फैज ने ये वाजे किया है कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट के या जजमेंट के हवाले ना दें, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के या अदालती फैसलों के पाबंद नहीं है, बल्कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं। हम जो हलफ लेते हैं उसमें यही कहा जाता है कि हम आइन और कानून पर जो है वो अमलदारी को यकीनी बनाएंगे और उसी को सबसे ज्यादा तरजीह देंगे। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम अदालती फैसलों के पाबंद नहीं है। माजी में कुछ ऐसे भी अदालती फैसले दिए जाते रहे जिनकी नजीर भी हम नहीं दे सकते, और इस तरह से उन्होंने मार्शल लॉ और आमरियत के दौरों का तज़किरा करते हुए कहा कि वहाँ पे जो है वो आमरियत की भी तस्दीक की गई। इसी वजह से अदालती फैसलों पर आप रिलाय करने की बजाय हमें आइन और This half-hourly clock is brought to you by इम्तियाज सिद्दीकी ने उस अदालती फैसले के ऊपर 8 रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर रिलाय करने की कोशिश की थी। उस पर चीफ जस्टिस ने उनको टोका और कहा कि आप इस अदालती फैसले की जो है वो नजीर या मिसाल ना दे। और इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये वाजे किया कि वो बेंच कितना था, तो इस पर इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा 8 रुकनी बेंच था। तो इस पर मंसूर अली शाह ने कहा अब हम 15 जज बैठे हैं, जिस वजह से उस फैसले का इतलाक जो है वो हम पर नहीं होता, आप उस हवाले से हवाला ना दे। तो इसके साथ साथ इम्तियाज सिद्दीकी की जानिब से जो है वो अदालत को ये बार कराने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा
कि अब तो चीफ जस्टिस मैं हूँ, मुझे इस पर एतराज नहीं है और ना मैं ये समझता हूँ कि इस नए कानून से जो है वो कोई मेरे इख्तियारात पर कदगन लगी है। तो जस्टिस जमाल खान मंजूखेल का कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो आपका वकील नहीं, आपका चीफ जस्टिस नहीं, बल्कि वो कौम का चीफ जस्टिस होता है और कौम की नुमाइंदा जो है वो पार्लिमान होती है। पार्लियामेंटेरियन जो है वो कौम के नुमाइंदे होते हैं और कौम के नुमाइंदे जब कोई आइन या कानून बनाते हैं तो फिर उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उसको नल एंड वाइड नहीं कर सकते। और यही कुछ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी कहा गया कि अवाम के नुमाइंदों की बनाई हुई आइन साजी को जो है वो मैं आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तैयब बलोच और नीलम अरशद इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थी। आज एक अहम केस की समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसमें अब वक्फा लिया गया है। 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच पर मुश्तमिल ये केस जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इसकी सरबराही कर रहे हैं इस बेंच की, और दरख्वास्त गुजार ख्वाजा तारिक रहीम पहले मौजूद थे, फिर उनके साथ ही इम्तियाज सिद्दीकी वो अपने दलाइल पेश कर रहे थे। अटर्नी जनरल पाकिस्तान भी सामने आए और उनकी जानिब से भी कहा गया कि मुझे आज फ्लाई करना है क्योंकि उन्होंने किसी और केस के सिलसिले में यहाँ से जाना है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ लेकिन सिर्फ आधा घंटा लूँगा। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि विफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त से मुस्तरद करने की इस्तदा की थी लेकिन खारिज कर दिया गया और इस केस की अब हेयरिंग जारी है। यहाँ देंगे आपको अहम खबर, जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़-फोड़ हमला केस। अदालत ने मचल के जमा कराने तक परवेज इलाही को जेल भेज दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत की। चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया है। आपको बता रहे हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़-फोड़ हमला केस है। अदालत ने मचल के जमा कराने तक परवेज इलाही को जेल भेज दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत की, जबकि चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया। मजीद तफसीलात जानेंगे एहतिशाम अब्बासी से। जी एहतिशाम। जी बिल्कुल, परवेज इलाही का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुनाया है। जज अबुल असनाद मोहम्मद ने राहदारी रिमांड मंजूर किया। एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज इलाही को नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही एक रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के काम के हवाले कर दिया गया। वाज़ह करते चलूँ कि चौधरी परवेज इलाही को लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अडयाला जेल में मौजूद थे, उधर से गिरफ्तार करके लाहौर ले जाया गया था। आज जो है जज अबुल असनाद मोहम्मद के सामने चौधरी परवेज इलाही को पेश किया गया और उनका राहदारी रिमांड मांगा गया एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से, जो कि मंजूर कर लिया गया है। और अब चौधरी एहतिशाम अब्बासी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. अलकबीर ऑर्चर्ड, लाहौर के सबसे बड़े KSK गोल्डन इंटरचेंज पर वाक़ थीम पार्क और डिज्नीलैंड, वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी क्लब और कुशादा मेन बुलेवार्ड। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से। अ प्रोजेक्ट ऑफ अलकबीर डेवलपर्स। कामयाब मुस्तकबिल को चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। ADP, BS, MS, PhD प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। www.uskt.edu.pk। Oh no! कजिन का फर्स्ट फंक्शन ऑन माय फर्स्ट डे, अगर स्टेन लग गया तो? उन दिनों में एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ट्राई द न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग, जो दे आर्म पैड के मुकाबले 1-2-3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन। अब एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग। एसा आंवला शैम्पू, असली आंवला की खूबियाँ जो बालों को दे 2 गुना ज्यादा मजबूती। निसा आंवला शैम्पू, अब मेरे जैसे खूबसूरत बाल हर लड़की के पास। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. Hi girls! I love going out. लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए पामोलिन नेचुरल्स मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, so soft, you're glowing. Palmolive Naturals, you can feel it. हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट।
बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। जब यूफोन 4G देगा सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB डेटा, 450 ऑफ नेट मिनट्स, तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ग्रैंड। करेला दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 165 रुपए के साशे पैक में। तो फिर सूरज बाबा के साथ स्पेशल ओसाका सोलर बैटरी लगाओ और ओ सुबह नींद से जागे छोड़ के बिस्तर स्कूल को भागे क्लास में जाके ध्यान लगा के मैथ्स की प्रॉब्लम ये सुलझाते कोर्स में भी ये जोर लगा के सरपट दौड़े जाते फिर थक के जब ये घर आते मम्मी को आवाज लगाते नया तलो एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। जब यूफोन 4G देगा सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB डेटा, 450 ऑफ नेट मिनट्स, तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ग्रैंड। पूरे पाकिस्तान ने माना सालन और तेल के जिद्दी दाग हुए एरियल से साफ। एक दाग बाकी है, कड़क चाय का कड़क दाग। तो हो जाए मुकाबला। नया और पहले से बेहतर एरियल जो कपड़ों की तह से निकाले चाय जैसे कड़क दाग सिर्फ एक धुलाई में। हाय गर्ल्स, आई लव गोइंग आउट, लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए पामोलिन नेचुरल्स मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, so soft, you're glowing. Palmolive Naturals, you can feel it. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. होने वाले दामाद जी गले तो मिलो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। बैरून मुल्क में अनथक मेहनत से कमाया गया पैसा हुंडी और हवाले के जरिए भेजकर खुद को और मुल्क को नुकसान क्यों पहुंचाएं? रकूम की मुंतकली और गैर मुल्की ज़र मुबादला का लेन देन हमेशा मजाज एक्सचेंज कंपनी से करें और कंप्यूटराइज्ड रसीद जरूर हासिल करें। ये महफूज भी है और जायज भी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, मईशत में मददगार और मुल्क की तरक्की में मावन। लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवर क्रीम। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से। अ प्रोजेक्ट ऑफ अलकबीर डेवलपर्स। चेहरे पे रहे न स्पॉट्स न कील छाइयाँ, स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तूत स्याह प्लासम रखी लेके आना। पूरे पाकिस्तान ने माना सालन और तेल के जिद्दी दाग हुए एरियल से साफ। एक दाग बाकी है, कड़क चाय का कड़क दाग। रगड़े बिना इसे निकालना।
तो हो जाए मुकाबला। एक तरफ रगड़ा और मशहूर पाउडर और दूसरी तरफ सिर्फ नए एरियल की कड़क सफाई। नया और पहले से बेहतर एरियल बनाए ज्यादा झाग, जो कपड़ों की तह से निकाले चाय जैसे कड़क दाग, सिर्फ एक धुलाई में। तो किसने की कड़क दागों की कड़क सफाई? ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स, जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल, जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर, जो चले 2 महीनों तक। और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 165 रुपए के साशे पैक में। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज़ पर। चेहरे पे रहे न स्पॉट्स न कील छाइयाँ, स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। सेफगार्ड करें हम, जर्म से दूर रहे हम। याद रखना, सिर्फ सेफगार्ड से शब शब शब। सेफगार्ड से जो नहाए, घंटों जर्म से बचता जाए। शब 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 चलता जाए। सेफगार्ड से नहाना, जर्म दूर भगाना। बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवर क्रीम। कहीं बोटियों से फाइट है, कहीं हेल्दी हेल्दी डाइट है, कभी कोफ्ते की डिलाइट है, तो कहीं कोरमे की साइट है। But don't worry, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। कहा था ना, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। खर्चे कम कैसे करें? बाबा खेले। चलो आ जाओ। बीमार पड़ गई तो टेस्ट, दवाइयाँ, हजारों का खर्चा। हजारों का खर्चा बचा सकता है लाइफ बॉय। बीमारी की असल वजह है जरासीम, जिनसे लाइफ बॉय दे 100% यकीनी हिफाजत। बड़ी हिफाजत, बड़ी बचत। सब्रोसो दे आपको पैक प्रोटेक्टेड क्वालिटी और हाइजीनिक चिकन प्रोडक्ट्स, जिनकी ग़िज़ाइयत और फ्रेशनेस को किया जाता है लॉक इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी के साथ, और केयरफुली पैक करके पहुंचाया जाता है आप तक, ताकि आपको मिले द बेस्ट एंड मोस्ट न्यूट्रिशियस चिकन हर बार। सब्रोसो, व्हेन इट्स लव्ड, इट्स पैक्ड। Breathe out now. Open your eyes. इस शर्मिंदा कर देने वाली खारिश की वजह हो सकती है डैंड्रफ। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स नीम, जो डैंड्रफ से लड़े और सर की खारिश कम करे, कंधे से बोझ हटा दे। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से। A project of Al-Kabir Developers। ऐसा आंवला शैम्पू, असली आंवला की खूबियाँ, जो बालों को दे 2 गुना ज्यादा मजबूती। निसा आंवला शैम्पू, अब मेरे जैसे खूबसूरत बाल हर लड़की के पास। इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तूत स्याह प्लासम रखी लेके आना। हमें पूरे 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए, तो जरासीम नहीं जाएंगे। धोते जाओ धोते, हाँ? धोते जाओ धोते जाओ धोते। बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? नया लाइफबॉय सुपरफास्ट हैंड वॉश अब विटामिन के साथ। ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवर क्रीम। हेलो सर। अरे होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। आ जाओ। नो नो नो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स, कंधे से बोझ हटा दे। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही का 1 रोजा राहदारी डिमांड मंजूर हो चुका। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। परवेज इलाही को एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया गया है। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को नए मुकदमे में गिरफ्तार किया है और इस हवाले से आपको आगाह करें कि उनका 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद की कोर्ट की जानिब से महफूज फैसला सुना परवेज इलाही को एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया गया है। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को नए मुकदमे में गिरफ्तार किया है।
आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर तश्कील दे दिया गया है। जदीद तकाज़ों पर मबनी इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर तश्कील दिया गया है। कंट्रोल सेंटर पर बैक वक्त 10 कॉल सुन सकेंगे। एडिशनल डीजी मॉनिटरिंग का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज हो सकेंगी। हारून शनवारी ने कहा कि कंट्रोल सेंटर में शिकायत पर फौरी फैसले होंगे। इस स्पेशल सेक्रेटरी की जानिब से कहा गया कि वोटर्स, उम्मीदवार और दीगर लोग शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जबकि कर्नल साद इंतखाबात के अमल में जिद्दत लाई जा रही है। उनका मजीद कहना था कि मजीद 10 से 12 एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। आपको ये खबर दे रहे हैं, आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर तश्कील दे दिया गया है। जदीद तकाज़ों पर मबनी इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर तश्कील दिया गया है। कंट्रोल सेंटर पर बैक वक्त 10 कॉल सुन सकेंगे। इस्लामाबाद के सनियाड़ी चौंतरा गांव में सीडीए का ऑपरेशन, मकामी अफराद का सीडीए एहलकारों पर हमला पथराव कर दिया। पुलिस की शेलिंग, बच्चों समेत कई अफराद की हालत गैर हो गई है। वहां पर क्या सूरत हाल रही, अल्लाह दिता खान से जानते हैं, बताइएगा। बिल्कुल, ये सनियाड़ी गांव E11 के पास है, जहां पर सीडीए और जिला इंतजामिया ने मिलकर किया और उस इलाके को खाली करवाने के लिए ये ऑपरेशन खाली किया गया। जबकि इलाका मकीनों का मौक़िफ़ है कि पहले हमें मुआवजा दिया जाए और फिर ये इलाका खाली करवाया जाए। मकामी लोगों की मज़ामत की वजह से सीडीए एहलकारों और आगे पुलिस ने उनके साथ ये झड़पें हुई, तो पुलिस एहलकारों ने भारी शेलिंग की और उसके साथ फायरिंग भी हुई, जिससे 2 बच्चे जख्मी हुए और एक नौजवान शदीद जख्मी हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि हमारी अबाओ इताद की ज़मीनें हैं, हमें मुआवजा दिए बगैर वहाँ से उठाया जा रहा है। जबकि मियाँ असलम जमात इस्लामी के रहनुमा वो भी मुजाहिरीन के पास इज़हार यकजहती करने के लिए पहुंचे और उनका कहना था कि एक हफ्ता पहले इन मुजाहिरीन के साथ, इन मुअज़्ज़िज़ीन के साथ सीडीए का जरगा हुआ था, जहाँ पर सीडीए ने कहा को मुआवजा देंगे और फिर इलाका खाली कराएंगे। लेकिन आज सीडीए ने एक बार फिर ऑपरेशन किया है, जिस वजह से लोग घरों में, खवातीन थी, बच्चे थे, जहाँ जिनके ऊपर ये हैवी शेलिंग की गई, जिस वजह से बच्चे भी जख्मी हुए और बच्चे बेहोश भी हुए शेलिंग की वजह से, जिस वजह से इलाका मकीनों ने E11 चौक में मुजाहरा किया। और अब जो उनके बच्चे पिम्स हॉस्पिटल में जो जख्मी हुए हैं, वहाँ के बच्चों की वजह से वो पिम्स में जा रहे हैं और उन इलाका मकीनों का कहना है कि हम पिम्स के बाहर जाकर अब एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। शुक्रिया आपका। यहाँ खबर देंगे आपको कराची से, जहाँ कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। बाप बेटा जख्मी हो गए हैं। अल्लाह वाला टाउन में बाप बेटा वर्कशॉप में काम कर रहे थे, 2 डाकू आ गए। मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम। जी, ये डकैती का वाक़या करेंगे अल्लाह वाला टाउन में PSO पंप के करीब एक वर्कशॉप है। काम के दौरान जो है वो 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान मुर्तकी पे आए और उन्होंने वर्कशॉप में लूटमार शुरू की है। लूटमार के दौरान मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में बाप और बेटा जो है वो जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुल्ज़िमान लूटमार के बाद बआसानी फरार हो गए। जी ठीक है खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान हुकूमत की जानिब से शुगर माफिया के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयों के नतीजे में फैसलाबाद में भी चीनी की कीमत न सिर्फ कम हो गई है बल्कि बआसानी हर दुकान पर दस्तयाब भी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फैसलाबाद से उवैस सतार से। जानिब से माफिया के खिलाफ जो क्रैक डाउन किया गया, इसके नतीजे में जो इसके समरात हैं वो अब आवाम तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। शहर में चीनी की कीमत 200 रुपये से वापस 160 रुपये किलो तक कम हो चुकी है। इसके अलावा चीनी अब बासानी तमाम दुकानों पर दस्तयाब है। ना सिर्फ आम किराना की दुकानों में बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी 146 रुपये किलो अब मिल रही है लोगों को। इसी वाले से कुछ हम कस्टमर से बात करते हैं। पहले चीनी की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, अब दोबारा 160 होगी, कम होगी, 40 रुपये कमी आई है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? पहले तो 200 रुपये में चीनी मिल ही नहीं रही थी, 200 रुपये में भी नहीं मिल रही। अब ये निगरान गवर्नमेंट ने जो एक्शन किया है, चीनी माफिया से, गोदाम से चीनी को बाहर निकाला, रेट तो कम हुआ है लेकिन चीनी दस्तयाब है, जितनी मर्जी ले। 160 रुपये में जिस जगह से मर्जी चीनी ले, पहले 200 रुपये में नहीं। ये बहुत अच्छा कदम है इनका। इसी तरह से ये गंदम बाकी चीज़ों पे काम करेंगे। वेल्डन निगरान गवर्नमेंट की बहुत अच्छी एक्टिविटी है।
और इससे आवाम को बहुत अच्छा बड़ा रिलीफ मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये रिलीफ मिलता रहेगा। बाकी शेयर खुर्दनोश की कीमतों को भी कम करना चाहिए ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। और इस ठीक है सतार, आपका बहुत शुक्रिया। खबर देंगे आपको कोयटा से, जहां चीनी की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। शहर में चीनी फी किलो सरकारी रेट 150 है, जबकि चीनी फी किलो 170 से 180 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी दानिश। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में जहां चीनी पहले जो है वो किल्लत दिखाई दे रही थी, अब चीनी जो है वो दस्तयाब तो है, लेकिन उनकी जो कीमतें उसमें खासा कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आया। जहां 220 रुपये 225 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही थी चीनी, अब जो चीनी है वो 170 और 180 रुपये के जो कीमत है उसके हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। शहरी भी मौजूद हैं, जानते हो सर क्या कहेंगे, चीनी इतनी महंगी है, क्या सूरत हाल है? सर ये ज़िला इंतज़ामिया की बिल्कुल नाइली मैं कह सकता हूँ इसको कि उनकी वजह से अभी तक नर्ख में कमी नहीं आ रही है। पहले प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती थी, अभी वो बिल्कुल लापता हैं, मंजर-ए-आम से बिल्कुल भी गायब हैं। पिछले 1-1.5 साल से कोई भी उनकी मीटिंग में उनका इजलास है कोई नहीं हुआ है अभी तक। सरकार अभी तक खुद ज़िला इंतज़ामिया भी तो खुद कन्फ्यूज़ है, अभी तक अपने रेट भी उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकती है, फिर आवाम को क्या रिलीफ देंगे? हुकूमत से जो लोग हैं उनका मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो बड़े बड़े गोदाम है वहाँ पर कार्रवाई करके जो चीनी है। आपका दानिश आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची में गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। महकमा मौसमियात ने आज रात से बारिश की पेशगोई कर दी है। सिंध भर में बारिश का सिलसिला 20 सितंबर तक जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बादल बरसेंगे। PDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कराची वाले रहे होशियार, बादल बरसने को हैं तैयार। दिन में सूरज से आग बरसेगी, शाम को बादलों से पानी, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, थरपारकर, मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, छट्टा, बदीन और सजावल समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। 20 सितंबर को मोतदिल शिद्दत की बारिश मुतवक्के है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को गहरे बादलों ने लपेट में ले लिया। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। चिन्यूट में तेज बारिश से बेशतर इलाके पानी में डूब गए। लकी, मरवत, सराय नौरंग और गिरदोनवा में ठंडी हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी जल थल एक हो गया। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बरसात का इम्कान है। PDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कराची के बाद खबर दें आपको गोजरा से, जहां मूसलाधार बारिश से शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया, ताहम गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आबिद सिंधु से। जी आबिद। गोजरा में सरबई रंग के बादलों की एंट्री के साथ ही जो है मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। तो मूसलाधार बारिश के बाद जो है शदीद गर्मी और हब्स का जो जोर है टूट गया है। एक तरफ तो मौसम खुशगवार हुआ है, दूसरी जानब ये जो अब्र रहमत है शहरियों के लिए जहमत बन गई है। कई फुट बाज़ारों में जो पानी जमा हो चुका है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, शहर की जो हालत है इस वक्त बहुत अब्तर है। तमाम गलियों बाजारों में पैंसा रोड है, समुद्री रोड है, कॉलेज रोड है या मोचिया रोड, तमाम पे जो है वो 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ है। सीवरेज लाइन जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। शहर का जो गलियाँ और बाजार हैं वो नदी नालों में तब्दील हो चुके हैं। शहरियों को आपका मिंचनाबाद में दरियाए सतलुज में सैलाब तो चला गया, लेकिन मुतासरीन के मसाइल जू के तू हैं। घर मुनहदिम, फसलें तबाह और मवेशी बह गए। मुतासरीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ की, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज मौजा दादू आलोका में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो इलाका मकीन है वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये ना आपके पीछे पानी है, मुकम्मल तौर पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। अभी तक कोई भी हुकूमत का बंदा इधर नहीं आया। लोगों के पास तो खुराक है या नहीं है, लेकिन उनके जानवर भूख से मर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी उनकी मदद के लिए अभी तक नहीं पहुंचा। गवर्नमेंट का बंदा इधर हमने देखा ही नहीं है। जानवर अब भूख से मर रहे हैं। इससे जो है ना लोग गुर्बत की लकीर में जा रहे हैं और उनके जो जानवर हैं वो भूख से मर रहे हैं। जी बिल्कुल, इलाका मकीन का कहना था कि जो गुर्बत में इजाफा हो जाएगा, हुकूमत को चाहिए कि वो आपका बहुत शुक्रिया। सड़क की सवारी अब समुंदर में दौड़ेगी। कराची के शहरी ने मोटरसाइकिल स्टीमर बना डाला। अली मेमन बने दुनिया बोल है में मेहमान।
मुस्तकबिल में मोटरसाइकिल को हवाओं में उड़ाने के अज़्म का इरादा जाहिर किया। जो इंजन मकसद कहने का है कि रक्शे का भी सामान मैंने लगाया है, अलग अलग सामान लगाया है। जो रक्शे का सामान लगाया है वो गेयर है। पानी के अंदर ब्रेक तो नहीं लगता, ब्रेक उस सूरत पे लगता है कि इंजन पंखा उल्टा घूमे, तो उसके लिए मैंने लगाया है कि जब ब्रेक मारना हो तो गेयर मार दिया तो पंखा उल्टा घूमता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। ज़बरदस्त। इस बाइक ने मेरे को इतनी इज्जत दी है कि पूरे एशिया में मेरा रिकॉर्ड है। अगर कोई जिस तरीके से मैं बाइक ये चलाता हूँ और दूसरे ने ये चला ली तो मैं इसको 2 टुकड़े कर दूँगा। मैं ये सोच रहा हूँ अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी तो मैं इस बाइक को पानी से ही हवा में उड़ाऊँगा। बदरूह का खौफ, कत्ल की तहकीकात और माफिया के खिलाफ जंग। बॉक्स ऑफिस पर 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत का टाकरा हुआ। फिल्मी हफ्ता किसके नाम रहा, आप भी जानिए। दोस्त को इतालवी माफिया से बचाने का मिशन कामयाबी से जारी। डेंजल वॉशिंगटन के एक्शन को खूब सराहा गया। द इक्वलाइजर 3 इस बार भी टॉप 3 की दौड़ में शामिल रही। रवा हफ्ते $72 लाख कमाए और तीसरी पोजीशन पाई। There must be a rational answer for all of this. Just admit that you are up against something bigger than you. दूसरी जंग अजीम के बाद के हालात और कत्ल की तहकीकात अछूता मौजू सूदमंद साबित हुआ। Something in this house tried to kill me. Don't look at me like I'm suspect. We're old friends. रवा हफ्ते रिलीज होने वाली हॉन्टिंग इन वेनिस ने $1.45 लाख कमाए और दूसरी पोजीशन पर रही। This thing, it's come back for me. This demon was once an angel. बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते भी खौफ का राज रहा। नन 2 फिल्म बिनों के दिल दहलाती रही। वीकेंड पर $1.47 लाख का बड़ा बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना है। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। कामयाब मुस्तकबिल को चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। ADP, BS, MS, PhD प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। www.uskT.edu.pk। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। एक शख्सियत जो खबर के खवास पहुंचाए आवाम तक और रखे मुल्की हालात पर गहरी नजर, तो बनती है दी स्पेशल रिपोर्ट। पीर से जुम्मा शाम 4 बजे। It's Essa hair removal cream. बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। Essa hair removal cream। भाई इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना। सिर्फ लासानी दूध स्याह प्लस मलट्ठी लेके आना। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप में शामिल कुदरती अज्जा जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाए। विगोरिन चिल्ड्रन सिरप है समझदार माओ का पहला इंतखाब। A product by BMA Pharma। आए मिलकर जिम्मा उठाएं, बनाएंगे कराची का सबसे बड़ा और जदीद तरीन कैंसर अस्पताल, शौकत खानम हॉस्पिटल कराची, जहां होगा मुस्तैक मरीजों का मुफ्त इलाज। क्योंकि जब हम पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे तभी तो इख्तिताम तक जाएंगे। कहीं बोटियों से फाइट है, कहीं हेल्दी डाइट है, कभी कोफ्ते की डिलाइट है, तो कहीं कोरमे की साइट है। But don't worry, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। कहा था ना, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। अपनी लाइफ है नॉट सो इजी। लास्ट मिनट कैट मेक इट, क्या करूं कैट टिकट, अकेले विद मूवी की 2 टिकट्स। जब टाइम और लक तुम पर करे गिव अप, जस्ट पर्क अप। अब एक नई लुक के साथ पर्क में है चॉकलेट में डूबे हुए लाइट क्रंची वेफर्स, जो करे हर लाइट टेंशन को पर्क अप। जस्ट पर्क अप।
best way to resolve it was to constitute a full court, if you agree. And there are also requests in, I think, 3 CMAs for full court. सुप्रीम कोर्ट का मतलब तमाम जजेस हैं, कानून को जांचने के लिए रेफरेंडम नहीं करवा सकते, आइन पर अमल का पाबंद हूं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। फुल कोर्ट तश्कील देने की तमाम मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर। कहा कई बार माशाल्लाह लगा इस दौर के फैसलों का पाबंद नहीं, बतौर जजेस हल्फ आइन और कानून पर अमल करने का किया है, अदालती फैसलों के ताबे होने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है? नजरसानी अपील ने तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को बढ़ा दिया है। सिर्फ ये बता दें कि कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ। दरख्वास्त गुजार से मुकालमे में कहा यह भी हो सकता है आपकी दलील से इत्तेफाक करूं और दरख्वास्त मुस्तरद कर दूं, डराएं मत, सिर्फ दलाइल दें। एग्जेक्टिव के रूल्स जब चैलेंज होंगे तो देखेंगे, समात कुछ देर में दोबारा शुरू होगी। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो इसमें गलत क्या है? बाहर से कोई आकर मुदाखलत कर रहा तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई? जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर होता है? क्या किसी फर्द वाहिद को लामहदूद कानून नहीं होता? जस्टिस मंसूर अली शाह बोला इख्तियार पार्लियामेंट कैसे लगा सकती है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। एक्ट के तहत कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का वापस नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। कहा मेरिट पर भी पार्लियामेंट कानून के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिले समात हैं। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है। आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज की जाएं। सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले ख़त्म करने के लिए आते हैं। इंसाफ के आप दरवाजे एक खुले रखिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए। आप सब लोगों का शुक्रिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। अमले ने गुलदस्ता पेश किया, हॉल तालियों से गूंज उठा। चीफ जस्टिस ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। इस्तकबाल पर अमले का शुक्रिया अदा किया। बोले इस इस्तकबाल की तवक्को नहीं थी, सब साथियों को ताउन चाहिए। लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल खत्म करने के लिए अदालत आते हैं। आने वालों से ऐसा सलूक करें जैसा एक मेजबान मेहमान से करता है। इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें। बुलेट प्रूफ BMW गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। कमरे के बाहर तख्ती पर चीफ जस्टिस नहीं लिख पाया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस। जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस का पहला केस। मुल्क की तारीख में केस PTV की लाइव स्ट्रीमिंग पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। टेक्निकल टीम कमरा अदालत पहुंची, इंतजामात मुकम्मल किए। फुल कोर्ट इजलास में लाइव स्ट्रीमिंग की मंजूरी दी गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ हमला केस। इस्लामाबाद ATC ने परवेज इलाही का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही को जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही की कब जान छूटेगी। वकील सफाई ने कहा कि कभी किसी शहर और कभी किसी शहर के चक्कर लगवा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही थी। जज ने इस्तफसार किया कि क्या आपको मालूम है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है? परवेज इलाही बोले मेरे तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं। परवेज इलाही तौहीन अदालत केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने वारंट पर परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस में जारी किए। रिमार्क्स दिए अदालती फैसले पर अमल हर किसी की जिम्मेदारी है। नहीं चाहते ऐसे अफसर को सजा मिले जो कसूरवार न हो।
अपने अहकामात हवा में उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। अदालत को क्यों कमजोर समझा जा रहा है? डीआईजी ऑपरेशंस नासिर रिजवी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और एसपी सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी जवाब मुस्तरद। कहा हो सकता है कि बाहर से कोई आए और पुलिस अफसरान से किसी को भी छुड़ा कर ले जाए। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त से जमानत पर नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एफआईए से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि आपकी दरख्वास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। तरीक़ाकार मौजूद है, ये सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। फोन बगिंग और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और पीटीए के तहरीरी जवाब को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुस साकिब की दरख्वास्त पर समाअत की। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पिटीशन दायर कर दी गई। आईजी पंजाब, सीपीओ, एसएसपी ऑपरेशंस को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया कि शेख रशीद को भतीजे शेख शाकिर और शेख इमरान समेत गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद पर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जो इस्तकबाल में किरदार अदा करेगा इलेक्शन में पार्टी टिकट पाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तंजीमी इजलास में फैसला किया गया। ख्वाहिशमंद रहनुमाओं को इस्तकबाल में नुमाया कारकर्दगी दिखाना होगी। टास्क पूरा न करने वाले पार्टी टिकट हासिल नहीं कर सकेंगे। टास्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। पार्टी टिकट के लिए कोई भी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। कहा, अमरीका के 5 रोज़ा अहम दौरे पर रवाना हुआ हूँ। दौरे के दौरान आलमी माहौलियाती चैलेंजेस, आलमी रहनुमाओं से बातचीत करूँगा। बैनुल अक़वामी मीडिया और टॉप थिंक टैंक से तबादला ख्याल करूँगा। डॉलर की कदर में तनज़्ज़ुली जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपये 5 पैसे सस्ती हो गई। 295 रुपये 80 पैसे पर मौजूद। जुम्मे को इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये पर मुस्तहकम। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए निगरान हुकूमत और पाक आर्मी की मुश्तरका काविशों पर अवाम का रद्द-ए-अमल। कहा, निगरान हुकूमत ने क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियां करने वाले अनासिर पर घेरा तंग कर लिया, जो कि आसन कदम है। निगरान हुकूमत के इक़दामात गुज़श्ता हुकूमतों से बेहतर हैं। फातिमा हलाकत केस में नामजद मुल्जिमान फयाज शाह और उसकी बेटी हिना शाह की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। एएसपी की सरबराही में भारी नफरी ने पीर की हवेली का सर्च ऑपरेशन किया। अतराफ के घरों की भी तलाशी ली गई। मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। फातिमा हम सब की बेटी है, किसी सूरत में मुल्जिमान को नहीं छोड़ेंगे। कराची सुपरमार्केट पुलिस की कार्रवाई। वाइट करोला गैंग गिरफ्तार। 3 रुकनी गैंग में खातून भी शामिल। एसएसपी सेंट्रल कहते हैं मुल्जिमान ने कई वारदातों का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिमान में अली अहमद और मुल्जिमा सादिया बिलाल शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और माल मसरूका बरामद कर लिए गए।
कराची में मावा गुटखा माफिया का तनाज़ा नौजवान की जान ले गया। बल्दिया टाउन में मावा गुटखा माफिया के दरमियान झगड़े के बायस दो ग्रुपों की एक दूसरे पर फायरिंग। मोटरसाइकिल पर गली से गुजरने वाला नौजवान गोली लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। इलाका मकीनों के मुताबिक नौजवान शाहरुख वलीमे की तकरीब से वापस आ रहा था। घर के करीब गोली लगी, अस्पताल में जामबर न हो सका। मकतूल स्टॉक एक्सचेंज में मुलाजिमत करता था। पुलिस के मुताबिक झगड़े में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जंगे सितंबर, पाकिस्तान की अजीम फतह की नाकाबिले फरामोश दास्तान। 18 सितंबर 1965 को सियालकोट और जम्मू के महाज पर पाक फौज ने दुश्मन के मजीद इलाकों पर कब्जा किया। वाहगा बॉर्डर और अटारी सेक्टर में भारत के साथ टैंक्स तबाह किए। 10 भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए। खेमकरन में दुश्मन के 4 हमलों को नाकाम बनाया। पाकिस्तानी फौज ने फाजिल्का, राजस्थान और अखनूर के मकामात पर फतूहात का सिलसिला जारी रखा। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। जिसका सारा मताज है उसकी दिहाड़ी होती है जो 400-500 रुपए, उसमें वो घर का किराया दे, बच्चों की खुराक पूरी करे, पोशाक पूरी करे, या कि वो पेट्रोल के लिए दे। मैं बतौर एहतजाज आज यहाँ पे साइकिल पे आया हूँ। इंशाअल्लाह मैं पूरा हफ्ता साइकिल पे आऊँगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, महंगाई ने वकला के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। एडवोकेट खालिद महमूद साइकिल पर मलीरकोट पहुंच गए। कहा गरीब और दिहाड़ीदार तबका परेशान है, घर का किराया दे या पेट्रोल डलवाए। अवाम के लिए सब कुछ महंगा और नापैद कर दिया गया है। पानी के अंदर ब्रेक तो नहीं लगता, ब्रेक उस सूरत पे लगता है कि इंजन पंखा उल्टा घूमे। तो उसके लिए मैंने लगाया है कि जब ब्रेक मारना हो तो गियर मार दिया तो पंखा उल्टा घूमता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। सड़क की सवारी अब समंदर में दौड़ेगी। कराची के शहरी ने मोटरसाइकिल स्टीमर बना डाला। अली मेमन बने दुनिया बोल है में मेहमान। और इस वक्त एक बार फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त दिखा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। My lords, my first submission, your ladyship, my first submission is on maintainability of these petitions. The speaker, my lord, the red light is not on. It is, but it's just, I've just pulled it closer. In paragraph number 6, page 3 of volume 1 of my submissions, page 3, paragraph number 6. Page 3, paragraph 6, volume 1. My lord, I've sought rejection of these petitions on the grounds on maintainability for failing to meet the test criteria laid down under clause 3 of article 184, which is the matter must be of public importance first, second it must relate to enforcement of fundamental rights. My lord, my first submission on whether these petitions raise or they raise any issue or question of public importance. My lord, my learned friends, the counsels for the petitioners, they have largely, their case is rooted in lack of legislative competence, not necessarily objecting to the contents, all of them, but it's essentially rooted in lack of legislative competence of government in terms of Article 191. And the argument, my lord, is that because the powers and because this honorable court in 1980 had made rules, therefore the field stands occupied and in any event could not legislate. My lord, firstly, insofar as public importance is concerned, my lord would have now gone through the law and my lord would see that this law
in fact, deals with the concentration of powers, barring one provision, but concentration of powers in one office. What this law endeavors to do is, it democratizes this institution, brings more transparency, and structures the discretion, which is something, this structuring of discretion is something which has found favor with this court. The 7 principles enunciated in Amanullah case, PLD 1990, Supreme Court 1092. PLD 1990, Supreme Court 1092. Open policies, open plans, transparency, and so on, which this court has held that it is required of every, and of course it was with regards to the powers that the executive exercises. Now these are all administrative powers we are talking about. This law deals with largely, barring, of course, Section 3. There was a question that was raised. I'll address towards the end, and Section 5, which I will address separately. So insofar as public importance is concerned, this law, in fact, deals with the issues which are important for public, which is the litigants. Secondly, insofar as independence of judiciary is concerned, my lords, there is no external element, which is to say that no other institution which has given any role whatsoever under this act insofar as practice and procedure of this court is concerned. It is all confined within this court. And that alone suffices insofar as the lack of any basis to challenge this act on the basis of violation of any fundamental right, because Article 9, yes, Article 9 as expounded by this court, access to justice and of course independence of judiciary is something which is which every citizen of this country is entitled to. So my respectful submission insofar as maintainability is concerned, these petitions fail on both counts. In continuum, as far as independence of judiciary is concerned, and I take your lordships to page 6 of this paper book. Starting from Government of India Act 1935, which was the first constitutional order of this country under which federal court rules 1950 were made. Under Section 214, subsection 1 of Government of India Act, the federal court could make rules but with the prior approval of the Governor General at that time. And in 1950, the Governor General, of course, was neither part of Parliament, there was no constitution, but under the Government of India Act, Governor General wore several hats, and executive authority vested in him, and of course part of some legislative authority as well. Under the 1956 Constitution, Article 177 read with 3rd Schedule, Part 1, Clause 3, the rules were made with the prior approval of the President. There was not even a mention of any law as far as the 1956 Constitution is concerned. 62. Under 1962 Constitution, Section 60, Article 65 said, subject to this Constitution and the law and with the prior approval of the President. In 56 Constitution, the rule-making power was contained in 3rd Schedule. Yes. Had to be read with Article, I forget what 177. That said subject to law and then... No, that said subject to law. It said subject to Act of Parliament. Act of Parliament, but I'll address that, which my Lord has just pointed out. I will address, my Lord, that question. My Lord, as far as... Just bear with me. Sir, एक second. I'll just
Article 177, I'd read it out just for clarity. Until other provisions are made by an act of parliament, third schedule would apply. And as far as 1956 constitution is concerned, nothing happened under that constitution, but the constitution provision was until an act of parliament is made with the prior approval of the president. Rules are made The 56 rules are made under the 56 constitution. 56 constitution, and act of parliament was not made. 56 rules came with the prior approval of the president. Is there any So as far as is there any difference between act of parliament and law? I'll address that question, my lord. This is a question that I've noted, I'll address it. Under the 1962 Constitution, Article 65, subject to the Constitution and the laws, Supreme Court could make with the prior approval of the President. And same position, it was same position under the interim Constitution of 1972, Article 193. I'm sorry, my apologies to interrupt, but the question here is surely when Governor General is referred to and the President is referred to, that's the executive branch. The 73 Constitution had the models from going back to 1935 up to 1972. It eschewed the controlling power of the executive branch. So surely the argument there is that the framers of the Constitution expressly were trying to strengthen the independence of the judiciary, and at least, if I may use the term, eliminating one particular branch from the equation. So the argument perhaps is reverse of what you are saying. No, I'm coming to that. I'm coming to that. No, I have it in mind. I have it in mind. And when I went through this, I noticed that the executive branch was removed, but not the legislative branch. So this is the effect of 1973. This is what has happened in Article 199. The executive action was. It's a pointer in that of the direction in which constitutional law is traveling. I'll address that. My lords, under Article 145, Clause 1, it is subject to law and with the prior approval of the President, and so is the position in Bangladesh under Article 107, identical to what is in India and what we had. In the Constitution, these references, when they say subject to approval of the President, is it unilateral discretion of the President, or it is President advised by the Chief Executive, albeit the Prime Minister, what that is? My lord, so if we look at the jurisdictions where we have this position, of course in India, he acts on the advice. And if, for example, under Article 191... Government has the last say, not Parliament. Yes. It was, no, my lord, without prior approval. The prior approval of the President means effectively prior approval of the Prime Minister, not the legislature. Yes. You said that in the Indian Constitution also it says subject to law, but that provision doesn't read like that. It's subject to the provisions of the law made by Parliament. Yes. So it's not subject to law. I will come to that when I take you to Article 191. I'll come to that. I'll come to that when I take you to 191. I'm just clarifying जो आपने argument की. My lord. वहाँ ये नहीं लिखा. जी when I'll address subject to law, I'll be addressing. You reproduce 6 and 7, yes, my lord. Now, in other jurisdictions, in United States, for example, this is 28 U.S. Code, Chapter 131, Section 2071. The rules made by the Supreme Court have to be consistent with the acts of Congress. And the latest development, or later development, is the Constitution Reform Act of 2005 of the United Kingdom. Now, under Section 45 of that act, the President of the U.S. Supreme Court makes the rules, but he's required to consult with the Lord Chancellor and all the bar councils while making the rules of procedure. So this is the progression, or this is how this is the system that we have in place. 2000 UK Act, does that 2005. 2005 UK Act, for example, do the rules have to be placed before the Houses of Parliament? Term has, and whether an act of meaning where an act of Parliament would be excluded from the definition of law and everything else would come under the. Why? I don't even understand this debate. Why is this? What is I couldn't understand the council.
what was he saying really? My Lord, the Council was arguing, began by referring to Clause 1 of Article 8, where it said that any law or custom or using having force of law, etc., shall not be made. And then Clause 2 said that places a limitation, embargo on the state to not make any law which is inconsistent with the provisions of this, with the chapter. This differentiation between an act of parliament and law, what is the significance here? My Lord, I missed the point. I tried to. In my respectful submission, there would be none as far as Article 191 But is concerned. you were started by arguing on maintainability. Let's finish your argument. You're now addressing his arguments. Gee, now what I'm on insofar as maintainability is concerned, my Lord, my submissions are that this law actually addresses the public concern. It addresses the issue of public importance by bringing in transparency and by structuring the discretion and by democratizing this institution, by and transparency by conferring powers or by, let's say, devolving powers. Both sides agree that a question of public importance is addressed in this. The only question is now whether a fundamental right has been violated, and if a fundamental right has been violated, which fundamental right? Correct. Because question of public importance तो आप भी concede कर रहे हैं या कह रहे हैं कि है, इसमें आप उसको मुख्तलिफ तरीके से point कह रहे हैं जी public importance का question है जिसमें हमने address किया. The other side doesn't agree, but the common denominator is there is a question of public importance. I think my Lord is correct. To that extent, you are in agreement. Now, the other limb of the argument, I mean, public importance is, in my opinion, a variable. The other importance is enforcement of fundamental rights. And other than that, I think the general, how the law is developed, a law is sustainable unless otherwise proven. So the burden is on the person who challenges a law to say what has been done. If he's invoked Article 199, his jurisdiction is wider of the high courts. You can attack income tax law, any other law in Pakistan for whatever reason you can, not limited to enforcement of fundamental rights. The attack under 184(3), leaving aside the public importance, and I think you both are probably agreement there, is a narrower attack. So the person has to come within attack on a fundamental right. What is the fundamental right that has been violated? Absolutely. Your arguments, what I could understand from is, rather than violating a fundamental right, this is a beneficial legislation for the litigant, not for me, not for the state. Everyone may benefit by it or none may benefit by it, but there's certainly, you're not taking away anything, that you are stopping a right of appeal, giving a right of appeal. Whether that can be done, that's another argument, constitutional plane, but that could be addressed in 184(3) or under 199, it's an argument. I'm seeing myself sitting in original. Otherwise, every case will just be filed in the Supreme Court. Don't bother about the high courts at all. If you read with the jurisdiction of 184, can we just read it for my own benefit, because we tend to forget certain words of 184(3). We don't have additional powers, we have lesser powers in the high courts. Clause 3, my lord. Pura padhe. Ji. One the government wala hai na? Should I read 1 and 2 as well? Yeah, 3 pad do. 3 pad. 3 pad. Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. In other words, which is the said article? 199. So the High Court
you don't have to go for public importance matter. You don't have to go for enforcement of fundamental rights. You can still go to the High Court. Here, we don't have extra powers. We have the same powers as the High Court, but we have two restrictions: public importance and enforcement of fundamental rights. Public importance is variable. Let's stick to fundamental rights. So the power here is not a much larger power. So my reading of the Constitution, a much narrower power than the High Court. High Court may strike down this law, arguably, and then we can sit in 184 as an appeal. Then we have more powers. I don't know. Am I wrong in my understanding? That's correct, my lord. And my lord, as far as challenge to the vires of this law. Just to add to that, where a law deals with powers of this court, the Supreme Court of Pakistan, do you think it would be appropriate for the High Court to adjudicate upon it? My lord, in another proceedings, this is a submission that I had made in other judgment where a specific question was raised, and my submission, respectful submission at that time was that yes, and I maintain that position. But are you aware there is a judgment of this court which says otherwise? My lord, now I'm before a full court, so I'd just, based on that, I'd just proceed. My lord. I know you pressed for time. Attorney General, can you explain the word enforcement? It's not the infringement of the fundamental right. It's the enforcement of the fundamental right. So, public importance with reference to the enforcement. With reference to the enforcement. Here, fundamental, public importance, fine. Both parties are there. Now, had it been infringement, then you were right that there has to be a right which was infringed. Here, it's more wider. It's enforcement. They are saying that this is a matter which relates to access to justice. So it's an enforcement of that particular right that they're talking about. They're not saying that it's an infringement of the fundamental right. Can you explain? Can you expound on that? My lord. Now, of course, as I said, my lord, I reiterate that yes, access to justice is a right recognized by this court covered under Article 9, and to that extent, yes, it would be a fundamental right. Now, what they had to show was, the burden is on them, while challenging the constitutionality of this act on the basis of lack of enforcement of fundamental right, as my lord has just pointed out, not infringement of right. What they have to show is that this law does not, in fact, enforce this right of access to justice. No. It's first we are at the threshold of the maintainability. We don't go into whether this law is right, whether it is wrong, whether it is enforcement of the fundamental right or it is an infringement. As far as maintainability is concerned, public importance is done. Then we come to this issue of, does the petition that they have filed, does the petition talk about enforcement of the fundamental right or not? The petitioner, my lord, proceeds on the basis that by way of this act, powers conferred upon the Chief Justice under the Supreme Court rules have been curtailed or taken away, and that then results in this law being unconstitutional. It is not the case here that this act in any way prevents enforcement of any right. Attorney General, one way of looking at it is the enforcement part, that whatever act has been challenged impedes the actualization of the fundamental rights. So perhaps it's interchangeably talking about infringement, but however uses a different word. So if a citizen comes and says this particular act thwarts or impairs the actualization of my fundamental right, I'm coming to the court. So enforcement or infringement might be synonymous. One more thing, I think the question of public importance also is a threshold entry point. Suppose if we see, don't you think the petitioner will have to show that in order for it to be a question of public importance, there must be apparently that law must be against public interest. But suppose if it's clearly in favor of public interest, does it constitute a question of public interest? To become a question of public interest, it must apparently prima facie be something against public interest, and then you say, yes, it's a question. But if it's so obvious that the whole law is in public interest, for example,
Do you think there's a threshold to that effect, or there isn't any? My first part of my submission, my lord, was that the question of public importance, my lord, when I pointed out that what this law does is it democratizes this institution, brings more transparency, structures the discretion, it actually advances that public interest. And therefore, they fail on that threshold, that count as well. Attorney General, my lord. On my repeated questions, in response to my repeated questions, they conceded very explicitly that this is a good law. It enhances access to justice, and also, speaking for myself, it addresses a very, very big issue of internal and institutional independence. Now, in that context, when this is an admitted fact, the only question whether the parliament had the competence or not, क्या जो 184(3) की requirements है वो fulfill होती है, because there is no enforcement of fundamental. Lord, if that is so, then these petitions have to be rejected on this basis alone, because insofar as legislative competence is concerned, 184(3) cannot be pressed into service. So taking if we'll let you, I think a lot of questions are coming up. We'll note. I'll try to make a point. These are, my lord, please. अगर आप थोड़ा सा अपना continue रखें, I want to know where you're going. Okay. Attorney General, if I may ask you a question, is in the public interest that Parliament, or for that matter, a provincial assembly, remains within the limitations that may be placed by the Constitution on Parliament or a provincial assembly? Is it in the public interest? My lord, which fundamental right would it Not be talking affected? of fundamental right. I'm talking of public interest. Of course. Of course. Yes. So therefore, if a law... Again, happening, which I must, interject. I would, you have agreed, now here I won't agree with you. I will say it may be unconstitutional, but not within the parameters of 184(3). There may be a lot of unconstitutional things going on in Pakistan, but it won't come within the parameters of 184(3). That is the fundamental point. That's my way of approaching it. Others have different ways of approaching it. So I think आप जरा चलें, फिर आप note कर लें सवाल. I just this part I just conclude. If I may continue, sorry, if I may continue. It is in the public interest. I'm not speaking of any fundamental right. I'm only speaking of public interest. It is in the public interest you accept, and I think rightly so, that because we have a federal structure, Parliament and provincial assemblies must remain within constitutional limits, right? Whatever those constitutional limits are. So therefore, it seems to me to follow logically that if Parliament makes a law that is ultra vires, or a provincial assembly makes a law that is ultra vires, it is in the public interest to challenge that law. Because if remaining within the constitutional limits is in the public interest, then going beyond those limits and making an ultra vires is surely a breach of public interest. What would you say to that? That touches upon the legislative competence. No, I'm talking of public interest. Yes, but any law, a law cannot be struck down on the basis of just being public. Where the challenge can be is a separate. My lord, let's just take a step back. Any law made by any legislature, provincial assemblies or the parliament, would be a matter of public interest and importance. It is a law that is being enacted. Now, in order to examine that law, in order to assume jurisdiction to examine that law, we have to look at, in the case of Supreme Court, Article 184, and the cases of High Court in 199. Now, आप तो कह रहे हैं ना, मैंने जो नोट किया, हो सकता है मैंने फिर गलत नोट किया हो, आप तो कह रहे हैं कि this challenge fails on both counts. Yes. Public interest and this. जी. तो मैं अभी सिर्फ public interest पे देख रहा हूँ ना. But मैं आपसे पूछ रहा हूँ, I mean, speaking for myself, it seems to me that any law which is ultra vires, whether by parliament, whether by provincial assembly, meaning breaches the limitations, whatever they may be, imposed by the Constitution, because the Constitution is supreme. It is contrary to public interest. Has to be. Now, let me just quickly address this, because this is a maintainability issue here, and I want to address that issue here first and foremost. The two conditions provided under Clause 3 or required under Clause 3 are connected.
has to be a matter of public importance with reference to enforcement of fundamental rights. Now, independently, any legislation, any statute, any rule or any regulation would be a matter of public importance or public interest for that matter. Now, in order for this court to assume jurisdiction, now this court does not assume jurisdiction under 184.3 on a legislature, on any law being enacted for want of legislative competence. It has to be ultra-vires or violative of the rights, fundamental rights granted. So you say that the word relating to enforcement. With reference to the enforcement of. That you say is the buckle that connects the two things. That is the buckle, A, connects the two, and that is where it actually prevents, if I may say so, this court examine constitutionality of a statute on legislative competence. Is legislative competence not in the public interest? As I said, Your Ladyship, this is something, legislative competence alone is something which can only be examined under 190. Is it not a right that everyone has under the Constitution Well, that laws are made in a particular way? Legislative competence, of course, as I understand it, what you have to see in the act is an act of parliament, whether Article 70 read with the list permitted it or not, or whether there is a provision of the Constitution which directly confers that power upon the parliament, whether that provision permits it or not. And if those provisions do not permit that legislature to legislate on that particular matter, then yes, this is a legislative competence issue and it is not permissible under 184. In your opinion, the law is good law, Parliament is competent to make the law, and every provision of the law is valid and does not in any way violate any provision of the Constitution. So then what happens again? I go back to the full court hearing aid, and you are given a right of appeal under that. So are they not then entitled to their right of appeal in the event that the court decides that these petitions are not maintainable, put the burden and allow that right of appeal? And whether the act is in field or is it suspended? I think my illustrious colleague has raised a very valid point, and I was thinking about it during the break. And if we read the right of appeal, first of all, it talks about an aggrieved person. Now, I'm trying to envisage a scenario where one would be aggrieved. First scenario. Second thing is, we can, and this is permissible, read down legislation. We can, for instance, read into it that wherever there is a full court, needless to say, you cannot have a right of appeal over the full court. So that one can read down the legislation, that those cases. But which right have we determined? What have we taken away from someone? Someone gets an extra right to challenge a judgment, if at all, it's an irritation to us. Oh, now you have to have the appeal. Oh, now the review jurisdiction has been extended. So what are we doing? And it's not conferring this power to an executive functionary, to the legislature, to the president, or to anybody else. It may be nuisance value for us. Our reviews are going, our appeals are going, that sort of thing. What are we taking away? If the judgment is correct and in order, should we shy away from looking at it because someone files an appeal? Yes, it may bring in litigation into the court. That's the downside, may be said. But where is the aggrieved person? Who will be the aggrieved person be? The person affected. Because I think the 184.3, the whole intendment of that was for not for lawyers. It was not for the well-to-do. It was not for the multinationals. It was for the poor, the dejected of society. We have a whole chapter on the principles of policy, which nobody bothers to, we don't read. Bonded laborers, transgender, women rights, children, they can't come to court. We can intervene, 183 can come to their rescue. So I was looking at things in that perspective. We have to see the whole entire Constitution as a whole. We just stuck with one provision that somebody says, hey, please tell me how you aggrieved. I kept asking him, are you aggrieved? He says, no. They couldn't do it, you can do it. That's about the argument that I've understood so far. That's a valid argument on its own. Yes, to be addressed, for instance, the income tax ordinance has certain that have been challenged before the High Court. Could we entertain it at 184.3? After all, it is legislation. After all, it's a public interest. After all, it's a taxation matter. It will meet all the tests of public interest. But
It is not, because taxation is not a fundamental right. Tax or not tax or whatever, nobody can say my right not to be taxed has been infringed. So go through the High Court route, get a 191 petition, come to the Supreme Court in 184. That is the appellate jurisdiction. So we should read the Constitution and not just pick the words. We are just stuck with these words, 2 words also. Who's harmed by this? The only thing is you've taken away our power, you've taken away specifically the power of the Chief Justice. That's one irritant. You've given a right. That's another irritant. You have created another same lawyer. Okay, person wants to waste money on another lawyer, do so. So his power will be lighter. What is it to us? Mr. If I may, take you back to what you were saying about, and I understand your point, relating to the buckle part of it. So here we have a law which relates to the practice and procedure of the court, and that is, you say you accept that any law which is ultra is against the public interest, but you say the buckle is missing because it doesn't. It has to. It's not just legislative competence alone, but it has to relate to fundamental rights. So I was just wondering. If I may rephrase it before my Lord formulates the question. Legislative competence cannot be interfered with here. No, I'm just saying, I understand that. So ye main hi keh raha hu. Yes. But breach of legislative competence is contrary to the public interest. Until it is related to fundamental right, 184(3) cannot be invoked. Yehi aapki argument. So I was just wondering that the subject matter of this law essentially is the practice and procedure of the Supreme Court. Article 10A relates to due process. So surely any law relating to the practice and procedure of any court, but let's take the Supreme Court, which is ultra vires, surely that affects due process and therefore is directly relatable to a fundamental right. What would you say to that? And that is where, when passing this threshold, of course, when a petition comes before your Lordship, so before this court under 184(3), these are the 2 things which are to be examined at the first instance. Now, once this threshold is met, then, and the burden is just discharged. You Article 10A. It helps sometimes to refresh our memories. For the determination of his civil rights. Of his civil right, not the Supreme Court civil rights. Aage padhe. And obligations, or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. It's nothing to do with the Supreme Court's due process. It's his. Have your right of appeal been taken away? Have your right of cross-examination been taken away? Have your right of a statement under 340 been taken away? So that's where then it takes me, my Lord, and I'm just addressing your question. Attorney General, the subject matter is legislative competence in relation to practice and procedure. Surely as a matter of principle, it's not a question of whether the law is taking away. It is this due process in and of itself? And if the law is ultra vires, the answer is precisely because ultra vires, it can't be due process. So let's proceeding on this. Whatever it says, whether it says I'll go with it. Chief Justice is masters of the roster or five. I'll go with it, and let me just make my submission on this. I'll go with it. When somebody brings in, and let's assume, for the sake of argument, let's assume, and for a moment, if it is assumed that yes, it is a matter with reference to fundamental rights as well, then what has to be shown in the first instance is that this legislation fails to enforce or infringes any of the fundamental rights that the citizens may have. Well, if due process is interfered with, surely they have not shown anything to say that there is any due process which they are entitled to under the existing scheme or the scheme as it stood prior to this act. We made questions. You can continue. I think we have our own views and opinions. Aap chale aage. Lord. Now you have to persuade us, not we have to persuade you. Just one question I was just thinking about it. Suppose a provincial assembly or even the parliament tomorrow makes a law saying after an appeal has been pressed under Article 185, another appeal would be
available to the litigant before a larger bench. Would that law stand? I would rather consider these. Competence ki baat Let's consider what the law did. Maybe tomorrow that very matter comes before us. So the question is. A second appeal. My Lord's question is whether the second appeal would be provided. Not at all. I am questioning the competence. The appeal in the Supreme Court under 185 is provided by the Constitution. Can another appeal, which is not specifically provided in the Constitution, be provided by ordinary legislation? The example I gave you was an extreme example. The first question is, can by ordinary legislation an appeal be provided where the Constitution specifically does not against orders passed by the Supreme Court? I will add to this question. Is there any provision in the Constitution preventing जो वो टेस्ट है कि जी वो आइटम 55 का कि जी वो हमने तो enlarge किया, पहले एक अपील थी, अब हमने दूसरी कर दी है, तो इसलिए ये हमारी competence में है. Would that argument stand? Noted, my lord. आप बाद में जवाब दे दें, आगे बढ़ते हैं. ऐड कर रहा हूँ उसमें दूसरी तरीके से. Is there any provision in the Constitution preventing the Parliament from doing so? Noted, my lord. Now, my lord, if my lord may kindly turn to Article 191. Let's go to Article 191. It has been read out. I'll just read the first part of it, where it says, subject to the Constitution and the law. Mr. Attorney General, please you read just the preamble of this act and section 3. Yes. Yes, my lord, it has been read out. Talks about Article 10A. Article? 10A. Yes, it does. Specifically. And Article 4, Article 25. My lord. And subsequently in section 3, specifically talks about 184.3. My lord. How this can be proceeded under Article 199 when specifically it is challenging the mandate of the Supreme Court as per section 3 of this act. My lord. How that can be moved before the Supreme High Court under Article 199 of the Constitution? My lord, I noted. My lord, now the question that has come before your lordship is whether this Act, 2023 Act, is covered under the definition of law, howsoever expansive definition, howsoever expansively the term law is defined. My lord, Article 260 has two definitions. One is of an Act of Parliament and the other is of a federal law. Here we are dealing with the federal law. Article 260 defines a federal law. It says... You say over here law includes statute law. Yes. Yes. In my respectful submission, law can only have one meaning as far as this provision is concerned. But even if it is given an expansive meaning, this act would surely be covered under the definition of law. If it's to be covered, then why didn't the Constitution say by an act of Parliament? Why did it use the word law? These words are not interchangeable. They are used in a very specific sense in different articles. And so you have to, the interpretation has to be given to the word law and not to just say, just because law includes legislation, so here it will be legislation alone. Law has a meaning, and if the Constitution wanted to say just by an act of Parliament, it would have used those words. Your Ladyship, when we look at the provisions from where the Parliament draws its legislative... Why did you look at 75.3? जी 75.3 and 141 and 142 as well. पढ़ लेते हैं जरा उसमें दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो गए. When the President has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of Majlis-e-Shura. So it is
happens. What it is, the name of the thing is, you are a man. Your name is Mansoor Rahman. I would read it like that. And the definition of federal law under Article 260 is, federal law means a law made by or under the authority of Majlis-e-Shura Parliament. Now, if we turn to Article 8.2, for the sake of this submission, where any law which is inconsistent with fundamental rights is void, Article 8.2 says, the state shall not make any law. Now, the state is not just the parliament, the state is the province, the governments and the assemblies and any authority which has the power or is authorized by law to impose any tax or cess. आप फरमा रहे हैं कि law, and you refer to the definition of federal law. It doesn't say federal law. It says. It does not. What I'm saying is. I have a question for you. Suppose Provincial Assembly under Article 191 law बना देती है, बना सकती है? Oh, 2000 के अंदर 2000 Supreme Court deals with that question. Yes, they cannot. The answer, because the power with respect to legislation with respect to regulating the court's jurisdictions or powers. कामयाब मुस्तकबिल को चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। ADP, BS, MS, PhD प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। www.uskt.edu.pk। BMA फार्मा का शरबत फौलाद सुनहरी परिंदा मार्का जिस्मानी कमजोरी को दूर करे, घर के हर फर्द के लिए यकसा मुफीद। BMA फार्मा का शरबत फौलाद सुनहरी परिंदा मार्का, कमजोरी दूर, जिंदगी भरपूर। Experience the luxury of Facile Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Facile Sanitary for an elegant lifestyle. It's Essa hair removal cream. बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। Essa hair removal cream. कामयाब मुस्तकबिल को चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। ADP, BS, MS, PhD प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। www.uskt.edu.pk। इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तू स्याह प्लासम लट्ठी लेके आना। कहीं बोटियों से फाइट है, कहीं हेल्दी डाइट है, कभी कोफ्ते की डिलाइट है, तो कहीं कोरमे की साइट है। But don't worry, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। कहा था ना, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। आए मिलकर जिम्मा उठाएं, बनाएंगे कराची का सबसे बड़ा और जदीद तरीन कैंसर अस्पताल, शौकत खानम हॉस्पिटल कराची, जहां होगा मुस्तैक मरीजों का मुफ्त इलाज। क्योंकि जब हम पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे तभी तो इख्तिताम तक जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं। कानून में अदालत का कोई काम भी किसी दूसरे इदारे को नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में दलाइल। कहा कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ही अपने तमाम उमूर अंजाम देगी। दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर एतराज़। कहा दरख्वास्त गुजारों का एतराज़ कानून नहीं बल्कि कानून साजी के तरीका पर है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब तमाम जजेस हैं। कानून को जांचने के लिए रेफरेंडम नहीं करवा सकते। आइन पर अमल का पाबंद हूं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। फुल कोर्ट तश्कील देने की तमाम मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर। कहा कई बार माशाल्लाह लगा इस दौर के फैसलों का पाबंद नहीं। बतौर जजेस हल्फ आइन और कानून पर अमल करने का किया है, अदालती फैसलों के ताबे होने का नहीं। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो इसमें गलत क्या है? बाहर से कोई आकर मदाखलत कर रहा है तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई? जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इस्तफसार किया अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासर होता है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आइन के मुताबिक बनाए गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कानून में फ़र्क किया है?
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कानून नहीं होता? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ हमला केस, इस्लामाबाद एटीसी ने परवेज इलाही का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही को जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज ने इस्तफसार किया, परवेज इलाही की कब जान छूटेगी? वकील सफाई ने कहा, कभी किसी शहर और कभी किसी शहर के चक्कर लगवा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया, परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही है। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो फिर सवाल कर सकते हैं कि कौन सा इत्तेहाद कर रहा हूं। बिलावल भुट्टो की ओकाड़ा में गुफ्तगू, कहा ऐसा नहीं, चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्की मसाइल हल हो गए। एक तरफ मुआशी और सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने, लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त है, इंतखाबात की तारीख दे दें। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके सन्याड़ी चौंतरा गांव में सीडीए का ऑपरेशन, इंतजामिया को मज़ाहमत का सामना। E11 चौक में मुजाहिरीन के नारे, आंसू गैस, शेलिंग और फायरिंग से 2 बच्चे जख्मी, नौजवान की हालत नाजुक। मागला रोड पर एहतजाज, E9 चौक बंद कर दिया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लाइनें लग गईं। वजीराबाद में तलबा ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। बाबर नामी नौजवान गोली लगने से मौके पर दम तोड़ गया। जीटी रोड पर वाक़े कॉलेजेस के तलबा में झगड़ा मामूल बन चुका, पुलिस काबू पाने में नाकाम हो गई। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, बाप बेटा जख्मी। अल्लाहवाला टाउन में बाप बेटा वर्कशॉप में काम कर रहे थे, बेटे को गोली लगने पर बाप की मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश, फायरिंग से बाप को भी जख्मी कर दिया। This headline news is brought to you by नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। कहीं बोटियों से फाइट है, कहीं हेल्दी डाइट है, कभी कोफ्ते की डिलाइट है, तो कहीं कोरमे की साइट है। But don't worry, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। कहा था ना, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। और इस वक्त आप फिर से देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के हवाले से समाअत हो रही है। एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट विल प्रिवेल दिस कोर्ट, My lord. It will be the act of the parliament. And if there is a judgment which has been rendered on the basis of, and this is where the principle of legislative overrule flows from, that if there is a judgment expounding a certain provision of a statute or the rules, that judgment cannot be overruled unless the basis or the foundation on which that judgment came about is altered or removed, which is to say, if the law, underlying law is amended, then the effect of that judgment goes. And that is where, even if, for the sake of argument, the term law includes a judgment, if the underlying, if the rules which were expounded by your lordships in that judgment... First of all, I didn't say judgment, I said case law. Judge-made law is different from judgment. That is precedent. So learned counsel... And also, आप जो अभी बात कर रहे हैं, extrapolating from that, is the rule surely an interpretation of the constitution or the establishment of a rule of constitutional law by the Supreme Court surely cannot be affected by Act of Parliament. It can only be if the constitution is amended or the court itself changes its view. Classic example, right of abortion. Added to the constitution, Roe versus Wade by the US Supreme Court, taken away as egregiously wrong by in Dobbs versus some other 2022. I think surely that is settled constitutional law.
My lord, आप जरा please, if you don't mind, I have to take your lordship. आप जरा please proceed further. I mean, we will write a judgment whatever we want to write. Now, my lord, I will. My learned colleague will be recording the questions, noting down the questions, and I'll respond. One thing, how I understand this. This is not my statement. Rahman knows shorthand. This is not my statement. This is my understanding. The act of parliament can be considered as law as well. But every law cannot be considered as act of the parliament. जैसे कि आप मिसाल लेते हैं, landlord can be landlord, but owner can be treated as owner as well as landlord. No, where? No, but if you're going to go that route, then you can even say these are what is they say Supreme Court can make, not administrative meeting of the judges of the Supreme Court. Where does the Constitution provide for an administrative meeting of the judges of the court? So we don't want to just destroy the entire system of governance. So did we sit in a court of law? Did we pass a judgment? How did these rules get enacted? Did people have a say in the matter? Or 10, 15, 17 people, then all gentlemen got together in a closed room and say, here, where is the concept of an administrative thing? That administrative concept itself is created by the rules. So it cannot supplant the Constitution itself. It says the Supreme Court. It's very clear. Now, I'm not really understanding. I am only concerned with one and only one thing. What have we taken away from Khwaja Sahab, his client, or any citizen of Pakistan? What have we taken away? What have you taken away? If you've taken away something, we will strike it down. I mean, I don't know why we are having this academic discussion. I really don't understand the point. My lord, if I may. Now, there is this provision under this law, and Section 7, for example, application for fixation of urgent matters. Do we not know that there are people who died in prisons, condemned to death, before their appeals came up for hearing? This is our domestic affair. No, with great respect, my lord, it is not. It is. Absolutely not, my lord, with great respect. This is the right of the citizen, litigants ka right here. Learned Attorney General. My lord, with great respect, it is not. Resolve this. It can't possibly. Learned Attorney General, what if the Chief Justice refuses to call a meeting of the full court and refuses the full court to amend the rules? Should the parliament not intervene in the interest of the litigants? That is exactly what has happened. And here, if my lords may kindly turn to Order 11 of the Supreme Court rules. Order 11 of the Supreme Court rules. I'm just going to take this point forward. Order 11 of the Supreme Court rules. It begins by saying, save as otherwise provided by law. The full court, going by, let's say... एक मैं आपको इसमें तसादुम दिखा दूं अब मौजूदा रूल्स में जो आइन से तसादुम रखती है, ठीक है? अपील इज अ राइट, सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील इज नॉट अ राइट. फॉर एन अपील द रूल्स प्रोवाइड 30 days, which is a right. For a civil petition for leave to appeal, you get lots of time, 60 days. I would say it violates the very concept of the Constitution. Maybe it's a mistake, but the other question would be, can these rules be challenged? I think they can be challenged. If they had a supra-constitutional effect, they can't be challenged. Suppose suppose tomorrow I refuse to fix any bench. What will compel me? At the moment there is stay order of reason, I said, nahin, hum chutti pe jaate hain, hum court hi nahi lagate hain. What will you do? Move a reference against me, that's about all. You can't compel me under any law to do that. So, the object is, there has been a problem, there has been successive addition of cases, we are completely closing our eyes to it. हम 2019 में full court meeting हुई थी, वो भी हम नहीं कॉल कर सकते हैं, वो भी इख्तियार चीफ जस्टिस का है. 2019 से 4 साल गुजर गए हैं, क्यों नहीं मीटिंग कॉल हो रही है? 2019 से उस जमाने में 40,000 केसेस थे, अब उसमें ऐड हो गए 27,000. हमारी मर्जी, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है? नहीं, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है, फिर हम तनख्वाह नहीं लें स्टेट से. हम टैक्स पेयर हमें पैसे देता है, हमें एक काम के लिए पैसे देता है, केस का फैसला करो, ये हमारा काम है और कोई काम नहीं है, बाकी सारे हमारे पेरिफेरल काम है. तो ये आप इतने आप उस मेन पॉइंट पे आप नहीं रह रहे हैं, आप भी खिसक रहे हैं उधर, वो भी मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं. My lord, I just जो आप पढ़ रहे थे Constitution of benches का, इसको पढ़े ना, ये save as otherwise provided by law. जी. So तो कोई law था नहीं. जी, उस वक्त नहीं था.
recognition थी कि law provide कर सकता है कुछ. नहीं, आपसे ये अभी देखें. उस वक्त law नहीं था. अब ये law क्या ये आपके ख्याल में ये जो 1980 के rules हैं ये law है? My lord, these are आपसे simple. Are the 1980 rules law come within the purview of law or 191 की definition क्या आप Article 191. No sir. No. These are the rules. These are the rules. The language says subject to the and the law. The Supreme Court will make rules. What is the purpose of mentioning save as otherwise provided by law? Yes. This is the recognition of what Article 191 provided. Now, at that time, there was no statute or an act of parliament which provided for anything, but the full court of this court left it open. Now the law has been promulgated and this covers under this provision. Yes, not just this provision, it is covered under 191. This only recognizes what 191 already. Mr. Attorney General, then you are excluding all those laws which are made under the delegated powers. You are excluding all those laws which are made under the delegation of the power by the government or the parliament. Delegated legislation. In what context, my lord? In the context of definition of law. There are two primary law and the delegated law. And delegated law includes the rules. No, we are looking at the Supreme Court rules are not law. We are only looking at the language of 191. We are looking at the language of 199 and we are trying to understand what is the term or what is the scope of term law as provided under 191 is. Yes. Now, I had taken your lordship through how this provision or the pari materia provision had historically progressed, where in addition to parliament there was a executive as well. That role was taken away, that role was eliminated, but the role of parliament remained. And, my lords, Article 67, which provides for the regulation of the rules of procedure of the houses, there is no such You have not language. You have not argued on Article 142 because this is the distribution of legislative power. Yes. And Majlis-e-Shura Parliament shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Yes. And if we go through Article 50, the legislative list, item 57, it is also related to 58. 58. Uske saath 55, sorry, 55, yes, jurisdiction it is, and yes. power of all courts. So insofar as Section 5 is concerned, it is entry 55. With respect to other provisions, it is Article 191 read with entry 58. Article 50, Would sorry, be read item with- 58. Is it not coming under 55? It says enlargement of the jurisdiction of the Supreme That's Court what I said, sir. and the conferring up there on a supplemental powers. So it what has I given submitted, us sir. more powers. I have committed a mistake. I've given you an exact example of a Himalayan mistake committed by this court, the Recodic Judge. 6.5 billion, isn't that a big enough mistake for us to understand? That's exactly what I've submitted. Section 5 is covered under entry So 55. you are trying to resolve that. Why? I don't know. I mean, they don't argue the case. I don't know why we're not proceeding. We love quoting American presidents. Why don't we quote the American president, which the Supreme Court of America says 20 minutes and nothing more? Now, you are not, please don't take questions. You just hear them, write them down, whatever. Now, my lord, I just stick to the submission that I had made in the beginning. Mr. Amir Rahman is the person who is recording the question. Attorney General. अब आप देखिए हम आज से सुबह से कोई 150 cases की addition हो गई होगी because of this case. We can hear this case for the next month. No other work will happen in the Supreme Court. If you want the system to collapse, please proceed. Take your time. We won't interrupt. ख्वाजा साहब नाराज हो कहते हैं अब आप नाराज हो जाएंगे मुझे बोलने दे रहे हैं पॉइंट्स ले हम नोट करेंगे हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं आपने इतनी मोटी चीजें दी हम पढ़ लेंगे इनको. Now I just quickly rush through my submissions and that in Order 11, the use of the word law, the term law, you think it carries the same meaning as in Article 191? Yes. Thank you. Now, my lord, if leaving this act out of the Article 191 would render part of Article 191 redundant where it says subject to law. And redundancy cannot be attributed lightly to a statute, let alone a constitutional provision. The judgments are in the paper book. My lord, there was another submission which was made with regards to field being occupied, which is to say that
since the rules had been made, therefore the field stood occupied and therefore a law cannot be made. Now, that principle also does not apply because that principle is only applicable where the powers are coextensive or coterminous. Here, the Constitution specifically says that the rules shall be subject to the Constitution and the law. It can't be. So therefore, the principle of the doctrine of occupied field does not get attracted here. Now, my lord, if I may take your lordships to the individual provisions of the statute before I conclude my submissions. Section 2, my lord. Section 2, as I've already submitted, it endeavors to create more transparency, where the power has been, which was under the rules vested in the Chief Justice, has now been... Call it a sharing of the burden. Sharing of the burden. It's a huge burden. Yes. Why think of it negatively? Think of it positively. My lord, I don't want this burden. I want to share it with my colleagues. So what? Fantastic, my lord. That ends the matter as far as Section 2 is concerned. Absolutely. 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 And because what it does is... So I don't trust them. That's the only other way. I can't trust them. It is in this time when we want the justice system to be more efficient. It actually helps. There are more minds sitting together trying to work out how to make things more efficient and transparent in order to aid the litigants who come before your lordships. And if I may say so, the primary duty and obligation of this court is under Article 185, exercising appellate jurisdiction. 184.3 is rare cases which come before you under 184.3. It is actually the appellate jurisdiction of this court which this court is duty bound to exercise. So anything and everything which advances that objective, that constitutional objective, must be supported, must be upheld. There is no fundamental right which gets offended or violated by advancing this objective. And Section 2 endeavors to do as much. So if that was the objective, the law would again be changed if at some stage the government or the parliament decides that no, 3 judges are not enough, let's do it by ballot. So you would amend the law accordingly? My lord, if I may. Or let's do it, why 3 judges, why not all 17 sitting and deciding which cases go where? My lord, if I may respond to this? Yes, sure. My lord, if the pendency is down to 20,000, absolutely there would be no occasion. But if it goes to 75,000, there might be. Why not 10? Zero. But this is what is being sought to be addressed. You will attend to a matter on that thing. I don't think parliamentarians, we should disparage parliament all the time. If the situation is that there's no pendency, maybe they would have not come up with this thing. Maybe if the damage caused by various was not done, they would have not come up with this thing. So parliament doesn't operate in a vacuum. It hears, the government is part of it, opposition is part of it, all these people are part of it. They think and they produce something. Maybe not in the most perfect of things, but we have to, each legislation must be supported unless it's clear-cut violation of the ultra-vires of Constitution fundamental rights in 184.3. Otherwise, it can be ultra-vires of Constitution 199. And my lord, the power remains vested in this court. But Mr. Attorney General, suppose there is a parliament that is elected in the next general election. On your theory, would that parliament not have the power to repeal this law? Of course. Oh, you see, you are saying this is a law if it repeals it, yes. That this is a law affecting having such a salutary effect. It is having this, that, and the other. So someone can say, "जी parliament का तो power ही नहीं है, तो ये law को repeal कर दें." या फर्ज करें अगली पार्लियामेंट आती है वो सेक्शन 2 को फारिग कर देती है, वो कहती है जी चीफ जस्टिस का पावर है वो, दैट्स गुड इनफ। माय लॉर्ड सकती है, आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी देखिए अवान साहब मैं देखें प्लीज, मैं उनको भी रोका था और मैं आपको भी रोकूंगा। मैं कंजूस
फिगर्स पे नहीं जाऊंगा, मैं रियलिटी पे जाऊंगा। ये कानून आ गया, अब अगली दफ़ा कोई केस ले आएगा हम वो वाला भी देख लेंगे। मैं ओपिनियंस कभी नहीं दूंगा। आप हमारे या तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कीजिए, हम ऐसे आपको ओपिनियंस नहीं देंगे। आपका काम है अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट को ओपिनियन देना, हमारा काम है उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी आप देखें, ख़त्म। हम आपके ऊपर मफरूज़े नहीं डालना चाहते हैं कि क्या होगा। भाई हमें क्या पता क्या होगा, जब आएगा हम देख लेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप कर लें प्लीज इस कानून पे और आगे बढ़ा लें बात को, क्योंकि हम देखिए कोर्ट आप समझ नहीं रहे हैं इसकी अहमियत। हम लोग बैठ के इधर एक कंडीशन गवर्नमेंट में बैठ रहे हैं, लोग कोई जेल में मर रहा है, किसी का केस है, मेरी तो मुझे तकलीफ हो रही है। सुबह से 57,000 है, अब हम छोड़ के जाएंगे 150 और बढ़ जाएंगे, कल 150 और बढ़, आप चला लें एक महीना केस, हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हम तनख्वाह ले रहे हैं इस गरीब आवाम से एक काम करने के लिए कि उनके केसेस का फैसला कर लें, ख़त्म। ये बहुत अच्छी डिबेट है, जाके हाई कोर्ट में कर लें चैलेंज, वो आ जाएगा जजमेंट नंबर 94 में, हम बड़े पूरे पावर्स के साथ बैठ के इसको देख लेंगे। आपको पता है आज बेंच बनाने का क्या इशू था, इसके बावजूद के स्टे चल रहा है। मैंने अपने 2 सीनियर कलीग से पूछा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, 2 स्टे चल रहा है, अलग बात है आइन कानून पर स्टे चल रहा है, फिर भी कि बात को आगे बढ़ा के किसी ख़त्म कर लेना, सराह लें कानून को, ये तर्क कर दें, मगर आप अपने दलाइल दें, हम उसका सुन लेंगे और फैसला कर लेंगे। कोई इख्तलाफ करेगा, कोई नहीं करेगा, उनकी मर्जी है। हमें आपको परसुएट करने की कोई जरूरत नहीं, आप हमें परसुएट कर लीजिए, और सवाल का जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, हम आपके खिलाफ कर लेंगे फैसला। My lord, my learned friend is questions. No, sorry. I'm not indulging in conjectures. I'm asking you a question in order to understand the principles that you are saying and arguing and submitting before the court. My lord. I'm not engaging in theoretical argument. My lord. I'm trying to understand the basis on which you are defending the constitutionality of this law. So therefore my question stands. Tomorrow if Parliament were to make this a law and say, let it go back to the Chief Justice in his sole capacity, would that is within Parliament's competence? My lord, if that is so, if it so happens. Yes, not conjecture. This is to establish the principle. You accept that? Absolutely, my lord. Absolutely. This is in Parliament's competence, and if I may say so, my lord. My lord, I have provided assistance. I have, you know, as Attorney General. Absolutely. Yes. Okay. Mr. AG, to your right. Section 2, it provided that the bench, constitution of the bench. Suppose bench is constituted. Who will assign the cases to the benches? Still, this power has not been given in this act. Again, there will be... My lord, the committee determine its procedure, and then it, with regards to how the meetings are to be, the committee itself. Who will assign the cases that this case will be fixed before this bench? And one thing more, if 2 members, senior members, comes to the conclusion, say tomorrow the Chief Justice will sit in Quetta registry for 1 month, for 6 months, or for 1 year. Is it possible? My lord, what would we do if this situation occurs? My lord, the committee has to, under subsection 2, after the commencement of this act, the committee had to hold its first meeting for the purposes of determining its procedure, and which would have included when and how the meetings were to be held, and the constitution of benches, etc. But that never happened, because the law was suspended, or well, the bill was suspended before it became an act, which was also, if I may say so with regret, was a first. My lord, this is exactly what under subsection 2 the committee is to do as the first. We will regulate through rules. They will regulate this act through rules. My lord, the committee will determine its procedure much the way the Supreme Judicial Council's procedure has also been made. It's not necessarily, I don't know what their relevance, what their status is, an SRO or as a rule or whatever may call it, but the committee can determine its procedure, and it will be a procedure of the committee for the purpose of its functioning. Now, Section 3, my lord. Section 3 is exercise of original jurisdiction by the Supreme Court. Now, there was a question which was raised and which was asked when the petitioners were arguing that the committee is to first see whether the matter is
it has to come before the committee to determine if there is a question of public importance with reference to enforcement of fundamental rights, and if the committee thinks so, only then it will constitute a bench. And there was a question raised from the bench that would this not be an administrative power controlling a judicial function? And my response to that, my lords, is that if it is determined, it is held that it is an administrative function and it cannot be performed in a manner to control judicial powers, then my lords would surely come to the conclusion that this court will never exercise suo motu powers either, because while exercising suo motu powers, it is either previously it was the Chief Justice who first determined whether the matter was of public importance and relatable to enforcement of fundamental rights, and then constitute a bench. This is this tension which my lord had also while authoring judgment, rendering judgment. This doesn't answer the question whether the threshold of 184.3 is to be decided by the committee, as this law suggests, or whether it is the function of the court, whether it's a judicial power. That's the fundamental question, that is this not a judicial power? Because there is a threshold, you say so yourself that there's a threshold. So how can a committee be deciding it? And again, it goes to the fact that if the committee decides that this doesn't meet the threshold, then the person that has filed the petition, they can't challenge that decision? My question is, there's a distinction between what is filed under 184 and suo motu, and that's why, my lord. My question is, if the Chief Justice, just one person, as a master of the roster, could decide whether to take a suo motu or not, why not a committee? Yes, and that is why my response was that further if providing guarantees, and my only question is, are we not accountable to the litigants? Absolutely. The Parliament is the representative of the litigants. If they want to change our procedure because they are not satisfied with our internal or institutional independence, that's their prerogative. And we are there to serve the litigants. And if I may, my lord. Normally, you see, the cases would be marked by the Chief Justice, even if it's a 184.3. So I think the question of judicial power is secondary. First comes the constitution of the bench, and then judicial power is going to be exercised. Here we're talking about the constitution of the bench. It doesn't impair any judicial power. The question is, earlier the Chief Justice would mark the case to somebody. He would certainly mark it. I mean, I as a judge would not hear any case unless it's marked to me. And then all it says is that instead of the Chief Justice, the committee marks it, so judicial power is not in any way impeded, because judicial power comes after the bench. Section 3 talks about invoking of jurisdiction, and that is what I was addressing. Specifically states that the committee would examine. The word used is examine, and that's what I was addressing. For examination. This half-hourly clock is brought to you by ये जो ओवरलैप हो गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, you would have to inevitably hold that going forward there will never be a suo motu exercise of powers, because that's exactly what the Chief Justice to do. They will first examine it and then constitute a bench, और यही वो tension थी जो आप paragraph 53-54 Please take one question from this side, AG sir. Oh, sorry. The Article 184 begins with the word Supreme Court. What does that mean? Supreme Court means all the judges or only the Chief Justice? It's what Article 176, your ladyship, says is the Chief Justice and the judges of the Supreme Court. 184 I'm talking about. जी, तो 184 में जो Supreme Court है, Supreme Court को जो है वो 176 से flow करेगी. जी. 176 में Supreme Court का मतलब है Chief Justice and all the judges. All the judges. No single person is the Supreme Court. It's all of you who are the Supreme Court. So while exercising jurisdiction, अब ये हो सकता है कि आप ये कहें कि नहीं, ये सेक्शन 3 जो है ये इस तरह से नहीं होगा, इसको हम रीड डाउन करेंगे और कोई भी एक्सरसाइज सारी कोर्ट बैठेगी और वो पहले देखेंगे कि ये थ्रेशोल्ड मीट होता है या नहीं होता है, and then you mean to say that committee that could be Mr. Attorney General, the committee is constituted of 3 members to see whether the case do fall within the ambit of 184.3 or not. The litigant would be invited to argue, or that would be only seen by the members of the committee themselves.
if 2 out of 3 comes to the conclusion that it is not a case fit for to proceed with Article 184(3), would it not be defiance of right of audience and the Article 10A and all other due process? In continuation, and what remedy would be available to him, because this is an administrative order, they cannot be challenged in appeal except the chamber appeal under the rules. Mr. Attorney General, Section 3 is not actually saying that he's going to dismiss the petition at the administrative side. It's simply saying we look at the petition as the Chief Justice looks at the petition. He looks at it, it says a 184(3) petition, he marks it to a bench. It is not saying there is no consequence. Suppose he thinks there is no question, he'll mark it to some other bench. It doesn't say he'll dismiss the petition as to give a hearing to anybody. This is just to look at the file. My lord, ये जो threshold है administrative side पे day in day out basis पे हमें cross करना पड़ता है litigants on this side. जहाँ पे objection आ जाते हैं registrar के कि ये meet नहीं. What's been happening? Number of 184(3) petitions have come up that the office has put objections. Yes. Not the judge, the office. Yes. जी one very low. बिल्कुल. ठीक है, उन्होंने objection लगा दी. Not does not come within a parameter. chamber appeal में जाना पड़ता है. They've come to me, some of the absolutely ridiculous kind of petitions. They're dismissed in my chamber against an appeal is filed. The fact that you don't make available 184(3) does not mean you can't file a civil suit, does not mean you can't file an FIR, does not mean you can't go to 199, does not mean any other remedy. So this is done every day, we do it. Not 3 judges, 1 assistant registrar in the branch office is not maintainable, उसके खिलाफ अपील आती है. वो कितने लोग सुनते हैं? 1 जज. उसके खिलाफ क्या अपील है? कुछ भी नहीं है. End of story. ठीक है, तो यहाँ वो भी जुरिडिक्शन बढ़ गया है. वो आपने हमें वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास हमें दे दिए हैं, उसके पास होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास, तो रहने दें उसके पास, वो बेहतर तयन कर लेगा. जो खुश नहीं होगा वो अपील में होगा. अब तो ये तो बल्कि ज़्यादा उसको अहमियत दी जा रही है, रादर देन उसको निगेट कर रहे हैं. और राइट तो नहीं है 184(3) का. राइट आपके सारे महफूज हैं, जो आइन देता है, जो कानून देता है. ये नहीं कि आपने 184(3) की पिटिशन डिसमिस कर दी, 99 में आप नहीं जा सकते हैं, या आप सूट नहीं फाइल कर सकते हैं. जो भी चीज़, यहाँ तो लोग अजीब अजीब चीज़ें, जी मेरा इससे पैसे उधार हैं, वो जाके 184 डाल दिया उसने, हमने उसको डिसमिस कर दी. रजिस्ट्रार ने राइटली मेंटेनेबिलिटी भी किया, अपील है, हमने उसको डिसमिस कर दिया. इवन दो जस्ट वेस्टेड अननेसेसरी टाइम ऑफ अ जज ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. So I don't know what are we taking away? Back to the same question, what are we taking away? इसमें इस वक्त क्या सिस्टम चल रहा है? 184(3) में सिस्टम क्या चल रहा है? 2 सिस्टम्स हैं. एक है कि जब कोई पिटिशन आती है, जब कोई पिटिशन फाइल होती है तो वो ऑफिस के इससे होके जाती है. रजिस्ट्रार ऑफिस वुड फर्स्ट एग्जामिन वेदर इट मीट्स द थ्रेशोल्ड और नॉट. इनफैक्ट उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं मीट करता, एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर. यू फाइल अ चेंबर अपील. सो दैट इज वन राउट. द 184(3) का दूसरा है सुओ मोटो. नाउ this provision, in fact, cures the problems in the process on both counts. First, 184(3) की जो registrar ये power exercise कर रहा था, that power has now been given to this committee, the 3 senior most, Chief Justice and 2 senior most judges. You see, the power of registrar could be appealed in chamber, but in 3 members committee, where the appeal lies. It is the 3 judges, my lord. 3 judges. ये बात ठीक है कि उसमें ये बात हो सकती है कि जी उसकी कोई आपको जो है वो फिर आगे हेयरिंग नहीं होगी, हेयरिंग नहीं होगी. मगर जी साहब आप ये बता देना कि अगर 2 जजेस या 3 जजेस बेंच चल रहा है, जैसे कि पुराना सिस्टम है, उसमें एक अगर 3 मेंबर समझते हैं कि दिस इज केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वो रेफर करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस इनकार कर जाता है कि तीनों से एग्री नहीं करता. ही हैज ऑल द पावर, मोर पावर. 3 judges sitting in the court. The Chief Justice alone sitting in a chamber can undo this. And the suo moto particularly, उसमें तो और ज़्यादा फिर problematic है, because उसमें तो खुद ही कर रहे हैं, वो खुद ही examine कर रहे हैं. 3 में भी the process is that if the committee thinks that it's a matter of 184(3), they'll mark it to a bench which is not less than 3. If they think it's not, they'll send it to a 2-member bench maybe, or whatever. It's not throwing out the list. And my lord, as my lord the Chief Justice has just observed, it is not that other than 184(3), the constitution of this country or the laws of this country do not provide any remedy.
May I add to this? May I add to this? My lord. All that the committee will be doing, raising an objection. Yes. Objection to the effect, and that is for us internally to provide an appeal against My lords that can objection. suitably amend the rules You and see, perhaps again, provide an appeal. the question is that since 1980 had not amended our rules, that is why the Parliament was forced to amend them. Had we amended them ourselves, because the bars were raising questions, the public was raising questions, the litigants were raising questions, we actually forced the Parliament to do it for us. And everyone, there's consensus that this is exactly, अब इस वक्त हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है, पार्लियामेंट ना करती आप कर लेते. But what when we are refusing to do that? And that is exactly what has happened. Being 43 years. This act simply says that we've not been doing our job earlier. That is it. And it's saying we'll do it for you because you've been sleeping all this. You were too polite to say that. My lord, we have section 4. I've read that. Section 5. अभी तक जवाब नहीं आया. जी, वो आपने जो बात कही कि जी अब फुल कोर्ट अगर बैठेगी, उसमें उस राइट ऑफ अपील का क्या होगा? पहले क्वेश्चन तो ये है कि राइट ऑफ अपील कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर कैसे आ सकती है जब 184(3) is a constitutional provision and it specifically it does not provide a right of appeal. Where the right of appeal was sought to be provided, it was provided specifically in the Constitution. So aren't you adding to the Constitution or amending the Constitution without an amended Mr. amendment in the General, Constitution? entry 55 says that we'll enhance your jurisdiction तो उन्होंने एक और 84 की अपील बना दी है. तो enhance 185 की भी फिर एक और अपील बन सकती है. बन सकती है. सेकंड अपील तो है, हमें वैसे भी बताया हुआ हमने कि Speaking for myself, Learned Attorney General. Learned Attorney General, speaking for myself. Why not then a third appeal or a fourth appeal or a fifth appeal? It's the Parliament. Parliament won't do absurd things, and of course. It's not a question of absurdity because this undercuts the review, the whole concept of review. The finality of judgments for res judicata is regarded as one of the most fundamental principles of the administration of justice. It surely does. Exception. No, अगर आप बात कर रहे हैं तो ये तो फिर infinity हो गया. नहीं, infinity नहीं है. Obviously, you know, we're talking about the Parliament here, and we're not talking about. आप बात फिर आ जाती है conjecture और theory और ये और वो. बात principle की हो रही है. असूल समझने की है ना. एक दफा एक बात को concede कर दिया जाए, accept कर लिया जाए. In principle, then there is no limit. And therefore, if there is no limit, the question to my mind arises that therefore the power does not exist. Lord, this is the great point. respect. Again, a review jurisdiction भी है ना. Review jurisdiction का क्या concept है कि Supreme Court में finality हो गई. अब आप maximum में review कर रहे हैं. With great respect, when it comes to even on this plane, even on this plane, and I submit that entry 55 sufficiently covers section 5. Can we go to the next point? I'll only add to this, Learned General, there's a distinction. Article 185 explicitly is for those judgments that are rendered by the lower courts. Here the appeal has been provided in 184(3), which is our original jurisdiction. And it's only of a supplemental nature. It's a continuation of the same proceedings, the original jurisdiction. And in a context where this court becomes the first and the final court in the same proceedings. Are you done? My Lord, to this extent, and I'm just going to conclude my other two submissions here. I have placed on with my paper book the judgments of in Baz Mohammed Kakad case and the Punjab Provincial Cooperatives case. They are in volume 2, my Lord. My Lord, section 6 now, right to... there was one concern also raised by Justice Aisha Malik, which was that if we follow this procedure,
then when the full court meets, then the appeal goes away. एक ये भी point था, इसको आप कैसे address करेंगे? Because I mean, one answer could be कि if the wisdom of all is such है, तो फिर वो naturally सब लोगों ने सारे angle देखे होंगे, address करना चाहते हैं. उसमें एक ये बात है, मैंने अपने written submissions में ये कहा है कि आप इसको to that extent read down कर लेंगे. इस हद तक read down करें? जहाँ पे full court होगी, naturally appeal जो है obliterate हो जाएगा. But आप उसको ये कर सकते हैं, sorry sir. Just I'm saying if you harmonize 4 and 5 in a situation where the whole full court is hearing it, the question of appeal does not arise. My lord, ये अब 15 बैठे हुए, so मैं so if it was in original proceedings, it was a bench comprising of 7 lordships on this side, the appeal would have come before the remainder 8 judges, because it had to be a bench larger than the bench hearing the original appeal. In this case, we are before your lordships in original jurisdiction, full court. आप देखिए ना, इसमें ये जरूरी नहीं है कि one jumps from 5 member to full court. अभी 15 जज हैं, ठीक है ना? फर्ज करें एक आर्टिकल 184(3) की जजमेंट वो पिटीशन आ जाती है, 9 member बेंच बन जाता है, फुल कोर्ट तो नहीं है. My lords would be mindful of बात this. सुन, अब ये हो सकता है आप कहते हैं यहाँ पे जी वो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है, तो ये खराब और वो खराब और ये खराब. फर्ज करें 3 member कमेटी कहती है जी हम भी उसमें बैठ सकते हैं, हम राइट ऑफ अपील खत्म कर देते हैं, हम 9 member बेंच बना देते हैं. आप देखिए ना, आप इसको एड्रेस कीजिए ना. ये ऐसी बात नहीं है कि जी द विजडम ऑफ द फुल कोर्ट आ गई तो राइट ऑफ अपील तो खत्म हो गया. What I'm submitting is that now it's a duty cast हो गई है इस कमेटी के ऊपर. अपील पर उसी तरह ड्यूटी पहले चीफ जस्टिस पर भी थी ना. नाउ यू पुटिंग द ड्यूटी ऑन द फुल कोर्ट, तो कोर्ट तो फिर अपनी मर्जी पर ही चल रही है ना. व्हेनेवर इट वांट्स टू डू समथिंग वो राइट ब्लॉक करना चाहेगी. What you are saying is that substantive right that you have created under the statute is again left to the mercy of the court. It will decide कि ये substantive right देनी है कि नहीं. तो फिर आपने ये right दी किस मकसद के लिए? 8 member bench बन जाए, 9 member bench बन जाए, right of appeal खत्म हो गया. So let me just I think what we can do is we can logically interpret the legislation. Now, for instance, when this case was first heard, it was an 8-member bench. There were not enough judges, still aren't, to have heard an appeal, theoretically speaking. Yes. So, unless the bench, the very first day it sat, it decided to strike out this law, that's a different thing. But if it was sustainable, then how could an 8-member bench be constituted to begin with? Because that right of appeal was taken away from day one the bench sat. We are now worried about the right of appeal when there is a full court, but this question should have been raised against those, or when the bench was being constituted, that the law provides for a right of appeal. Here we are 8 of them. There aren't 9 of us available. So how that right of appeal has already gone away. We have decided an important component of this law. Before sitting in the courtroom, we have decided it. Is that correct? Yes. So when we are concerned now, we should have been concerned earlier too. So वो तो गई. Actually जब वो CMAs थी full court के लिए जब आर्ग्यू हो रही थी, उस वक्त ये सवाल बकायदा उठाया गया कि आप कह रहे हैं full court बनाई जाए, आपको तो कहना ही नहीं चाहिए कि full court बनाई जाए, आपको तो कहना चाहिए this matter should be heard by a lesser number. वो CMA की वो hearing पे नहीं गई, but the burden at the end of the day was on us. The question was in fact put by me. And so therefore it's not that the question was not there. My lord, if I may briefly respond to it, followed by a response in writing. Let me add to this. Let me add. मेरे ख्याल से जो मैं गदर कर चुका हूँ और ऑर्डरशिप पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि जब ये पिटीशन ली गई उस वक्त तो यकीनन बिल था. It was not through the parliament. एक्ट नहीं बना था. बनने से पहले सस्पेंड होता जो कि आज तक इनफील्ड नहीं है. अगर ये इनफील्ड होता तो शायद 8-member बेंच उस वक्त भी ना बनता. इसका मतलब ये कि हम एक्ट को मान रहे हैं. अगर हम बेंच पे एतराज़ करें इसका मतलब हम एक्ट को मान रहे हैं. और अगर एक्ट सस्पेंड है फिर तो अगर 8 member बन सकते, व्हाई नॉट फुल कोर्ट? So
मैं इसका brief एक response दूँ and then followed by a detailed response in writing, briefly put, and that would perhaps address ladyship's question as well, but in subject to what we have to submit in writing. Going forward, if this act is upheld and is declared intra vires, the committee at all times would be mindful that there is a right of appeal, a substantive right, which will get obliterated if a bench beyond a certain number, given the numerical strength of the court at a particular time, is constituted. So therefore, that power, that administrative power exercised by the bench. Mr. Attorney General, इसका मतलब है पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया कि जी फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट कभी बैठ ही नहीं सकती. in cases in circumstances हो सकता है, जैसे अभी भी है. Repercussions तो सोचिए आपकी बात की कि यही precisely सवाल है कि इस लॉ की इस सेक्शन की वजह से. So let me put it differently. Now full court कभी बैठ ही नहीं सकती. नहीं, full court आप बैठेंगे. In Article 184 questions which are the most important question that can ever be raised before the court. In exceptional circumstances, it might be so. But does that is that to just take away the right of appeal? Attorney General, the other way to look at it is that if the committee were to have the view that the matter is so grave and so serious that a larger bench which will not provide for an appeal be made, either full court or any large bench, then that be so. I mean, that is how the committee will decide, looking at the issue. So it doesn't take away the power to constitute a larger bench or a full court, but at the same time, it will be saying that it's so important that a collective wisdom will prevail. There is no, I mean, doesn't really, it can be easily reconciled. My Lord, Section 6, right to appoint. Section 5 can be read down. My Lord, to that extent, my Lords can hold that in exceptional cases and when a situation of this sort arises, and be so, my Lord. Right of appeal पे substantive right नहीं है, जो statute. Ladyship, look, we are faced with a situation here, and let me just be very candid now. We have had recording, we have had car case, and we have God knows what not. And all of that has happened under 184.3. With great respect. With great respect. And steel mill is a classic example. Steel mill was in profits at the time when all of that happened, as far as my information goes. It had 12 billion worth of raw material lying there. And now we are faced with an asset which is constantly bleeding us. How many of those were full court? How many of those were full court judgments? My Lord, may not be. यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना. Not be. मैं ये कह रहा हूँ कि इसको reconcile किया जा सकता है. यही तो point है कि एक तरफ आप कह रहे हैं हम right of appeal दे रहे हैं in order to address precisely these kind of things. दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चलो full court बन जाए तो बन जाए. Full court बन जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि there might be issues in time. आप kindly जरा थोड़ी सी. नहीं, there might be issues in time. Implications of your submission तो kindly. उसको ये इस तरह से आपको कर देता हूँ कि आप Attorney General साहब, we are all grown ups, right? Attorney General साहब, can I just the problem arose. I think thousands of articles have been written. Lawyers have spoken about it. We keep talking about the two chariots, but let's place some emphasis on the lawyers also say. There has been allegations, and I can deny it, but it doesn't. Public opinion thinks that 184.3 has been misused. Jurisdiction has been exceeded. Okay? So what you are saying is, first of all, we did not create the mess. You created the mess. We are trying to solve your mess. What did we do? 3-member bench judgment, 184.3, final judgment. Nothing can be done. Now we are concerned about full courts only. What about the 3-member bench judgment? It was a 3-member bench judgment which did Rekodic. It was not a full court or even a large bench. A 3-member bench is the normal, smallest bench in the Supreme Court. So what could you do? Nothing. Now you come in advisory jurisdiction. We have to kind of find ways and means because it's the interest of the country at stake. I would rather surrender my high status and at the feet of the taxpayer public of Pakistan rather than give them a whopping liability of $6.5 billion because the independence of the judiciary, they'll say, what are you talking about independence of judiciary? Independence of Pakistan will disappear if you labor this much of debt on Pakistan, $6.5 billion. It's not easy. We don't understand the repercussion of things.
Fine. I'm not saying that judges who decided that, they did what they thought, time, how they were assisted, according to their conscience, correctly in their minds. Yes, but we make mistakes. Suppose I was a member of this bench. I would love this thing if it came to my mind, repercussions. Okay, now there's a right of appeal. I can undo. Review jurisdiction, you know what the review jurisdiction is. Take the case of Zulfikar Ali Bhutto. Yes. Supreme Court split. Review unanimous, because the scope of review is very different creature. It is error floating on the record, so they didn't even go there. That could not be rectified through review. You had to create 184.3. If आपको simple बोलना चाहिए, अगर आप अपने इतने ज़्यादा काम ना करें, थोड़े हदूद में रहें, शायद हमें इस legislation की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. हमने भी तो थोड़ी गलतियाँ कर ली. हमें देखिए हमारा problem ये हो गया ना, बड़ी बन गई है और तकब्बुर. हमसे गलतियाँ हुई हैं, मुझसे गलतियाँ हुई हैं. मान लें गलतियाँ हुई हैं, ठीक है. हमने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को. मान ले गलती की है, ठीक है. अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है. अगर जज मेड लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर, तो वो तो फिर आइन तो गया. फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया. मैं नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया है. द मिनट आई से दैट, प्लीज फाइल अ against me that I'm violating my oath of office if I say even this, कि I will endorse these subsequent acts. तो हमें मुल्क का भी तो सोचना चाहिए. हमें अपनी सिर्फ अपनी अना और आपको अना और इन ख्वाजा साहब मुझे नहीं पता उनको क्या मसला हो रहा है, उनको हमारा फिगर पड़िए. हम स्यूमोटो हर जगह करते हैं, हमने यहाँ क्यों नहीं स्यूमोटो किया? Why are we waiting for him to bring an act? 10 petitions आ गई, पब्लिक में से तो कोई नहीं आ रहा है. पता क्या मसला है लोगों का? उनके तो कोई मसले नहीं. वो कहते हैं भाई हमारा केस चला के. Sorry, I'm diverging, but we have to see the larger picture also. We have to see work within the constitution where every citizen gets his due. But what are we doing? What are we taking away from him? Focus on that. Nothing, my lord. And section 6, my lord. इसमें Attorney General साहब law reforms ordinance के तहत there's a right of appeal. लेकिन कई cases में, depending on the issues, the high courts constitute larger benches, and therefore that right of appeal is not availed. लेकिन जहाँ तक देखें ना, जो अभी बात हुई है, 184.3 is discretionary. Now, यहाँ पे जितनी बात हुई है, even the petitioners, their counsels, they all agree that this law is in the interest of the litigants. It actually enhances access to justice. So why shouldn't we just not exercise our jurisdiction? Because in exercising jurisdiction, we will be going against the interests of the litigants. Why should we go against the rights of the litigants? It is in their interest and in their favor. एक प्रॉब्लम अभी जो अपील के बारे में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज आंसर टू इट. सपोज आज हम 15 बैठे हैं, कल 2 वैकेंसीज हैं, वो भी फिलअप होती है, 17 के 17 बैठते हैं. इशू यहाँ पे ये कि अपील की रेमेडी नहीं हो, इस एक्ट के तहत अवेलेबल नहीं हो. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 181 में, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो a judge from the High Court can be asked to act temporarily judge of the Supreme Court. तो वो आपका एक्ट कहता है कि larger bench will hear the appeal. So add one judge. This is larger bench. Appeal is there. No problem. I think problem is solved by the Constitution. The remaining judges would be the same. Yes, of course. फैसला तो वही आएगा. This will just like review. आपने conclude कर लिए. My lord, I just now the section, as far as section 7 is concerned, I've already submitted. I think this provision surely addresses the concerns of the litigants, fixation of cases under section 7. Provision of intra-court appeal, that is to be seen. Intra-court appeal जो आपकी है, उसको देखना है. इधर सिर्फ प्रॉब्लम ये जो आपने रिट्रोस्पेक्टिविटी दी है इस लॉ को, उससे हमारी पेंडेंसी और ज्यादा नहीं हो जाएगी. My lord, at one end, now my lord would have to see हम सारी बात ठीक है मान लेते हैं जी, आप इंटरेस्ट कर रहे हैं, उधर आप उसको रिट्रोस्पेक्टिव, अब आप सोचिए 185(3) का और आप इस तारीख से दे रहे हैं, यू गोइंग बैक अप, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू देन? वी द होल विल बी गटेड.
How many cases would there be, my lord? And no limitation period is here. ये तो आप ना करें ना. My lord, ये थोड़ा I सा think what has been what the parliament has, चलो ठीक my है. lord, what the parliament has tried to address here is. You see, it is very open-ended. Prior to the commencement of this act, so it will go to 1947 or what? जितने 185, 73 से शुरू हो जाएंगे. My lord, 1947 तो नहीं, 75 में पहला हुआ था. इसमें there is open-ended ना. And then you have fixed a limitation of 30 days for filing appeal prior to commencement of this act. Means all previous decisions, all persons can come to this court within 30 days after the sustaining the. I think 30 days have expired. I don't know how many came actually. ये बताइए अटॉर्नी जनरल साहब, जरा ये मालूम करें दफ्तर से कि इस इनैक्टमेंट के बाद अपील कितनी फाइल हुई है इस प्रोविजन के तहत? वैसे नहीं हुई होंगी because the law was suspended. Okay. Couldn't have taken effect. फिर एक और छूट जाएगा ना. ये बताइए कितनी दफा इस कोर्ट ने मार्शल लॉज को और डिक्टेटर्स को वैलिडेट किया है? Can the people of this country file appeals and have those judgments annulled? Why not? I would hope so. I think this is our accountability. Let us be open about it. Why do we fear if it's... Otherwise we'll be brushing things under the mat. 1975, Manzoor Ilahi was the first case under 180. And thereafter, after 13 years, it was Benazir Bhutto case, 1988. ज़्यादा जो jurisdiction exercise हुई है वो perhaps Where do you 15 draw साल the में line? हुई है. Where do you draw the line? I mean, the question is, if there is transparency, then let it be. Why brush something under the mat and look into some? Why? My lord, let's undo Federal Shariat Court Maulvi Tamizuddin Khan case. Effectively, it won't mean anything, but maybe it will look good. I don't know. Because he's dead or whatever, long past. Go on. My lord, I would conclude my submissions with this. I have the written submissions along with reliances. I have noted down one question जिसका detail में ये section 6 पे भी बता दीजिए, Learned Attorney General, ये जो आपका right to counsel. Yes, because it is already covered under Article 188 of the Constitution. उसमें Order 26 Power of the review. जी, Order 26. So you have said that the party shall have the right to counsel of its own choice. पहले जरा my lord का 188 पढ़ लें जो refer कर रहे हैं my lord. 188 is the Supreme Court shall पढ़ लें जरा. have power subject to the provisions of any act of Parliament and of any rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it. Yes. So this power under the power of review. The council का provision rules में डाला गया है ना. The Order 26, Rule 6. Order 26 deals with the review, the Supreme Court rules, and Rule 6 is the rule where the court... No, I am only asking about the change of counsel, why this provision has been created, because the new counsel will come and he will argue the whole case as an appeal, because you know the scope of the review. Normally the counsel who appeared originally, he came in review and we hear him. New counsel will come with new fees and with new motivation and new energy. Then he will try to argue the whole case again as an appellate jurisdiction. And actually the wisdom... I think my lord has made a very valid point. If I was to sit in a court, first question I would say, yes, where did you take this point in your pleadings? Yes. And if he hasn't, he hasn't. I mean, my answer to him would be, he can't, arguing is like arguing, but we will go by the written, you didn't take this point. Khatam jao bhai. वो review में वो appeal का power नहीं हो जाएगा उसके पास. Review नहीं grounds. उसकी wisdom यही थी ना कि counsel, the same bench, same counsel. Same settings. What transpired last time in the hearing, what questions he had agitated. अपनी भी wisdom. My lord, अब जैसे for example, I am assuming that the proceedings of this courtroom are transcribed and they are, we have the transcripts desired or required. Technology can be used, but that said, if there are submissions and obviously people file their concise statements or they bring their petitions, file their responses or make written submissions, nobody can go beyond that. Now, if a council, the new council comes before your lordships and make a point which is beyond the pleadings before your lordship or any written submission What is the purpose of, what is
Was introducing this section. Why new council? We totally lawyers demand. मेरे ख्याल में lawyers demand थी. अभी वही सवाल आएगा तो what is the fundamental right which is lawyers का demand था या किसका litigants का demand था? Philosophy क्या है इसके पीछे नए वकील को लाने की? My lord, न्यूयॉर्क बार का जो इम्तिहान होता है तो उसमें कोई 35% हर साल में 2 दफा होता है तो फेल हो जाता है. जो हमारा यहाँ पे जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें there is issues, so मैं मजीद नहीं कहता. बता दिया आपको. Mr. AG साहब, towards right. 188 says subject to Act of Majlis Shura. Whether any act has been promulgated to regulate this article prior to this act. Is there any act? My lord, there was an act, review of judgments in order to well, this particular provision actually was also included in that act, and a 3-member bench struck that law. It was subsequent to this law. It was not prior to this act. Subsequent to this, but it came decided before. There was no act. There was no act. No. So the things were going on unconstitutionally. Under Order 26. Unconstitutionally, because the Constitution says to act and the rules. And the rules. Both, so there was Order 26. There is no or, there is and. And. So both must be there, act and the rules. So where is the act? My lord, here you would read it interchangeably perhaps, but in order to protect Order 26 and the Supreme Court rules, and it was being regulated. One question I have of a general importance. When I'm sitting in a court of law, am I bound by the Supreme Court rules? Or rules are an aid of administration of justice, and rules bind the counsel and the litigants but does not bind the court? What is your position on that? Am I bound to follow the rules of 1980? I mean, like for instance, Order 33 says I can condone delay, I can do various things. So it is there to be followed by litigants and counsel, but there may be cases of extreme injustice. We may overlook, for instance, in criminal matters, we rarely even ever dismiss things on grounds of limitation, though it is provided that it has to be filed within a certain period of time, because the liberties of the subject, we haven't given a decision on it. So, but I think rules are really to show us, guide us, not really to bind us. Actually, rules acknowledge this. Order 33, Rule 6 actually says so. That, overall it says that rules shall, nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the court. At the end of the day, it's not so important, significant document. My lord. It is practice and procedure. These are all और वो भी हमने Order 47 को connect कर दिया in civil proceedings, civil procedure court के साथ. So these are not, I mean, these are not like ironclad things, but we cannot, we'll see where the justice of the cause lies, and of course it doesn't mean they're totally irrelevant, so we will see when it's appropriate. It may be a case, it may be a bad case, I don't know. So आपका you conclude या कुछ और रह गया आपका? Lord, I have concluded. Attorney General, if I may ask a question, Well, if you are not bound by the Supreme Court rules in terms of whatever the Supreme Court rules say, but we are bound by Act of Parliament in regard to our own practice and procedure, do you think that is a constitutionally viable position? My lord, then if the rules are made by the full court on the administrative side, and any particular bench can say, well, goodbye to the rules, why shouldn't that bench have the right to say goodbye to the act? My lord, my response to that would be that both the preamble, from which we draw those salient features. No, I think the thing is the that independence when the Supreme Court is sitting as a court of law, what is it bound by? If it's not even bound by its own rules, why should it be bound by Act of Parliament? My lord, the rules say maybe that particular bench can say, well, we don't recognize section, what is it, section 6, and another bench can say, well, we recognize section 6. My lord, I mean, why should not your this law that you're defending, I think that be put in the same category vis-a-vis our own rules? If we are not bound by one, why should we be bound by the other? As I view it, I think priority number 1 is Constitution. Number 2 in scale of importance is law. Number 3 is rules. Then come regulations, then come notifications, then come whatever you want to, instructions. So this is, in my mind, I go by that approach. I may be wrong.
My Lord, the rules, actually Rule 6 of Order 33 itself acknowledges that. I think the Constitution actually abuse of process नहीं होगी, ends of justice को meet करने के लिए you're not. Attorney General, the rules actually come out of the Constitution, and Constitution says the court has to be regulated. So I think that, in my opinion, certainly the rules regulate the affairs and we're bound by them. And they might be in the trajectory starting with the Constitution, law and the rules, but all of them are binding, and that's how the system works. And my lords would also acknowledge that this is not a case where Article 199 per se has been challenged on it being violative of salient features for that matter. Of course, even if that was so, both 191 and the preamble from which the salient features flow were enacted at the same time. It is not a subsequent amendment where relying upon Kesavananda Bharti or DBA Rawalpindi matter could have proceeded. So when the preamble, when the Constitution was being made, 199 has not undergone any amendment ever since. So therefore, my lords, my respectful submission would be that this act, my lord, be declared constitutional and the petitions be rejected to that effect. And nothing in this act in any way undermines the independence of judiciary, nor has any externality been introduced where any other organ of the state or branch of government has been given any role whatsoever. Hopefully these are your final words. Hopefully. Attorney General, sir. I'm going to answer. Attorney General, sir. My lord. आपने कंक्लूड तो कर लिया, बस एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर फर्ज करिए कभी इसको हम अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर कर देते तो बात ख़त्म हो, लेकिन अगर इसको हम कहते हैं कि वैलिड लॉ है, वैलिड लॉ हो जाएगा वहाँ जब ये बना था। इन बिटवीन जो फैसले हुए हैं, व्हाट इज द फेट ऑफ दोज डिसीजंस? अगर वैलिड करते हैं तो फ्रॉम दैट डेट होगा, तो फिर क्या होगा? इसके बारे में आप बता दें। They become past and closed transactions in several instances in the past where a similar situation or a situation arisen where legal position had changed, but cases were decided or transactions had happened. The courts protected those under past and closed transactions, so that would be the effect to matters which stood decided. Can the committee not retrospectively, suppose if the law is sustained, can the committee not retrospectively grant permission? The bench was constituted, assumed as if by consent. Let's put it like that. I don't know if that's possible or not. Stand aside. As if by consent. Let's put it like that. I don't know if that's possible or not. Cases which stand decided, they stand decided. अगर हम ये भी कर लें कि अगर कोई बहुत ही ऐसा unusual case आ जाए, I don't know. My lord, I don't know where the line would be drawn. But in so far as I think जी मैं इसको भी एड्रेस कर दूंगा. ड्यूरिंग द पीरियड की बात हो रही है ना, जो केसेस इस दौरान जो हुए फैसले हो गए, उनका क्या बनेगा? So जो केसेस लिस्ट अब पेंडिंग ही नहीं है और वो डिसाइड हो गए हैं केसेस during this period. जी पीरियड, उसको अब आपको देखना होगा कि उसको आप पास्ट एंड क्लोज में प्रोटेक्ट करते हैं जो फैसले हो गए. इतना पास्ट नहीं हुआ, अभी कई बात है वो. I think that is something that my lord would have to see if my lord wish to protect them. Thinks of all the angles. This is possibility, that is possibility. So this is a possibility. We're just airing it. We don't know the answer. उसमें दो चीजें हो सकती हैं. एक तो डिफेक्टो डॉक्ट्राइन को हम देख सकते हैं, दूसरा राइट ऑफ अपील हो जाएगी. So they can, जिनके as far as 184(3) is concerned उसकी होगी, जिनकी नहीं थी 184(3) वो तो सिर्फ बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन तक रह जाएगी बात. उसमें आप देख सकते हैं कि वो तो जुडिशियल. It won't be a classic. देखिए दो किस्म के होते हैं, एक होता है classic quorum non-judice. ठीक है, this won't fall in that category. It will be simply a procedural lapse. Whether a procedural lapse will affect the outcome, the cases which stand I don't know. I mean, क्योंकि एक तो होता है ना सब्सटेंटिव राइट किसी की गई, बोले आपका क्या राइट किया? वो डिसाइड हो गए केसेस, वो पास्ट एंड क्लोज. नहीं, पास्ट एंड क्लोज का लफ्ज क्या अगर हम कहें, देखिए एक होती है यू सब्सटेंटिव राइट हैज बीन टेकन अवे. भाई ओके, दीस थ्री डिडंट हियर इट, दोस थ्री हर्ड इट. आपको क्या फर्क पड़ा है इससे? Are you with me? So I'm just thinking aloud. Understood. So it does not, let's say, there is no it substantially कोई offend नहीं किया किसी राइट को. कोई
It was a matter of procedure. और अगर कोई जैसे कहा कि कोई बहुत ही चीज हो गई ऐसे वो रिव्यू तो पड़ा हुआ है फिर भी और ये अपील पड़ी हुई है 184 में तो And in any event, I mean, it was a bench comprising of your lordship. No, we don't want to kind of create a situation where things don't function. So भाई वो उसको क्या पड़ेगा? जब आपने मेरा अदालत में सुन लिया या सरदार साहब की अदालत में सुन लिया, कोर्ट तो थी ना, वो तो गलत कोरम जुडिस होता है ना, गलत अदालत अब चलेगा। इख्तियार ही नहीं था to begin with, हमारे पास इख्तियार तो था। बस सिर्फ वो एक practical procedural matter that would be really for us, not for the litigant. उसको क्या पढ़ना है? No, I would say, my lord, and that I think to that extent. I don't think that it will affect the decided cases. It has become past and close. I think that's the only fair conclusion that we can arrive at, insofar as we're just going to take a short break. Let Faiz Saab and others and any other from the petitioner side. I see Mr. Bandari. You are for the petitioner or the? Your lordships had put various political. No, who are you for? I am for PTI. Which side of the divide? I am supporting the petitioners, but I am also not saying that Article 191 is completely outs the powers of the Parliament. I would really like to hear you. Anyone else from this side? Petitioner. तो अगर आप लोग articulate जरा कर लें, we'll take a short break. My lord, I have actually filed my written submissions. नहीं, अगर why are you depriving us the pleasure of hearing you? Unless you want to deprive us, that's fine. No, not at all, my lord. I'm here. चौधरी साहब भी हैं. तो and of course we won't rush it. आप अपने जवाब भी दे दीजिएगा जो आप देना चाहते हैं. And we'll just come after. Short, I think prayer time is also there. Short break, huh? And if I may be granted leave, I have to. As long as you leave somebody here who will know all the things, and then, if required, submit the. If you think, if you don't want to, we can't force you to submit a reply. But it may be in your interest to do so. Mr. Attorney General, best wishes from all of us on the assignment that you're on. It's in the national interest, and it's very important for Pakistan. So our best wishes. My lord, I hope you are well prepared. 22 questions मुझसे पूछे हैं जी. You asked me. आते वापस आते. नहीं, 22 questions में you like me to ask you to answer now, or you want me to give me some time to. नहीं, हम जरा वापस आ जाते हैं. फिर आपको कुछ सुनते हैं. अगर कोई बहुत ही पेचीदा सवाल हुआ, फिर हम देखते हैं. पेचीदा सवाल तो सारे ही हैं. But देखिए, petitioner always comes prepared of all the questions कि ये सारे आ सकते हैं. तो वो देखें, other side can say that, but you are the petitioner. May I say something? जी. That देखिए, ख्वाजा साहब जरा बात समझने की कोशिश करें ना. The functioning of the Supreme Court has ground stand still. I don't want that to continue. मुझे आप इजाजत दीजिए. ठीक है. मैं ये 22 सवाल जो हैं, मैं इनका जवाब लिख के आपको दे देता हूँ. चलिए, आप हम वापस तो आते हैं. इनको तो सुनेंगे ना बंदारी साहब को. शायद आप मुतमईन हैं साहब को तो मैं ये ऐसी जबरदस्त बात करें आप. बंदारी साहब को जो है मेरे पास आ चुका है जी. मुझे आप इतनी दीजिए. देते हैं, वापस आके देते हैं. देखते सुने तो कुछ थोड़ी बात देखना तो ये है ना कि पार्टीज क्या कहती हैं, वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी चाहती हैं या नहीं चाहती. सुनकर मौक़िफ़ हमने नहीं सुना अभी तक. थैंक यू. यू कैन गो देन लीव समवन हियर कॉम्पिटेंट. हाँ, थैंक यू. ओके, टाइम क्या दे रहे हैं? 15-20 मिनट. 15 मिनट. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुताबिक अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया है, समाअत में वक्फा लिया है. सुप्रीम कोर्ट की ये प्रोसीडिंग अभी जारी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के हवाले से, लेकिन अभी चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत में वक्फा लिया गया है. इससे पहले हमने देखा था कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी अपने दलाइल दिए गए थे और फुल कोर्ट, ये 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट है जो पहली बार इन अपीलों पर समाअत कर रहे हैं. मुल्की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये कार्रवाई बराह रास्त नशर भी की जा रही है. दौरान समाअत वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने भी दलाइल दिए और चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब तमाम जजेस हैं. जब यूफोन 4G देगा सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB डेटा, 450 ऑफ नेट मिनट्स, तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ब्रांड. क्या है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट? स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे, ये सब डैमेज की निशानी है. इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर. इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे.
इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये मेरे बाल हैं। I love it. डव इंटेंस रिपेयर, डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से। कामयाब मुस्तकबिल को चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। ADP, BS, MS, PhD प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। www.uskt.edu.pk। बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवर क्रीम। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन E लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। हमें पूरे 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए तो जरासीम नहीं जाएंगे। धोते जाओ धोते। हाँ? धोते जाओ धोते जाओ धोते। बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? नया लाइफबॉय सुपरफास्ट हैंड वॉश अब विटामिन्स के साथ। ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. जब यूफोन 4G देगा सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB डेटा, 450 ऑफ नेट मिनट्स, तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ब्रांड। एसा आंवला शैम्पू, असली आंवला की खूबियाँ जो बालों को दे 2 गुना ज्यादा मजबूती। निसा आंवला शैम्पू, अब मेरे जैसे खूबसूरत बाल हर लड़की के पास। चेहरे पे रहे न स्पॉट्स न कील छाइयाँ, स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। बैरून मुल्क में अनथक मेहनत से कमाया गया पैसा हुंडी और हवाले के जरिए भेजकर खुद को और मुल्क को नुकसान क्यों पहुंचाएं? हुकूम की मुंतकली और गैर मुल्की ज़र मुबादला का लेन देन हमेशा मजाज एक्सचेंज कंपनी से करें और कंप्यूटराइज्ड रसीद जरूर हासिल करें। ये महफूज भी है और जायज भी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, मईशत में मददगार और मुल्क की तरक्की में मावन। बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवर क्रीम। नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला जो बालों की जड़ों में जाए और दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हाय गर्ल्स, आई लव गोइंग आउट, लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए पामोलिन नेचुरल्स मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, सो सॉफ्ट, you're glowing. Palmolive Naturals, you can feel it. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. अलकबीर ऑर्चर्ड, लाहौर के सबसे बड़े KFK गोल्डन इंटरचेंज पर वाक़ थीम पार्क और डिज्नीलैंड, वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी क्लब और कुशादा मेन बुलेवार्ड। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से। A project of अलकबीर डेवलपर्स। एसा आंवला शैम्पू, असली आंवला की खूबियाँ जो बालों को दे 2 गुना ज्यादा मजबूती। निसा आंवला शैम्पू, अब मेरे जैसे खूबसूरत बाल हर लड़की के पास। ऐप डाउनलोड करें और राइड बुक करें, OTP दें और राइड शुरू करें। ना कोई इंतजार और ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस। ग्रो विद अस। कॉल नाउ फॉर फर्दर डिटेल्स। द मूवर्स, मूव करो सेफली। So juicy, so yummy. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. It's Nisa Hair Remover Cream. बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवर क्रीम। आए मिलकर जिम्मा उठाएं, बनाएंगे कराची का सबसे बड़ा और जदीद तरीन कैंसर अस्पताल, शौकत खानम हॉस्पिटल कराची, जहां होगा मुस्तैक मरीजों का मुफ्त इलाज। क्योंकि जब हम पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे तभी तो इख्तिताम तक जाएंगे। कहीं बोटियों से फाइट है, कहीं हेल्दी डाइट है, कभी कोफ्ते की डिलाइट है, तो कहीं कोरमे की साइट है। But don't worry, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। कहा था ना, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा।
चेहरे पे रहे न स्पॉट्स न कील छाइयाँ, स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। इधर उधर दी गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तूत स्याह प्लस मलट्ठी लेके आना। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। इससे पहले हम देख रहे थे कि आज इस एक अहम मुकदमे की समाअत हो रही है और इस समाअत की सबसे अहम और बड़ी खबर ये है, ख़ास बात यह है कि ये समाअत बराह रास्त टेलीकास्ट की जा रही है। तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी चीफ जस्टिस की जानिब से किसी भी मुकदमे की बराह रास्त समाअत को टेलीकास्ट करने के हवाले से बात हो और फिर उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको एग्जीक्यूट किया जाए। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा करना कैसा है, इसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तक इसकी प्रोसीडिंग जारी है। अभी एक मरतबा फिर वक्फा लिया गया तकरीबन 15 मिनट का और उससे पहले अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी दलाइल दिए जा रहे थे और अभी तक इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामने आना बाकी है क्योंकि दलाइल अभी जारी हैं और अभी तक हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि अभी फैसला हुआ नहीं है। लेकिन अभी तक की जो प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये ज़रूर रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है। ये एक जुमला ख़ास हामिल भी है और इससे पहले हम आपको ये बता दें कि 15 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, इस एक्ट के हवाले से समाअत कर रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं आज की प्रोसीडिंग के हवाले से कि अभी क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, कौन कौन से दलाइल दिए गए, वकला की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से क्या कहा गया है क्योंकि समाअत अभी जारी है, अभी सिर्फ वक्फा हुआ है। जुल्करनैन, वेलकम टू द शो। अभी हमें बताइएगा इब्तदाई तौर पर इस समाअत का क्या अहवाल रहा है, अब तक कहाँ तक बात पहुँची है, आगे मजीद कितना वक्त लगेगा और क्या लग रहा है आपको कि अभी ये समाअत मुलतवी हो जाएगी, फैसला सुनाएंगे जजेस? देखिए, अभी तक जो सूरत हाल है उससे लग तो यही रहा है, खासकर जो जस्टिस फाइज ईसा जाते जाते इंडिया भी देकर गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सारा निज़ाम रुका हुआ है। बेंचेस की तश्कील के मामले के हवाले से जो कानून बनाया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके ऊपर उसमें इम्तना देने से, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये कंटिन्यू करें। इसलिए कभी इम्कान इस बात का कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ इस समाअत को मुकम्मल करेगी बल्कि या तो कोई मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा, अगर अदालत मुख्तसर हुक्मनामे के नतीजे पर ना पहुंची तो कम अज कम जो उसमें इम्तना जारी किया गया था 8 रुकनी बेंच की जानिब से, जिसके 7 मेंबर जिस वक्त भी 15 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उस हवाले से कोई ना कोई ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर अदालत का जरूर आ जाएगा ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो चलता रहे। सुबह 11:30 बजे ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी और जिनमें एक वक्फा पहले 40 मिनट का है, दूसरा 15 मिनट का हुआ है। इसमें अब तक जो मेन फोकस रहा है वो 3 से 4 सवालात ही हैं जजेस जो बार बार कर रहे थे और वही अब तक की सारी समाअत की फोकस है। पहला सवाल ये था कि आर्टिकल 191 है आइन का, जिसके मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंतजामी अमूर चलाने के लिए खुद से अपने रूल्स बनाए कि और फुल कोर्ट जो तमाम जजेस पर मुश्तमिल है उसने 1980 में वो रूल्स बनाए थे, उनमें कोई तरमीम करनी हो तो वही कर सकती है। क्या उन रूल्स के होते हुए और आर्टिकल 191 के होते हुए पार्लियामेंट ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो मैटर्स हैं उनको रेगुलेट करे? दूसरा सवाल ये उठाया गया जजेस की जानिब से कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक आइन में नहीं दिया गया, तो क्या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया जा सकता है, या इसके लिए आईनी तरमीम करना जरूरी होगी? क्योंकि इस हवाले से जजेस का एक सवाल, आर्टिकल 185 में अपील का हक दिया गया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। अगर ऐसा मुमकिन हुआ, अपील का कानून साजी से दिया जा सकता हुआ, फिर तो एक अपील की हक की जगह दूसरी अपील भी आ जाएगी, तीसरी अपील भी आ जाएगी। ऐसे में जो नजरसानी है, वो जो नजरसानी का आर्टिकल 188 वो गैर मुख्तर होकर रह जाएगा। तीसरा सवाल अहम सवाल था जो जस्टिस सरदार तारिक की जानिब से आखिर में उठाया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को दुरुस्त करार देती है, इस कानून को, तो अब तक जो फैसले हो चुके हैं इस कानून की मअतली के दौरान उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या वो बरकरार रहेंगे या वो रिवर्स हो जाएंगे? जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से बड़ा अहम सवाल उठाया गया जिसको 3 से 4 जजेस ने एंडोर्स भी किया। कुछ चीफ जस्टिस ने भी उस पर अटॉर्नी जनरल से राय मांगी कि अगर फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फैसला करता है तो उसके खिलाफ अपील कौन सुनेगा? क्योंकि तरीकाकार कानून के और आइन के मुताबिक ये है कि जिन जजेस ने फैसला किया हो वो अपील नहीं सुन सकते, अपील में डिफरेंट जजेस होंगे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर 9 जजेस भी कोई फैसला कर लें तो उसके बाद इसका मतलब है कि 9 से ज्यादा जजेस का होना जरूरी है, कम से कम 11 जजेस होंगे
तो समाअत हो सकेगी, उनमें भी पहले 9 शामिल नहीं होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच भी कोई फैसला कर ले तो इस हवाले से भी फिर आगे अपील में मुमकिन नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस हवाले से मौक़िफ़ ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच अगर कोई फैसला करता है तो इसका मतलब होगा कि अपील का हक फिर नहीं है। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि कानून अगर अपील का हक देता है और अदालत उसको दुरुस्त करार देती है तो फिर ये अदालत की मंशा पे नहीं छोड़ा जा सकता कि किस फरीक के केस में फुल कोर्ट बना के अपील का हक दे, किस में ना दे। तो ये तमाम वो सवालात थे जिनके गिर्द तमाम आर्गूमेंट्स जो है वो घूम रहे हैं। जो दरखास्त गुजारान के वकला थे उनका मौक़िफ़ ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आइन से मुतसादिम है, जो बुनियादी हकूक है उनसे ये मुतसादिम है क्योंकि अदलिया की आज़ादी को इससे हिट किया गया है। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपना दलाइल कंक्लूड करते हुए इस्तदाद की अदालत से कि किसी भी तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आइन और बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं है, ना ही ये अवामी मुफाद का कोई मामला है, ना ही किसी के हकूक को सलब किया गया इस कानून के अंदर। इसलिए अदालत इन दरखास्तों को ये करार दे कि किसी भी सूरत काबिल समाअत नहीं है और दरखास्तों को खारिज कर दे। अभी वक्फा हुआ है जिसके बाद जो सियासी जमातों के वकला हैं और पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के हैं उनको भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामलत के लिए नोटिस किया था, उनके दलाइल तो वो भी मौजूद है। लेकिन जुल्करनैन दौरान समाअत दरखास्त गुजार के जो वकील हैं इम्तियाज सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोलने का मौका अटॉर्नी जनरल को उससे पहले भी दलाइल जो थे वो जारी थे, क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा का ये कहना था कि आवाम का ख्याल है, अभी जवाब दे रहे हैं, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तो अभी ब्रेक के बाद अभी जब समाअत दोबारा से शुरू हो जाएगी तो क्या दोबारा वो यहाँ पर आएंगे रोस्ट्रम पर? देखिए, जो पहले सबसे पहले दलाइल का आगाज किया था ख्वाजा तारिक रहीम ने, उन्होंने भी अभी वक्फे के वक्त रोस्ट्रम पर आकर अदालत से यही कहा कि 22 सवाल मुझसे पूछे गए थे और अदालत ने कहा था कि बाद में मैं इन सवालात के जवाब दे दूं, तो क्या मुझे आज ही जवाब देने हैं या बाद में मैं लिख के अदालत को दे दूं। इस पर जस्टिस फाइज ईसा ने उन्हें कहा था कि इस मुकदमे की वजह से सुप्रीम कोर्ट का सारा निज़ाम रुका हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही करें और जो इंतहाई अहम सवालात होंगे इन 22 में से उनके जवाब हम कोशिश करेंगे कि आज से आप ही ले लें। इसके अलावा जो इम्तियाज सिद्दीकी हैं दौरान दलाइल, क्योंकि बार बार जजेस की जानिब से सवालात आ रहे थे और उनके जब वो दलाइल अपने देना शुरू कर देते थे तो जस्टिस फाइज ईसा खासकर जो चीफ जस्टिस हैं वो उन्हें किसी न किसी बात पे टोक देते थे। इस पर ये तलखी थोड़ी सी हुई थी, उनकी जानिब से कहा गया था एक तरफ आप मुझे कहते हैं कि दलाइल दें, दूसरी तरफ आप मेरे बात को बेतौकीरी कर रहे हैं, मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुझे मुकम्मल नहीं करने देते। अगर ये सिचुएशन रही तो मैं केस छोड़कर चला जाऊंगा। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें कहा गया कि अगर आप केस में दलाइल नहीं देना चाहते तो ये आपकी चॉइस होगी, अलबत्ता जो बात तयशुदा है उसको बार बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली हम आपको यहाँ पर रोकेंगे। और अभी क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक आपसे मजीद इसी कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड विद अस। खबरों का पहाड़ा 3, 6, 9, 12 बुलेटिन्स का सबसे मुनफरिद नाम बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। एक ऐसा बुलेटिन जिसे देखता और जानता है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि सिर्फ बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स ही है हर पल लाइव। सबसे बासलाहियत चेहरे जो रखे आपको हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर। बुलेटिन की दुनिया की सबसे काबिल टीम, ये है बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स, सिर्फ बोल न्यूज पर। This half-hourly clock is brought to you by मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तालिबात को हिरासत करने का इंकशाफ। शोबा IT के असिस्टेंट प्रोफेसर इब्राहिम लाशारी हिरासगी के इल्जाम में मुअत्तल। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में ऑपरेशन, डाकू अपने ठिकाने छोड़कर फरार। गढ़ी तेगू में मुश्तरका कार्रवाई जारी। फैसलाबाद में झामरा रोड पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल और दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक ये वाकया पुरानी दुश्मनी की वजह से पेश आया। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. अब हर वक्त बर वक्त बाखबर सिर्फ bolnews.com से। देखने हो पाकिस्तान के नंबर 1 प्रोग्राम्स या रहना हो दिन भर की खबरों से बाखबर,
जानना हो सीनियर तज्जिया निगारों के बारे में या जुड़े रहना हो दुनिया भर की हर लाइव अपडेट से, तो सिर्फ bolnews.com पर जाके क्लिक करें बेल आइकन और जुड़े रहें हर खबर की लाइव सूरत हाल से। अब चाहे आप कहीं भी हों, हर खबर आसानी सबसे पहले आपकी पहुंच में, सिर्फ bolnews.com से। और साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी जुड़े रहें दिन भर की ताजा तरीन खबरों से, वो भी सिर्फ एक क्लिक पर, क्योंकि ये है पाकिस्तान की नंबर 1 वेबसाइट bolnews.com। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ थे, जो हमें आज की प्रोसीडिंग के हवाले से आगाह भी कर रहे थे, क्योंकि अभी प्रोसीडिंग में वक्फा है तकरीबन 15 मिनट का, और उसके बाद मजीद दलाइल को आगे बढ़ाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया था। जुल्करनैन, आप हमारे साथ ही, आप हमें आगाह कर रहे थे आगाज़ से लेकर कि किस तरह से ये प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ, अब तक कौन कौन दलाइल दे चुका है और कौन से ऐसे फरीक हैं जिन्होंने ब्रेक के बाद अभी इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना है और सवालात के जवाब देने हैं। लेकिन जो दरखास्त गुजारान के वकील हैं, जो उनसे सवालात पूछे गए थे, वो अपने ना सिर्फ जवाब देंगे बल्कि जो अटॉर्नी जनरल ने बातें की हैं उनका जवाब भी उनकी जानिब से आना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली दफा जब इस केस की समाअत की थी 2 मई को, जब इस पर हुक्म इम्तना जारी किया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार और तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए गए थे कि वो अगर आके अपना इनपुट इस हवाले से, कानून के हवाले से देना चाहते हैं, चाहें तो वो भी अदालत को आगाह कर सकते हैं। उस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उजैर भंडारी, वो आए थे, उन्होंने भी कहा अदालत को कि वो भी अपना नुक्ता नजर पेश करना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज की जानिब से कहा गया कि वक्फे के बाद आपका मौक़िफ़ भी सुनेंगे, तो जो पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की नुमाइंदगी है वो भी होगी। अभी तमाम वकला जो हैं अपने दलाइल देंगे और फिर अटॉर्नी जनरल ने, क्योंकि आज बैरून मुल्क रवाना होना है सिंध ताश मुआहदे के हवाले से, कल से कुछ 3 दिन की एक हेयरिंग शुरू हो रही है वियना में, उन्होंने वहां जाना है, इसलिए उनको अदालत की जानिब से जाने की इजाजत दे दी गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी में अदालत में मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई पॉइंट्स वगैरह ऐसे होंगे, कुछ सवालात हुए, तो वो नोट कर लेंगे और किसी हद तक मुमकिन हुआ तो उनके जवाब भी दे दिए जाएंगे। तो ये वो कार्रवाई है जो वक्फे के बाद मुमकिन तौर पर होनी है, जिसके बाद ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे के हवाले से अपना जो फैसला है वो महफूज कर लें, क्योंकि अदालत ये इंडिया दे चुकी है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील से दीगर मामलात रुके हुए हैं उनको ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं करना चाहती। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात ये भी कही कि ऑल दो के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सस्पेंडेड है, मुअत्तल शुदा है, इसके ऊपर अमल दरामद रोका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैंने जो अपने सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस रियाजुल एहसन, जो मुमकिन तौर पर 3 रुकनी कमेटी है, इस अगर ये बिल सस्टेन कर जाता उस सूरत में, तो मैंने उनसे पूछकर उनको एतमाद में लेकर ही फुल कोर्ट तश्कील दी है। हालांकि वो बिल सस्पेंडेड था, मैं पूछने का पाबंद नहीं था, लेकिन मेरा ज़हन यही कह रहा था कि बेहतर यही है कि तमाम सीनियर जजेस हैं उनसे मुशावरत करके ही बेंच तश्कील दिया जाए, इसलिए मैंने उनको मुशावरत के बाद ही फुल कोर्ट तश्कील दी है। कभी इम्कान इसी बात का ही है कि आज ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का फैसला महफूज करेगी, बल्कि शायद कोई ना कोई मुख्तसर हुक्मनामा या हुक्म इम्तना खारिज करने के हवाले, हुक्म इम्तना के हवाले से कोई आ सकता है, या फिर मेरिट के ऊपर इन पटिशंस के हवाले से भी किसी भी किस्म का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जाने से आज रात तक मुतवक्के है। ठीक है, आज रात तक फैसला मुतवक्के है, अभी तो ब्रेक है। लेकिन जुल्करनैन, अभी जब ये समाअत हुई है तो उसके अंदर ये सवाल बड़ा अहम पूछा भी गया है कि क्या आप ये बताएं कि किस तरह से जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुतासिर हुए हैं। तो बुनियादी हुकूक के मुतासिर होने से, अवामी हुकूक के मुतासिर होने के हवाले से भी कोई दलाइल जो है वो सामने आए अभी तक? लेकिन जो वकील हैं इम्तियाज सिद्दीकी, उनकी जानिब से नुक्ता उठाया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि जो अदलिया की आज़ादी है वो एक बुनियादी आइन का ना सिर्फ खदोखाल में से बल्कि एक बुनियादी हक भी है, पब्लिक का भी और रियासत का। इसलिए उन्होंने कहा कि जब अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला होगा तो डेफिनेटली ये बुनियादी जो अवामी हुकूक है उनसे उनके ऊपर ये असरअंदाज होगी। ये उनका मरकजी नुक्ता था इस हवाले से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आइन में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, यानी इख्तियारात की तकसीम है, रियासत के 3 सतूनों के दरमियान जो अदलिया है, मुकन्नना है और इंतजामिया है, इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो अदलिया अपने रूल्स खुद बनाती है, अपना काम खुद से करती है,
कोई दूसरा इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। पार्लियामान अपने रूल खुद बनाती है कि उसने कैसे चलना है, कैसे काम करना है, उसकी हदूद में भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो एग्जेक्टिव है यानी कि इंतजामिया है, जो हुकूमत है, वो अपने काम खुद करती है, अपने रूल खुद बनाती है, उसके अंदर भी कोई दूसरा इदारा उनके इंतजामी अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकता। इसलिए ये आइन के जो बुनियादी असूल हैं उनकी ही खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी असूलों में एक असूल जो बुनियादी हकूक का भी है, अवामी अमीर का भी है। अगर अदलिया के अमूर मुतासिर होंगे तो बराह रास्त इससे जो अवाम के अमूर मुतासिर होंगे, क्योंकि अवाम ही अदलिया की जानिब आती है, अदलिया से रुजू करती है अपने फैसलों के लिए। तो ये उनके बुनियादी दलाइल थे, बुनियादी हकूक के हवाले से और दरखास्तों के काबिल समात होने के हवाले से। ठीक है। और जुल्करनैन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मौके पर ये कहा था कि आर्टिकल 184(3) जो है वो एक जुडिशल पावर की हैसियत रखता है, अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की भी कोशिश की है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि ख्वाजा साहब आपकी बहस क्या है। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अगर फुल कोर्ट है तो दुरुस्त है, अगर पार्लियामेंट ये काम करे तो गलत है। इस हवाले से भी तो एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो पाई जा रही थी। अटॉर्नी जनरल से भी ये सवाल पूछा गया था कि जो फुल कोर्ट के हवाले से इस मौके पर आपका नुक्ता क्या होगा, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी नज़र में एक मुमकिन जवाब इसका ये हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी है वो जब समझेगी कि जिस केस में फुल कोर्ट नहीं बनानी या वो बेंच ही ऐसा तश्कील देगी 5 रुकनी या 7 रुकनी कि उसके खिलाफ अपील लाई की जा सके। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इस हिसाब से तो पार्लियामेंट ने हमेशा के लिए फुल कोर्ट की तश्कील के ऊपर ही पाबंदी एक तरह से लगा दी है टेक्निकल अंदाज में, क्योंकि जब फुल कोर्ट बनने के खिलाफ अपील ही नहीं हो सकेगी तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट किसी केस में फुल कोर्ट बना भी नहीं सकेगी। तो ये दरखास्तें आती रहती हैं कि फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बनाए, उनका फिर क्या होगा, उस सूरत में अदालत क्या नुक्ताकार क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी और उनको किस तरीके से डील करेगी। तो ये भी अहम नौयत का सवाल था जिसका अटॉर्नी जनरल को क्लियर जवाब नहीं दे सके अदालत को। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा कि जो कमेटी है 3 रुकनी वो अपना तरीकाकार खुद से तय करेगी। अटॉर्नी जनरल से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी ये सवाल पूछा कि अगर जैसे रजिस्ट्रार 184(3) की दरखास्तों पर इतराज़ात आयद करते हैं, वापस कर देते हैं, उसके रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ चैम्बर में अपील होती है और चैम्बर अपील एक फोरम होता है रजिस्ट्रार के इतराज़ात के खिलाफ। अगर रजिस्ट्रार का है जो इख्तियार है वो 3 रुकनी जजेस की कमेटी को चला जाता है तो कमेटी के खिलाफ तो कोई अपील भी नहीं है। इस सूरत में अगर कई दफ़ा ऐसे होता है कि रजिस्ट्रार के इतराज़ात चैम्बर में जजेस का लदम करार दे देते हैं तो कमेटी का फैसला कौन का लदम करार देगा, तो वो जो हक है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगे इस पर फिर वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि जब 3 जजेस बैठ के फैसला करेंगे तो तवक्को यही है कि वो फैसला रूल्स और कानून के मुताबिक होगा, इसलिए किसी उसके खिलाफ अपील की जरूरत नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का इस मौके पर जवाब था। ठीक है। और अब क्योंकि अभी इसका फैसला होना है, आप बता रहे हैं कि फैसला महफूज हो जाएगा, तो अभी जो चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे उन्होंने कहा था कि हमें वक्त ज़ाया किए बगैर इस केस का फैसला करना है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो दीगर केसेस हैं वो भी जल्द अज जल्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको भी इसी तरह से निपटा दिया जाएगा? अभी क्या लग रहा है, पहली उनकी समाअत है, सारे जजेस उनके साथ मौजूद हैं, प्रोसीडिंग हो रही है केसेस की? देखिए, सबसे बुनियादी नुक्ता जो आज इस फैसले को करने का है, ये इस मुकदमे को निपटाने का है, वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया था कि उसने बेंचेस चीफ जस्टिस पहले तो खुद बनाते थे रूल्स के तहत, अब वो बेंचेस इस कानून के तहत कमेटी ने बनाने हैं। जब तक ये बेंचेस बनाने वाला मामला खत्म नहीं होगा, ये तनाज़ा हल नहीं होगा, उस वक्त तक तमाम बेंचेस ही मुतनाज़े होंगे। इसलिए इस कानून के ऊपर वो पहले फैसला करना चाह रहे हैं। ये जब हर्डल क्रॉस हो जाएगा कि बेंचेस किस तरह तश्कील पाएंगे, किस कौन से केसेस कैसे लगेंगे, उनमें अपील का हक होगा या नहीं होगा 184(3) में। और तो बेसिकली ये एक बॉटम लाइन है जुल्करनैन, इसके बाद आगे सारे केसेस जो हैं उनकी प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन इससे पहले जुल्करनैन जो फैसले हो चुके हैं या जो केसेस लग चुके हैं जिनके अंदर बेंचेस तश्कील पा चुके हैं, फिर वो भी मुतनाज़े होंगे, इस हवाले से भी आज कोई गुफ्तगू हुई है? इस हवाले से बिल्कुल गुफ्तगू हुई है। जैसे सरदार तारिक ने नुक्ता उठाया था कि जो बेंचेस फैसले हो चुके हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कंसीडर होंगे, यानी कि वो जो फैसले हो चुके हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माजी में भी अदालतें इस हवाले से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फैसलों को देती रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का भी यही नुक्ता था कि उनको फैसला फर्क नहीं पड़ेगा। इवन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो खुद बेंचेस के ऊपर एतराज़ करते रहे हैं 184(3) में, उनका ये कहना था कि किसी साइल को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका केस कौन से 3 जजेस ने सुनना था, वो चाहे मैं हो, मेरी सरबराही में बेंच हो या किसी और की सरबराही में बेंच हो। बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने सुनकर केस को फैसला किया है।
तो बेंच कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि उसमें कोई स्पेसिफिक जज शामिल हो या स्पेसिफिक जज शामिल ना हो। इसलिए किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था कि वो किसका मुकदमा है किसका नहीं। अलबत्ता अगर ये कानून अदालत बरकरार रखती है तो उन फैसलों के खिलाफ अपील का हक जरूर मौजूद होगा। अगर जिन फैसलों के खिलाफ अपील का हक अगर नहीं होता, अदालत इस कानून को कलअदम करार देती है, तो भी नजरसानी का जो हक है वो तो कानून और रूल के मुताबिक। ठीक है जुल्करनैन, हम आपसे मजीद भी कनेक्ट करेंगे और अभी डिटेल्स लेंगे। जिनको एक मरतबा फिर बता दें कि अभी समात में वक्फा है और कुछ ही टाइम रह गया है, समात का दोबारा आगाज होगा। लेकिन इसके अंदर जो अभी तक की प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक ये बात डिस्कस कर ली गई है कि बेंचेस के ऊपर जो हमेशा एक तनाज़ा खड़ा रहता था, जितने भी सियासी केसेस होते थे, पार्लियामेंट के केसेस कोई ले लें, उसके अंदर ये होता था कि बेंच में शामिल कौन कौन से जजेस हैं, कौन से केस को कौन से 3 जजेस या कौन सा बेंच सुन रहा है, और फिर उन बेंचेस के ऊपर इख्तलाफात हमेशा हम देखते हैं कि सामने आए। अब उस सारे मामले को कैटर करने के लिए इस अहम केस को सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया, क्योंकि ये वो केस है जो बुनियादी तौर पर आगे आने वाले केसेस के हवाले से टाइमलाइन को सेट करेगा कि बेंचेस की तश्कील किस तरह से होनी है और किस तरह से उन बेंचेस को बनाना है गैर मुतनाज़िक और शफाफ। तो अब जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर तय हो जाएंगी, तो इससे पहले जो केसेस सुने जा चुके हैं, हमें जुल्करनैन बता रहे थे कि वो एज इट इज़ रहेंगे, जो भी फैसले हो चुके हैं वो तब्दील नहीं होंगे। लेकिन अगर ये कलअदम करार, फिर उसके बाद अपील का हक एक मरतबा फिर मौजूद रहेगा। जुल्करनैन, अभी कितना वक्त रह गया, दोबारा समाअत कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए 15 मिनट का वक्त दिया गया था, वो वक्त तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है कि जब ब्रेक होती है ये जजेस का जो टाइम होता है, क्योंकि 15 जजेस ने सबने अपने चैम्बर्स में से निकल के आना होता है, कोई नमाज के लिए ब्रेक करता है तो किसी ने कुछ हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट करनी होती है, क्योंकि इंसानी तकाजा ये भी सुबह 11:30 से समाप्त हो रही है। इस मौके पे अक्सर को 5-7 मिनट की 10 मिनट की देर सवेर हो जाती है मामूल में। तो जो वक्त दिया गया था वो तो हो चुका है। अब किसी भी वक्त जजेस हैं वापस कोर्ट रूम में आएंगे और उसके बाद समाअत का दोबारा से जो है वो आगाज होगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा जो माहौल है जो हम आज देख रहे हैं, यकीनी तौर पर मीडिया की तारीख में भी और इवन पाकिस्तान हिस्ट्री में भी ये पहली बार हुआ है कि हमने लाइव टेलीकास्ट देखा है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट से। और इस अहम केस के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये फैसला किया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये कैसी एग्जाम्पल सेट हुई है, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि एक कैसी रिवायत है, कैसा लग रहा है? देखिए ये 2 घंटे समाअत लेट ही इसी वजह से हुई है, क्योंकि सुबह 9:30 बजे पहले इस केस की समाअत का वक्त मुकर्रर था। तमाम जजेस ने आके पहले फुल कोर्ट मीटिंग की इंतजामी अमूर पर, उसमें ये बात डिसाइड हुई कि आज ना सिर्फ इस केस को फैसला करने की पूरी कोशिश की जाएगी बल्कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। आपको याद होगा माजी में जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने खुद दरखास्त दी थी कि मेरे मुकदमे को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म था बाकायदा लार्जर बेंच का कि इंतजामी साइड के ऊपर जब तक फुल कोर्ट इसको फैसला ना करे तो बराह रास्त नशरियात नहीं की जा सकती, नशर किसी भी अदालती कार्रवाई की। उस हवाले से क्योंकि आज वो तमाम जजेस उस फैसले के पाबंद थे, इसलिए आज फुल कोर्ट मीटिंग में जस्टिस फाइज ईसा ने ये प्रपोजल दिया कि आज इस मुकदमे की समाअत को कम से कम लाजमी जो है ना वो लाइव स्ट्रीमिंग इसकी की जाए। दीगर जजेस ने इसके ऊपर बहस की और बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि आज इसकी लाइव ट्रांसमिशन की जाएगी। तब ये उसके बाद सरकारी टेलीविजन को तो ऑलरेडी वो पहले से इंतजाम अपने मुकम्मल किए हुए था, उनका गो अहेड मिल गया और उन्होंने अपने इक्विपमेंट को लगाया और ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि सरकारी टेलीविजन के ऊपर जो बराह रास्त वो नशरियात है वो नशर की जा रही है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तजर्बा जरूर किया था जब जस्टिस अथर मिनल्ला चीफ जस्टिस थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसका पब्लिक अभी नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर प्रोसीडिंग को जो अदालत में मौजूद सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनके जरिए बराह रास्त करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ हमारे पाकिस्तान में इमेच्योरिटी का लेवल ये है कि सोशल मीडिया पर डिफरेंट क्लिप्स निकाल के जजेस के या उनके मीम्स बना दिए जाते हैं या फिर उनको सियाको सबाक से हटकर शेयर कर दिया जाता है। इन्हीं खदशात का इजहार आज सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस ने किया था, लेकिन फिर अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है जो आज सामने आई है और पूरे पाकिस्तान में आज कोई और खबर कोई और पूरी डिस्कस नहीं हो रही थी, सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ही तमाम जो मीडिया है चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो
उसका फोकस आज यही रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि अदालती कार्रवाई को इतनी तवील देर के लिए जो बराह रास्त है वो नशर किया जा रहा हो। लेकिन अगर अमूमी तौर पर हम बात करें जुल्करनैन, ये तो हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं सुबह से, लेकिन अमूमी तौर पर अगर कोई केस लगता है, ये तो एक अपनी नोयत का अहम केस है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, लेकिन अगर कोई और सुप्रीम कोर्ट में लगता है, लार्जर बेंच उसको सुन रहा होता है इस केस को, तो क्या उसकी प्रोसीडिंग भी इतना ही टाइम टेकिंग होती है, उसमें भी इतने ही ब्रेक्स होते हैं, वो भी एज इट इज चलती है जैसा कि आज हम देख रहे हैं इस केस को? जैसे देखिए, जैसे साबिक चीफ जस्टिस है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनके दौर में, जस्टिस जवाद अस्फाजा के दौर में, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में, इवन के उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी, जब कासिम सूरी वाला जो रूलिंग का केस था, इसके अलावा पंजाब में जो इलेक्शन का केस था चौधरी परवेज अलाइब और हम आर्टिकल 63A से मुतल्लिक केसेस थे, तब भी कई घंटे रात को 8-8, 9-9 बजे तक हम लोग यहाँ पर समातें कवर करते थे। तो इस तरीके से अक्सर होता है कि जो अहम केस हों जिनको जल्द निपटाना मकसूद हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रात को 8-8, 9-9 बजे तक समातें करती रही है। बल्कि बाज़ औक़ात तो आपको याद होगा गुज़श्ता साल अप्रैल में जब वो कासिम सूरी केस के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करवाई जाती, तो 12 बजे जजेस अदालत खोलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। तो इसलिए ये एक रूटीन की चीज है, इतनी लंबी कार्रवाई होना, खासकर उन मुकदमात में जिनको फौरन निपटाना मकसूद हो। ये कोई ऐसा जितनी रूटीन से हटके नहीं हुआ कि जिसको कहा जा सके कि ये पहले ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ था। लेकिन यकीनी तौर पर ये जो एक फैसला लिया गया है कि आज टेलीकास्ट करना है, इसको लाइव टेलीकास्ट करना है, तो ये मीडिया के नुमाइंदों के लिए, आपके लिए, रिपोर्टर्स के लिए, कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए एक सरप्राइज था, या ये चीज़ आपको पहले से आपके इल्म में थी, आपको पता था कहीं ना कहीं? शायद पहले इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर था कि क्योंकि जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो इस किस्म का कोई ना कोई काम जरूर करेंगे, क्योंकि खुद वो दरखास्त दे चुकी हैं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है, पब्लिक जानना चाहती है कि अदालत में क्या हो रहा है। इस हवाले से अंदाजा जरूर था। और कल जब सरकारी टेलीविजन की जो टीम्स है, उनका टेक्निकल स्टाफ है, उसने सुप्रीम कोर्ट का जब विजिट किया, जब जस्टिस फाइज ईसा हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए थे, उसके बाद उन्हें बुलाया गया, तो उससे हमें अंदाजा हो गया था कि कल कुछ बड़ा होने जा रहा है और कोई लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से मामला चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि आखिरी फैसला फुल कोर्ट ने करना था, इसलिए सुबह तक इस कश्मकश में थे कि फैसला होगा या नहीं होगा। तैयारियां मुकम्मल थी और इतना जरूर अंदाजा था कि अक्सर ये जजेस इस बात पर मुत्तफिक हो जाएगी कि कम से कम इस केस की हद तक इस प्रोसीडिंग्स को लाइव जरूर किया जाए। इससे एक चीज का इंदिया जरूर मिल चुका है कि आइंदा मुस्तकबिल में भी जो अहम नौयत के मुकदमात हों, चाहे वो इंतखाबात से मुतल्लिक हों, चाहे कोई और ऐसा बड़ा मुकदमा हो जो मुल्की लेवल के ऊपर जिसके असरात बड़े पड़ रहे हों, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी के लिए भी कोई ना कोई या फरीक दरखास्त दे सकता है या अदालत खुद कह सकती है कि इस मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द अप्रूवल ऑफ द बेंच। एग्जैक्टली इसमें कोई टेक्निकल रुकावट ऐसा अब मौजूद नहीं रहेगी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन हम देखेंगे, मेरा ख्याल है जुल्करनैन के जो अवामी मुफाद के केसेस होंगे, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो तमाम केसेस जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट हो सकते हैं। तो ये बताएगा कि ये कितना ट्रांसपेरेंसी के लिए बेहतरीन फैसला है चीफ जस्टिस का। यकीनी तौर पर उन्होंने कुछ सोचा होगा, उन्होंने प्लान किया होगा, जैसे कि उन्होंने अपने केस में भी आपने रेफरेंस दिया कि खुद ये रिक्वेस्ट की थी कि इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। आपको क्या लगता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ जाता है, इससे चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आती हैं? क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर्स जब कोर्ट कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल गलत कोर्ट करते हैं, ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई इबहाम, कोई ना कोई खदशा तो ज़रूर मौजूद होगा जिसकी वजह से ये फैसला आज सामने आया। शायद से कई मरतबा ऐसा होता है कि जजेस कोर्ट में बात करते हैं और बाद में फिर वो कह देते हैं मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया। इस हवाले से हमारे लिए एक बड़ा एक साया ऑफ रिलीफ है ये कि जब उनकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, टीवी के ऊपर चल रही होगी, तो कल को वो ये नहीं कह सकेंगे कि हमने ये जुमला नहीं बोला, हम मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया। इस हद तक तो हमारे लिए बहुत बात है ये कि अब हर चीज ऑन रिकॉर्ड आ गई है। जो अब हमारे ऊपर अक्सर एलिगेशन लग जाता था कि मीडिया ने गलत रिपोर्ट कर दी, अब हम कम से कम उससे बरी जिम्मा हो चुके हैं। दूसरी चीज जो ट्रांसपेरेंसी की हद तक इतना जरूर है कि जो पब्लिक है उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो खुद घर बैठ के टीवी पर देख सकेंगे। इससे पहले ये होता था कि हम लोग अंदर सुनते थे, सुन के बाहर आकर अपने ऑफिस में वो खबर को टिकर की सूरत में लिखवाते थे, बीपर की सूरत में, ब्रेकिंग की सूरत में आवाम तक पहुंचाते थे। अब पब्लिक खुद से सुन होगी कि उनके जजेस क्या कह रहे हैं, उनको फिर कॉन्टेक्स्ट में सुनना और उसको ग्रैब करना आसान होगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक वही है जो मैंने पहले भी बताया था, इसका खदशात आज भी जजेस ने किया था कि डिफरेंट क्लिप्स निकाल के जोड़ के, आपको पता है ये पाकिस्तान में एक बड़ी चीज है कि जैसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की भी एक ऑडियो
मुख्तलिफ उनकी तकरीरों में से क्लिप निकाल के जारी कर दी गई थी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये खत्म होने के चांसेस अब ज्यादा बढ़ गए हैं और जुल्करनैन की जॉब भी थोड़ी सी कम मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू सो मच जुल्करनैन फॉर बीइंग विद अस। अभी हम अपनी कोर्ट एक और रिपोर्टर को लेते हैं अपने शो में और उनसे बात करते हैं आज के साम प्रोसीडिंग के हवाले से। नीलम अरशद हमें ज्वाइन करेंगी। वेलकम टू द शो नीलम। अभी हम बात करें सहम केस के हवाले से जिस पर अभी तो ब्रेक है, लेकिन यकीनी तौर पर सुबह से आप इसको कवर भी कर रही हैं, देख भी रही हैं। क्या कहेंगी आज की इस प्रोसीडिंग के हवाले से आप? देखिए जी, बड़ा अहम और बड़ा ही खास दिन था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पहला रोज आज ओहदे का हल्फ लेने के बाद आज पहले रोज अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है उन्होंने निभाई है। लेकिन पहले रोज ही काफी तवील अंदाज में जो समाअत है उसका आगाज किया गया उनकी तरफ से और वक्फे के बाद वक्फा और लग ऐसा रहा है कि शाम जो है वो भी यहीं पे हो जाएगी। डिनर का शायद तमाम भी यहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन उनकी जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द केसेस, टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट केसेस, वो देखकर बड़ी खुशी हुई है कि उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर एक ऐसा मामला जो कि एम्बिग्विटी का शिकार है और उसमें कुछ आईनी बहरान जो है, आईनी खुला जो है उसको खत्म करने की जरूरत है। तो उसके हवाले से देखिए सुबह 11:30 बजे से लेकर अब ये वक्त हो चुका है कि उनकी तरफ से समाअत का सिलसिला जारी है। बारहा वो कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि 57,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं, हमने उनको भी सुना है। जबकि दीगर जो वकला हैं जब उनकी तरफ से दराई का सिलसिला जारी रहा तो 12 उनकी तरफ से उनको टोका गया और कहा गया कि फोकस टू द पॉइंट कि सिर्फ और सिर्फ जो मुदल्लिल दलाइल है वो पढ़कर सुनाए जाए, कोशिश की जाए कि वक्त का जो ज़िया है वो ना किया जाए। तो उनकी ओवरऑल जो आज का पूरा दिन आज अदालत में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर गुजारा है तो उससे ये चीज तो आया है कि वो चाहते हैं कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो किया जा सके और फिर प्रोडक्टिव दलाइल हो, प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो, मिस इंटरप्रेशन ना हो। आप हमारे साथ ही रहेगा नीलम। अभी हमें ज्वाइन किया बलोच ने भी, उनसे भी बात करते हैं। तैयब वेलकम टू द शो। हम बात करें नीलम से भी, इससे पहले हमने जुल्करनैन को भी कनेक्ट किया था कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो सुबह से समाअत का आगाज हुआ है, आप ये बताइए कि अब ये जो लाइव टेलीकास्ट हुई है समाअत, रेलिवेंसी के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज खुद चीफ जस्टिस काजी फैज ने कहा कि हम ये एक केस सुन रहे हैं और इस टाइम सुप्रीम कोर्ट पर 57,000 केसेस का यानी कि दबाव मौजूद है, यानी कि 57,000 केसेस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। तो उन्होंने कहा आज हम सारा दिन इसी केस को सुन रहे हैं, तो जब तक ये केस समाअत हो रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि शायद 150 नया केस भी रजिस्टर्ड हो चुका हो। तो हमें इस टाइप के केसेस सुनने के साथ साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो वर्कलोड है, जो केसेस का दबाव है, उस तरफ भी हमें जो है वो देखना चाहिए। तो इस सवाल से आज उन्होंने वकला को ये कहा कि आप टू द पॉइंट रहें, फोकस रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज ही इस मामले पर जो है वो कोई फैसला करना चाहती है और हमने क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं अपनी मर्जी के लिए नहीं बैठे कि हम बेंच में बैठकर जजेस जो है वो अपनी मर्जी चलाते रहे। तो उन्होंने कहा कि हमें अवाम के टैक्स के पैसों से जो तनख्वाह मिलती है वो मर्जी चलाने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ देने के लिए और फैसले करने के लिए दी जाती है। तो इसी वजह से हमारी जो तरजीहात हैं वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो वर्कलोड है, जो ज़ेरे इल्तवा केसेज हैं, उनको जो है वो जल्द से जल्द निपटाया जाए। और आज इब्तिदा में चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जो साइलीन है अब उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उनको जो है वो एज ए मेहमान के तौर पर हम ट्रीट करेंगे ताकि उनको ये ओनरशिप का भी एहसास हो और उनको पता चले कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उनको फैसले भी उनके हाथ में फैसले भी होंगे और उनको इंसाफ भी फराहम किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम बात कि आज जो सारा दिन की आपने प्रैक्टिस देखी कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो बैठकर मुसलसल समाअत कर रहा है, तो इसलिए अब हमें ये तवक्को है कि आज ही इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला दे देगी, क्योंकि इसमें एक रीजन ये भी है कि बेंच के एक मोअज़्ज़िज़ जज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह आज रात को उन्होंने अमेरिका के लिए रवाना होना है। तो अगर एक जज भी नहीं होगा तो फुल कोर्ट जो है वो इस पर अपनी समाअत जो है वो नहीं कर सकेगा। तो इसके साथ साथ एक और अहम मसला जो है वो दरपेश है, वो ये है कि गुज़िश्ता जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने 8 रुकनी बेंच बनाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया था। तो उस हुक्म इम्तना की वजह से जो मौजूदा यानी कि चीफ जस्टिस है वो बेंच की तश्कील जो है वो नहीं कर सकते। वो अभाम का शिकार हैं कि आया इस कानून के तहत बेंचेस की तश्कील की जाए या फिर जो है वो जिस तरीके से साबिक चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील कर रहे थे उस तरीके से। तो इसी वजह से उनका सारा का सारा फोकस जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर है और
ये अभी थोड़ी देर पहले दूसरा वक्फा हुआ है, वक्फे के बाद फिर से समाअत होगी, तो हमें इम्कान जो है वो रेजोल्यूशन की तरह नजर आ रहा है कि आज ही इस मामले पर कोई बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर देगी। और दौरान समाअत एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई कि खुद एक मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले को वैलिडेट कर देते हैं तो फिर उस दौरान जो केसेस 184(3) के तहत या बुनियादी इंसानी हकूक के तहत सुने गए थे उनका क्या होगा। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अगर आप इस कानून को वैलिड करते हैं और इस कानून के बाद जितने भी 184(3) के मुकदमात के ऊपर बेंचेस तश्कील दिए वो गैर ऐनी होंगे और तो उनके जो फैसले हैं वो भी गैर ऐनी हो जाएंगे। तो अब वक्फे के बाद इस मामले पर दोबारा समाअत होगी। जी ठीक है, वक्फे के बाद दोबारा से समाअत होगी। थैंक यू सो मच नीलम अरशद, तैयब बलोच फॉर बीइंग। अभी नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि अभी तो वक्फा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो 15 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा इसकी हेड कर रहे हैं इस बेंच को। और अभी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज ही तमाम दलाइल मुकम्मल होंगे, तमाम चीज़ें मुकम्मल होंगी तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से और रात तक फैसला आने की तवक्को है, क्योंकि उसके बाद बाकी दीगर केसेस हैं जो बताया भी जा रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेस इल्तबा का शिकार भी हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जब केस कंप्लीट हो जाएगा, इसका फैसला आ जाएगा, तो इसी की बेस पर बाकी जो तश्कील पाएंगे और दीगर केसेस की समाअत भी आगे बढ़ सकेगी। और वैसे अगर देखा जाए आज की इस लाइव टेलीकास्ट की पूरी चीज़ को, तो ये हमें बहुत सी चीज़ों के मैसेजेस भी देती है कि कितनी डेडिकेशन से हमारी अदलिया काम कर रही है और किस तरीके से लॉन्ग आवर्स में बैठ के हम सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं कि हो भी रही हैं। और अभी शो का टाइम ख़त्म हो गया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जब दिफाए पाकिस्तान का पासदार कोई ना हो, वज़ीर आज़म मोदी जो कि गुजरात का कसाब, लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला। जब अदलो इंसाफ का अलम थामने वाला कोई ना रहे, वो अपनी 3-3 बारियों में मुल्क को यहाँ तक ले आए और आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3 दिन में पाकिस्तान को बेहतर कर दे, कैसे? ऐसे में एक वजूद-ए-ज़न तने तन्हा उठ खड़ी होती है और एक ही बाज गश्त सुनाई देती है। ऐसे नहीं चलेगा। पीर से जुम्मा रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर एक शख्सियत जो खबर के खवास पहुंचाए आवाम तक और रखे मुल्की हालात पर गहरी नजर, तो बनती है दी स्पेशल रिपोर्ट। पीर से जुम्मा शाम 4 बजे। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। कामयाब मुस्तकबिल को चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। ADP, BS, MS, PhD प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। www.uskt.edu.pk। BMA फार्मा का शरबत फौलाद सुनहरी परिंदा मार्का जिस्मानी कमजोरी को दूर करे, घर के हर फर्द के लिए यकसा मुफीद। BMA फार्मा का शरबत फौलाद सुनहरी परिंदा मार्का, कमजोरी दूर, जिंदगी भरपूर। Experience the luxury of Faiz Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Faiz Sanitary for an elegant lifestyle. It's Essa hair removal cream. बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। Essa hair removal cream। भाई इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तूत स्याह प्लस मलट्ठी लेके आना। ऐप डाउनलोड करें और राइड बुक करें, OTP दें और राइड शुरू करें। ना कोई इंतजार और ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस। ग्रो विद अस। कॉल नाउ फॉर फर्दर डिटेल्स। द मूवर्स, मूव करो सेफली। कहीं बोटियों से फाइट है, कहीं हेल्दी डाइट है, कभी कोफ्ते की डिलाइट है, तो कहीं कोरमे की साइट है। But don't worry, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। कहा था ना, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। आए मिलकर जिम्मा उठाएं, बनाएंगे कराची का सबसे बड़ा और जदीद तरीन कैंसर अस्पताल, शौकत खानम हॉस्पिटल कराची, जहां होगा मुस्तैक मरीजों का मुफ्त इलाज। क्योंकि जब हम पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे तभी तो इख्तिताम तक जाएंगे। Best way to resolve it
was to constitute a full court if you agree, and there are also requests in I think 3 CMAs for full court. सिस्टम तबाह करना है तो ये मुकदमा अगले माह भी सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब तमाम जजेस हैं। कानून को जांचने के लिए रेफरेंडम नहीं करवा सकते, आइन पर अमल का पाबंद हों। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। फुल कोर्ट तश्कील देने की तमाम मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर। कहा कई बार मार्शल लॉ लगा, उस दौर के फैसलों का पाबंद नहीं। बतौर जजेस हल्फ आइन और कानून पर अमल करने का किया है, अदालती फैसलों के ताबे होने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है? नजरसानी अपील ने तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को बढ़ा दिया है। सिर्फ ये बता दें कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। दरखास्त गुजार से मकालमे में कहा यह भी हो सकता है आपके वकील से इत्तेफाक करूं और दरखास्त मुस्तरद कर दूं। डराए मत, सिर्फ दलाइल दें। एग्जीक्यूटिव के रूल्स जब चैलेंज होंगे तो देखेंगे।